इंस्ट्रक्शन नहीं, आप सभी को फूड कूपन्स दिए गए हैं। प्लीज वो फूड कूपन्स आप जब भी आप कोई ब्रेक या लंच के समय जाएं तो वो फूड कूपन्स हमारे वॉलंटियर्स को दें, एंड फिर आप उस हमारे जो हमने व्यंजन आपके लिए तैयार किया है उसको आप लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। थैंक यू। A very graceful morning and namaste to all. On behalf of entire organizing committee of the conference, I extend a very warm welcome to all of you. I am Dr. Gunjan Arora. I belong to Department of Chemistry, Hansraj College. Before we begin with the session, I request all the participants who are present physically with us to put their phones on the silent mode. And I also request all of you to please do not talk among yourselves and help us to maintain the decorum of the hall. The theme of today's session is existing in obscurity, organ trafficking, and child marriage. On day one of the conference, we had wonderful opportunities to listen to various distinguished speakers and experts on the issue of online trafficking and the role of various stakeholders to counter the trafficking online. We had discussions on the most common forms of the human trafficking, that are trafficking for sex and labor. However, there are unseen forms of trafficking also,
which include organ trafficking and child marriage. Organ trafficking holds a critical place in the translational organized crime groups due to their high demand and relatively low rates of law enforcement. It leaves us vulnerable population to severe exploitation and a lifetime of health consequences. Child marriage, on the other hand, is a form of violence against children, which places them at a high risk of violence, exploitation, and abuse. In addition to mental health, it includes adverse health effects, lack of access to education, and career opportunities. Organ trafficking and child marriage are thus both forms of modern slavery, but I have little focus on discussion in human trafficking and modern slavery. The present session thus aims to shed light on the issue of both these forms of trafficking while identifying the contemporary challenges and probable measures to stakeholders to counter organ trafficking and child marriages. In this session, we have lined up various interesting and informative talks by our eminent speakers. So without any delay, I would like this moment to welcome and introduce our speakers. We are fortunate to have Dr. Kriti Bharti amongst us. I request Ms. Mani to kindly welcome ma'am. Included in World's Top 10 Activists and into the list of 100 Inspirational Women by BBC, Dr. Kriti Bharti is a rehabilitation psychologist, social activist, child rights advocate, and managing trustee of Sarthi Trust, Jodhpur, Rajasthan. She is well known for saving the children from abuse and exploitation, especially for the eradication of child marriages in India. Dr. Bharti has annulled the first child marriage of India and proceeded to annul 43 child marriages and stopped 1,500 till today. She has rehabilitated more than 13,500 children and women of various protection issues. Also, she made 25,000 villagers to take oath to not to perform child marriages. We welcome you, ma'am, to this conference. It's our pleasure to have Ms. Anjali Rimiji with us, who is joining us online. Can we have ma'am on screen, please? Ms. Anjali Rimiji is the founder and president of Parivar Bay Area. Parivar Bay Area focuses on driving TGNC economic justice and LGBT inclusion within the South Asian diaspora. Rimiji was born in Hyderabad, blossomed in Toronto, and stays belonging in Auckland. She currently works as a business development project executive in the wine industry. She works as a business development executive in wine industry. She serves on the boards of the LGBT Asylum Project, East Bay Stonewall Democrats, and the Board of Treasurer for San Francisco Pride. She's a special advisor to the San Francisco Office of the Transgender Initiatives, along with the Harvard Medical School and Gay Asian Pacific Alliance. We welcome you, ma'am, to this conference. We are also fortunate to have Shri Vijay Yadavji with us. Welcome you, sir. I request Ms. Vani to kindly welcome, sir. Shri Vijay Yadavji is a founder of and director of Samathul Foundation, which is an organization that has more than 15 years of experience in protecting and supporting runaways and distressed children to reunited with their families. Sir has also served as the member of Maharashtra State Commission for Protection and Child Rights. Sir has more than 15 years of experience in various leadership roles and has acted as a strategic advisor and catalyst for financial stability and program excellence. We welcome you, sir, to this conference. We also have Shri Saurav Shah, sir, and Shri Mehdi Hassan ji amongst us, who will be joining shortly.
So I will be introducing them and welcoming them once they join. So without any further delay, I now request Dr. Kriti Bharti to kindly address the conference. खम्मा घड़ी सा, खम्मा घड़ी सा। राजस्थान से आई हूँ तो कुछ टच आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बट मुझे यहाँ पर दिल्ली दिल वालों की नहीं फीलिंग आ रही है। मैं दिल्ली में ही हूँ या कहीं और हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग वाइब्स। खम्मा घड़ी सा। नाउ आई एम मुझे अब लग रहा है कि मॉर्निंग में आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। सो आई एम कॉल्ड डॉक्टर कृति भारती। मैं राजस्थान से हूँ, बट ट्रैवल मैं हर जगह करती हूँ, जैसे आज आप दिल्ली में मुझे देख रहे हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो सेवा इंटरनेशनल और हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उन सभी को धन्यवाद कि हम चाइल्ड मैरिज जैसे इश्यूज पे बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मुझसे लोग कहते हैं अब कहाँ चाइल्ड मैरिज हो रही है मैडम, we are living in entered in 2022 और यहाँ अब कहाँ चाइल्ड मैरिज है। तो मेरा जवाब यही होता है, चलिए डेट पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है चाइल्ड मैरिज। सो कैन एनीबडी हेल्प मी विद द पीपीटी? एक पिक्चर मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढी है। शायद ये पिक्चर चाइल्ड मैरिज को अच्छी तरह से, हालांकि इसमें और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं, बट इस पिक्चर के द्वारा हम चाइल्ड मैरिज की एक्चुअल स्थिति समझ सकते हैं। ये पिक्चर अपने आप में डिनोट कर रही है कि जो विक्टिम है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी होगी, डोमेस्टिक वायलेंस की भी शिकार होगी, पढ़ाई तो छूटनी है ही, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो और भी भयानक हैं। क्योंकि मैं फील्ड एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं आज यहाँ पर आपसे फील्ड की कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि गूगल पे आपने बहुत पढ़ा है, आपको पता है 18-21 अभी मैरिज एज है, और जिसे सरकार 21 लड़कियों के लिए 21 करना चाह रही है, ये सब चीजें आपको ब्ला ब्ला सब पता है। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू to the right of the area where you get the real child marriages. जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ऊपर एक खापिस्ट है। आप में से किसी ने खाप पंचायत का नाम सुना है? सबने सुना है। सो हम जो सबसे ज्यादा डील कर रहे हैं वो खाप पंचायत, हमारे राजस्थान में इनको जाति पंचायत कहा जाता है, हरियाणा और दूसरे साइड्स में इनको खाप पंचायत कहा जाता है। दीज आर द वन, अगर आप मुझसे पूछें कि अभी भी 2022 में भी चाइल्ड मैरिजेस क्यों खत्म नहीं हो रही है, दीज आर द पीपल हु आर बिहाइंड चाइल्ड मैरिजेस। बिकॉज अगर कोई फैमिली नहीं भी करना चाहती है कि नहीं, वी डोंट वांट टू गिव आवर चिल्ड्रन इनटू चाइल्ड मैरिज, तो दीज आर द पीपल, ये समाज के वो लोग हैं, जाति पंच, वो इस तरह का प्रेशर बिल्ड करते हैं कि अगर आपने चाइल्ड मैरिज नहीं की तो आपको सोशल बॉयकॉट यानी जाति बाहर कर दिया जाएगा और हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। और उस हुक्का पानी में बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले के जमाने में कुएं से पानी बंद कर दिया जाता था, लेकिन आज के जमाने में क्योंकि हमारा कुएं वाला सिस्टम नहीं रहा, तो राशन की दुकान से आपको राशन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी, उसके अलावा आपके घर कोई आ नहीं सकता, आपके घर कोई जा नहीं सकता, घर में जैसे भाभी है तो वो अपने पीहर नहीं जा सकती। देयर मेनी थिंग्स, आप एक तरह से आइसोलेटेड होके रह जाते हो। और उस मोमेंट पे क्योंकि फैमिलीज ये सोचती हैं कि लड़की को कहीं ना कहीं तो मैरिज करनी है, आगे करनी है, तो क्यों ना इसी मैरिज को कंटिन्यू किया जाए। और वहां पे चीज खत्म नहीं होती। यहाँ तक तो सोशल बॉयकॉट तक तो मैं कहती हूँ चलो आप अपने घर में रहो, किसी के यहाँ जाने से क्या मतलब है, लेकिन वहां तक बात खत्म नहीं होती। वहां बात शुरू होती है कि इफ यू वांट टू री एंटर इनटू द कम्युनिटी,
you have to pay the fine. मेरे पास मेरी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको जाति बाहर कर दिया गया जब उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू कीप दिस child marriage, I don't want to continue this child marriage, I want to annul this child marriage. उस मोमेंट पे किसी के ऊपर 16 लाख, किसी के ऊपर 20 लाख रुपए का दंड लगा दिया गया कि या तो आप पे कीजिए तभी आप कम्युनिटी में आ सकते हैं, और देन यू हैव टू गो टू योर इन-लॉज, यानी आपको अपने ससुराल जाना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. एक तरह से तुगलक हिटलर वाला जो सिस्टम है वो आप यहाँ देख सकते हैं. सो दिस पिक्चर डिनोट्स एवरीथिंग. डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ, डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन. खाप पंचायत एक फंदा लेकर खड़े हैं कि बस आओ और हम आपको टांगे. और हालांकि मेरा मानना है कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इससे इफेक्टेड होते हैं, बट यहाँ गर्ल का होना ये बता रहा है कि गर्ल्स आर मोर इफेक्टेड. ये सिर्फ रिसर्चेस नहीं कह रही हैं, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि क्योंकि बॉयज के पास देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस टू डू, बट गर्ल्स, क्योंकि जहां हम राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट्स की बात कर रहे हैं, वहां पर उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं. और जब आप लिमिटेड ऑप्शंस में जी रहे होते हो तो आपके अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन की जो सिचुएशन है वो अपने आप बढ़ जाती है. सो आई वांट टेक टीम टू टेक द स्लाइड फर्दर. सो डेटा शोइंग द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, ज्यादा इस पर नहीं फोकस करेंगे क्योंकि हमें पता है अलग अलग एजेंसीज अलग अलग अपना अपना डेटा शो करती हैं. प्लीज आप आगे चलते रहें. ये एक तरह से भारत का नक्शा है जिसमें चाइल्ड मैरिजेस को डिनोट करता हुआ, ये इंडिया टुडे में पब्लिश्ड एक आर्टिकल है, वहां से लिया गया है. इसमें एक चीज और देखने को मिली है कि लड़के भी चाइल्ड मैरिज के विक्टिम्स बहुत ज्यादा है, उनकी काउंटिंग ज्यादा है. अब आप कहेंगे कि काउंटिंग कैसे ज्यादा है? तो उसका रीजन ये है क्योंकि हम अभी जब चाइल्ड मैरिज विक्टिम मानते हैं तो वो 18 से कम मानते हैं लड़कियों के लिए, लेकिन अगर कोई 20 साल का लड़का उसका मैरिज होगा तो वो भी चाइल्ड मैरिज ही माना जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव अ गुड नंबर ऑफ बॉयज टू. कैन वी टेक इट फर्दर? लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. 100 साल हमारे लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को हो चुके हैं. हिस्ट्री वाइज तो मुझे लगता है कि चाइल्ड मैरिजेस बहुत बरसों से, युगों से हो रही है, लेकिन जब लेजिस्लेटिव हिस्ट्री की बात की जाए तो हम 100 साल पूरे करने आए हैं कि हम लीगली अब चाइल्ड मैरिजेस को कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते कि चाइल्ड मैरिजेस हो. यानी 1929 में हमने ये कह दिया था कि हम चाइल्ड मैरिजेस नहीं चाहते. 1929 यानी 1947 से पहले अंग्रेजों के शासन में हम ये बात शुरू कर चुके हैं. आज 2022 है, हम बहुत जल्दी 2029 को रीच कर जाएंगे. लगभग 100 साल हो चुके हैं. हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन हमारे देश के बच्चे आज भी बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं. एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू, ये अब हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम 100 साल पूरे नहीं होने दें. शताब्दी अच्छी चीजों की लगे तो अच्छा लगता है. जो चीजें अब्यूज एक्सप्लॉइट करें वो चीजें हमारे लिए और ज्यादा दुखदाई होती हैं. 1929 में शारदा एक्ट आया, तब 15 एंड 18 हमारे लिए एज थी लड़कियों के लिए एंड 18 लड़कों के लिए. 1978 में इस एज को चेंज किया गया, जैसे अभी एज चेंजेस की बात चल रही है, लड़कियों के लिए 21, उस समय 18 एंड 21 किया गया. 1960 में दहेज प्रथा को एड्रेस करते हुए डाउरी एक्ट आया. हालांकि सीधा चाइल्ड मैरिज से रिलेट नहीं करता ये एक्ट, लेकिन मैरिज एंड डाउरी कनेक्ट्स टू ईच अदर.
और जब हम विलेजेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे सीधा कनेक्शन देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं डाउरी का सीधा संबंध चाइल्ड मैरिजेस से हम देख सकते हैं। सो ये एक अलग हमने लेजिस्लेटिव चेंज देखा था 1960 में। 1978 में हम चेंज कर चुके हैं हमारा 18 एंड 21 एज, एंड देन 2012, जिसकी वजह से आज आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। 2012 में हमने देश का फर्स्ट चाइल्ड मैरिज अनलमेंट, दैट इज कैंसलेशन, करवाया। अब कैंसलेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी तक प्रिवेंशन की बात की जा रही थी कि कहीं चाइल्ड मैरिज हो रही है, आप जाइए रुकवा दीजिए, लेकिन अभी तक उन बच्चों की बात नहीं होती थी जिनकी चाइल्ड मैरिजेस नहीं रुकी, जिनकी चाइल्ड मैरिजेस को हम रोक नहीं पाए। सो मेरे पास 2012 में, हम 10 साल पूरे भी करने वाले हैं इस बार अनलमेंट को। 2012 में एक बच्ची आई, शी डिडंट वांटेड टू गो टू हर इन-लॉज हाउस। अगर आप में से किसी ने गौने का नाम सुना हो तो गौना इज आफ्टर दिस, गौना इज अ सेरेमनी की विदाई जिसको हम कह सकते हैं। तो उसको ससुराल भेजने की रस्म होने वाली थी, एंड शी डजंट वांटेड टू गो, शी वाज हैविंग हर ओन रीजंस, कि वो क्योंकि वहां कुछ अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन ससुराल में हुआ था। सो शी केम टू मी कि आई डोंट वांटेड टू गो ओवर देयर, जस्ट स्टॉप माय गौना। और मेरे लिए ये था कि अभी अगर गौना यानी विदाई की रस्म रोक दी तो उसके बाद 5-7 महीने 10 महीने बाद वापस वही सिचुएशन आएगी, तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है। उस मूवमेंट पे हमने बहुत सारे मजिस्ट्रेट्स, लॉयर्स सबसे डिस्कस किया, और कुछ रिसर्चेस से गो थ्रू हुए तो हमें अनलमेंट का एक सेक्शन मिला प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में, जिसमें चाइल्ड मैरिज होने के बाद कैंसिल हो सकती थी। बट मेरे लिए कंडीशन वो थी कि मुझे पता चल गया कि दुनिया में ताजमहल है, लेकिन ताजमहल तक पहुंचने का रास्ता मुझे नहीं पता था, और पूछने पर किसी और को भी नहीं पता था। सब लोगों का यही कहना था कि आप डिवोर्स में चले जाइए, उससे भी मैरिज सेपरेट होगी। बट आई डोंट वांटेड टू गो विद अ डिवोर्स, बिकॉज डिवोर्स हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी में सोशल स्टिग्मा लिए हुए है, एंड आई वांटेड टू कैंसिल इट। सो आज के 10 साल पहले की बात है। बहुत सारी चीजें की, जब आप एक अंधेरे कमरे में एंटर होते हैं, यू प्लग ऑन ऑल द स्विचेस, कुछ फेल्ड हुई, कुछ सक्सीड हुई, और इंडिया का फर्स्ट चाइल्ड मैरिज कैंसिल यानी अनलमेंट हुआ। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था तो उसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सीबीएसई बोर्ड ने भी अपने करिकुलम में इंक्लूड किया, और अभी हम चाइल्ड मैरिजेस पे लगभग 7 इंटरनेशनल, वर्ल्ड एंड नेशनल रिकॉर्ड्स बना चुके चाइल्ड मैरिज अनलमेंट पे। राजस्थान जहां बदनाम है कि चाइल्ड मैरिजेस यहाँ सबसे ज्यादा होती है डेटा वाइज, वो राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट इन ऑल ओवर द इंडिया जहां फर्स्ट चाइल्ड मैरिज अनलमेंट हुआ। So we are just giving a positive approach over here. And right now, Rajasthan is the leading state in all over the country where जहाँ सबसे ज्यादा child marriage annulments हुए हैं, that is 43 child marriage annulments. So हम आगे चलेंगे। चैलेंजेस, मुझे वानी जी ने कहा था कि हम चैलेंजेस पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो चैलेंजेस से पहले मैं एक एक्ट के बारे में आपको हल्का सा बता देती हूँ। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के ऊपर हमारा पूरा कानून टिका हुआ है, और ये कानून 3 चीजों को एड्रेस करता है। 1821 आपको पता है, ये 3 चीजों को एड्रेस करता है कि हम क्या क्या करेंगे। 3 पीज हैं कानून का, अगर सारांश समरी है वो ये है कि वो 3 पी पे काम करेगा। द फर्स्ट इज प्रिवेंशन, द सेकंड इज प्रोटेक्शन, एंड द थर्ड इज प्रोसिक्यूशन। प्रिवेंशन, बाल विवाह को हम रोकेंगे। प्रोटेक्शन, बाल विवाह को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, हम विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड द थर्ड वन इज प्रोसिक्यूशन, जो बाल विवाह करेंगे उनको सजा मिलेगी। इन 3 चीजों पे एक तरह से ये आधार स्तंभ है, इनके ऊपर पूरा का पूरा कानून टिका हुआ है।
मेरी जो पहचान है, फर्स्ट एंड सेकंड जो प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन है, उस पे हमने बहुत काम किया है। प्रिवेंशन में हम अभी तक 1500 चाइल्ड मैरिजेस होने से पहले रुकवा चुके हैं, एंड प्रोटेक्शन में हम बच्चियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका चाइल्ड मैरिज अनलमेंट करवा रहे हैं, एंड देन उन्हें रिहैबिलिटेट कर रहे हैं कम्युनिटी में एंड फैमिली में, ताकि वो अपनी लाइफ को वापस रीस्टार्ट कर सके, रीशेड्यूल कर सके। चैलेंजेस के साथ मैं आई हूँ, लेकिन बिना सॉल्यूशंस के जाना अच्छा नहीं लगता। हम एंड अप करें, फिल्म की जो एंडिंग होनी चाहिए वो हमेशा हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, तो सॉल्यूशंस के साथ हम एंड अप करेंगे इस सेशन को। तो चैलेंजेस के साथ हम सॉल्यूशंस पे जा रहे हैं। फर्स्ट चैलेंज जो मुझे लगता है सिर्फ चाइल्ड मैरिज का नहीं है, वो हर इशू का है, लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, न पुलिस में देखने को मिलेगा, न कोर्ट्स में देखने को मिलेगा। कोर्ट्स में कहते हैं हमारे पास बहुत सारी पेंडिंग फाइल्स है, पुलिस में आप जाओगे तो कहेंगे कि मैडम ये तो नॉर्मल है। अगर आप राजस्थान में आ जाएंगे और पूछेंगे किसी से भी, कैब ड्राइवर से या किसी से भी, कि चाइल्ड मैरिज यहाँ होती है क्या, तो ये तो नॉर्मल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे यहाँ जब डॉक्यूमेंट्रीज के बनाने के लिए लोग आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि जिस कैब से आ रहे हो आप उस ड्राइवर से बात करो कि चाइल्ड मैरिज का स्टेटस क्या है और हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। और परसीव करने के लिए जो आम लोग हैं वो ये कहते हैं ये तो नॉर्मल है, ये तो आम है, अगर आप राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट्स में जाएं। सो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो सेंसिटाइजेशन की है। तो मैं पुलिस और जजेस को हमेशा यही कहती हूँ, आपका बच्चा होता तो भी आप यही कहते, तो कंसिडर योर ओन चाइल्ड, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज सेंसिटिविटी डेवलप करना इज द हार्डेस्ट थिंग। आप पढ़ाई करवा सकते हो। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ एज, क्योंकि हम जब चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट कर रहे हैं तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिटर्मिनेशन ऑफ एज। लड़कियां 13-14 से 18 के बीच एक ही फिजिकल लेंथ लिए हुए होती हैं, तो उनका बॉडी से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस एज के हैं। उस मोमेंट पे बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी 19 साल की लड़की की शादी में बाल विवाह के नाम पे उनके यहाँ पर जाके हंगामा कर दो और फिर चाइल्ड मैरिज नहीं है, ये तो अडल्ट मैरिज है। सो उसके लिए जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 94 और रूल 12 है, जो कहता है कि आपको अगर किसी की सिर्फ चाइल्ड मैरिज नहीं, अगर आपको मेरी भी एज डिटरमिन करनी है, आपको खुद की भी एज डिटरमिन करनी है, तो उसके लिए आपका जो स्कूल का या 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो एज लिखी हुई है, दैट इज योर रियल एज, रियल डेट ऑफ बर्थ। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो माना जाएगा। और अगर वो भी नहीं है, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, या लड़का भी पढ़ा नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, देन फिर आपको जाना पड़ेगा मेडिकल टेस्ट के लिए, ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए। उसमें जो एज आएगी उसमें 2 साल का पूरा गैप देके एक तरह से बताया जाता है कि 10, मान लीजिए 12 से 15 साल की लड़की है, ये एज बताई जाती है। लूप होल्स इन लॉज एंड लेजिस्लेशंस, बहुत हमारा जो लॉ है वो उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, और जब हम दूसरे कानून के साथ उसको कंपेयर करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उस मोमेंट पे कुछ चीजें हैं जो हमको अभी भी लॉ प्रोफाइल से ठीक करने की जरूरत है, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है। रिसोर्सेज हमेशा लैक रहे हैं शुरू से। जब भी चाइल्ड प्रोटेक्शन का मुद्दा आता है, और स्पेशली when we are talking about girl child, हमेशा रिसोर्सेज कम रहते हैं। तो यहाँ एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम इंटीग्रेशन करें एनजीओस के साथ, सीएसओस के साथ, कम्युनिटीज के साथ, इवन जो आजकल सीएसआर फंड्स भी आते हैं, तो उसके साथ किसी ना किसी तरीके से इंटीग्रेट करके हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। जो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है उस बेसिस पे हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं।
लैक ऑफ नॉलेज इन ऑफिसर्स। हम लोग RS IS का एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं बस लाइफ सेट हो गई, अब नहीं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, कुर्सी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, महीने की तनख्वाह आएगी, और एंड ऑफ द डे जब रिटायर होंगे तो अच्छी खासी पेंशन आएगी। लेकिन हमारा जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम तभी फुलफिल कर सकते हैं जब हमें हमारे रोल से रिलेटेड नॉलेज है कि हमको उसको कैसे करना है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, और सीखना नहीं चाहते। सबसे बड़ी चीज है कि कुछ लोग 90% लोग हैं जो सीखना नहीं चाहते। वो एक लेवल पे पहुंचने के बाद बस अब कुछ नहीं सीखना, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स ये होनी बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स होनी जरूरी है, ताकि हम भी सीख सकें और दूसरे भी सीख सकें, और तभी स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ स्किल्स भी इनहैंस होंगी। अब जो मैं आपको चैलेंज बता रही हूँ, दिस इज द रियल चैलेंज विच not only victim faced but activists like me also faces: threats, threatenings and attacks. सिचुएशन ये आती है कि जब कोई लड़की कहती है कि मुझे ये चाइल्ड मैरिज नहीं रखनी, तो उसको इस तरह की धमकियां मिलती हैं कि मार देंगे, ये कर देंगे। और जब एक्टिविस्ट लाइक मी, मुझे तो मतलब मील्स में, लंच ब्रेकफास्ट डिनर में मील्स मिले ना मिले, बट मेरे फोन पे थ्रेटनिंग्स के मैसेजेस खूब आ जाते हैं, या फोन कॉल्स ऐसे आ जाते हैं, आमने सामने थ्रेटनिंग्स के सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और अटैक्स तो मुझ पे बहुत बार भी हो चुके हैं, किसी केस को छोड़ने के लिए। नॉट ओनली फिजिकल अटैक्स, ये अटैक्स कई बार पॉलिटिशियंस की तरफ से भी होते हैं, कभी कम्युनिटी पीपल की तरफ से भी होते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा उस विक्टिम को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसके साथ में न तो फैमिली होती है, न कम्युनिटी होती है। उस मोमेंट पे हम उसको शेल्टर, लाइवलीहुड, एजुकेशन से कनेक्ट कर देंगे, बट मेंटल जो आपको स्ट्रेंथ है वो आपका छूट जाता है, क्योंकि आप खुद ऐसा महसूस करने लगते हैं कि यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, क्योंकि आपको लगता है पूरी दुनिया खिलाफ हो चुकी है, हम गलत रास्ते पे चल रहे। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिंदगी पे बन जाती है उन बच्चों की जो चाइल्ड मैरिजेस को खत्म करने की बात करती है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, काउंसलिंग टाइम टू टाइम रहे, क्योंकि जब इस तरह के थ्रेट्स एंड अटैक्स मिलते हैं तो वो जो फर्म डिसीजन उन्होंने लिया है कि चाइल्ड मैरिज अनलमेंट करवाना है, वो उस डिसीजन से बैक करने लगती हैं। तो काउंसलिंग टाइम टू टाइम हो, प्रोटेक्शन मिले। प्रोटेक्शन सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहे कि ठीक है हमने ऑर्डर करवा लिया कोर्ट से या पुलिस से, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है कि कागज और इम्प्लीमेंटेशन, दीज आर दीज डिफरेंट थिंग्स। कागजों में बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे हम अभी भी 0/0 हैं। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जनरली लोग आजकल बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, चाइल्ड मैरिजेस करते हैं तो इनविटेशन कार्ड नहीं छप पाते, फोन अलाउड नहीं होते हैं, फोन आउट ऑफ द प्रेमिसेस पहले ही रखवा दिए जाते हैं, और उसके बाद लड़की के परिवार से 2-3 जने, लड़के के परिवार से 2-3 जने, दैट्स ऑल। और रात को खेतों में ले जाके चाइल्ड मैरिज, आजकल का जो चलन है वो बता रही हूँ आपको, रातों में खेतों में ले जाकर चाइल्ड मैरिजेस कर दी जाती हैं। और मान लीजिए किसी ने शिकायत कर दी पुलिस में, या हम जैसे एनजीओस को, या किसी को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को, और उन्होंने अपनी तरफ से एक्शन लिया, गए जाके कार्रवाई भी कर दी, उसके बाद भी चाइल्ड मैरिज हो जाती है। कैसे? आज सुबह हुआ, कार्रवाई हुई, दोपहर तक डिस्कशन हुआ, शाम तक डेट प्लेस चेंज, और 2-3 दिन बाद अगर मान लीजिए 25 की शादी है तो 28 की शादी कर दी जाएगी, या प्रीपोन या पोस्टपोन कर दी जाएगी, प्लेस चेंज कर दी जाएगी, और चाइल्ड मैरिजेस तो होके रहेगी। तो हम लोग उस मोमेंट पे ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए चाइल्ड मैरिज रुकाने गए हैं,
तो कौन कौन सी रस्में हो चुकी हैं। अगर घी पिला दिया है तो भैया ये तो चाइल्ड मैरिज होके रहेगी, आपको वहां से बच्ची को हटाना होगा अनटिल वो टाइम पीरियड ना निकले। एक और प्रथा होती है जो राजस्थान में बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड मौसर। इस प्रथा में घर में किसी की अगर डेथ हो जाती है, मान लीजिए मेरे घर में मेरे नाना दादा किसी की डेथ हो गई, तो मेरे घर के जितने बच्चे हैं ननिहाल एंड ददिहाल साइड से, उनकी 13 दिनों के अंदर चाइल्ड मैरिजेस कर दी जाएंगी। अब कोई जाने वाला मरने वाला कोई एक पर्टिकुलर मंथ में तो जाएगा नहीं कि हम सिर्फ अक्षय तृतीया पे फोकस रहें कि हम अक्षय तृतीया पे जागेंगे, उसी टाइम पे चाइल्ड मैरिज होगी। तो राजस्थान हब इस तरह से बन जाता है कि आपको पूरे साल चाइल्ड मैरिजेस देखने को मिलेंगी। जो आपके ऑस्पिशियस डेज हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो मौसर प्रथा है, मेरे जितने चाइल्ड मैरिज एनलमेंट के केस हैं 98% केसेस मौसर के हैं, जिनकी मौसर में चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं। मौसर किस नाना दादा की डेथ हुई और घर में जितने बच्चे हैं लड़के लड़कियां सबको ब्याह दिया, जैसे हमारा कोई पार्टी चल रही है, ट्रीट चल रही है। और उनका रीजन उसके पीछे दो होता है कि एक तो एक ही खाने में जो मृत्यु भोज का खाना है उस खाने में खर्चा निकल जाए, डबल बार नहीं करना पड़े। सेकंड, एक और माना जाता है कि जिसकी डेथ हुई है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी कि घर में खुशियां आई। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मौसर के बाल विवाह राजस्थान में बहुत देखने को मिलते हैं। कलेक्शन ऑफ एविडेंस पे मैं बात कर रही थी, और टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, दोनों चीजें हैं। कलेक्शन करना मुश्किल है क्योंकि फोन कॉल्स और इनविटेशन कार्ड्स नहीं छपते, फोन से आपकी फोटोज नहीं होती। तो जब हम कोर्ट में जाते हैं कि सर ये बाल विवाह हो गया है, तो आप बाल विवाह के खिलाफ इनका प्रोसिक्यूशन कीजिए, पनिशमेंट दीजिए। या मान लीजिए बाल विवाह हो चुका है और बच्ची एनलमेंट चाहती है, तो कोर्ट कहता है मैडम पहले चाइल्ड मैरिज प्रूव कीजिए और उसके बाद चाइल्ड मैरिज एनलमेंट की डिक्री लीजिए। मेरे साथ एक केस ऐसा हो चुका है जिसमें लड़की के फादर ऑलरेडी क्रिमिनल थे, मर्डरर थे, तो उनको ऑलरेडी सारी चीजें पता थी कि कैसे लॉ को एक्सरसाइज करना है। ना तो फोटोग्राफ हुई, ना इनविटेशन कार्ड छपे उसकी चाइल्ड मैरिज में, और पर्ची आ चुकी है। सो आई एम जस्ट समिंग अप। तो उस मोमेंट पे उसके पक्ष में कोई सपोर्ट करते हुए कोई टेस्टिमनी देने को तैयार नहीं था बच्ची के कि उसकी चाइल्ड मैरिज हुई है। उस मोमेंट पे फेसबुक से हमने एविडेंस कलेक्ट किए और वहां से हमने एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में पेश किए, एंड देन उसकी चाइल्ड मैरिज एनलमेंट हुई। दैट वाज अ प्योर ड्रामा, वो हम आफ्टर द सेशन डिस्कस कर सकते हैं। सो कलेक्टिंग एंड टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो हम हमेशा यही करते हैं कि जो प्राइमा फेसी हमको मिल रहा है एविडेंस, हम पहले उसको ले लें, और उसके बाद आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जैसे कि हमने फेसबुक को यूज किया, और इस तरह की चीजों को यूज करके भी आप एविडेंसेस कलेक्ट करके जस्टिस दिलवा सकते हैं। लेजी एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, वैसे इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, बट स्टिल हम अपने एटीट्यूडनल चेंजेस ला सकते हैं। मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो हम कई बार इस तरह के ओरिएंटेशन कैंप्स भी रखते हैं जिसमें लोगों का लेजी एटीट्यूड छूटे, तो वो एक कोशिश की जा सकती है। एट लास्ट 3 पीस पे काम किया जा सकता है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन, जो कि हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट भी कह रहा है कि हम इसी तरह से काम करें। लोग रिहैबिलिटेशन माइलस्टोन्स हमको इसमें तय करने की बहुत जरूरत है, जहां सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं क्योंकि लड़कियों का साथ छोड़ देते हैं पेरेंट्स कि हम इतना फाइन पे नहीं कर सकते, तब उनका लाइवलीहुड, शेल्टर, एजुकेशन, सारा जो उनकी जिंदगी है वो एक तरह से अदल झूल में आ जाती है। तो उस मोमेंट पे ये माइलस्टोन्स क्रिएट करने बहुत जरूरी हैं, और साथ में काउंसलिंग देनी जरूरी है कि वो आगे बढ़ें, वो उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो उस पे फर्म रहें और उस पे आगे बढ़ें। एक सवाल मुझसे सब पूछते हैं कि मैम आप इतने सालों से काम कर रहे हैं तो चाइल्ड मैरिजेस कैसे खत्म होंगी?
तो मैं उस पे हमेशा यही बात करती हूँ कि आप 3 चीजें कर दीजिए और बस बाल विवाह खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान में आपको कहीं बाल विवाह देखने को नहीं मिलेगा। कैन यू प्लीज। कैसे हम चाइल्ड मैरिजेस को इरेडिकेट कर सकते हैं? फर्स्ट, चाइल्ड मैरिज एनलमेंट है, जिस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक तरह से वैक्सीन है। कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं आई तब तक हम उस चीज से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाए। ये एक तरह से वैक्सीन है। मेरे लिए चाइल्ड मैरिज किसी बीमारी से कम नहीं है, और इस बीमारी को ठीक करने के लिए चाइल्ड मैरिज एनलमेंट इज अ वैक्सीन, जहां आप बच्चों को चाइल्ड मैरिज की बेड़ियों से बाहर निकाल के उनको एक नई जिंदगी दे रहे हैं, उनको एक सुनहरी लाइफ, गोल्डन लाइफ से जोड़ रहे हैं। सेकेंडली, जो मैंने हमेशा महसूस किया है, हमारा प्रोसिक्यूशन बहुत ढीला है। अगर आप डेटा वाइज जाएंगे तो आपको दिखेगा कि चाइल्ड मैरिजेस का डेटा तो बहुत आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब पनिशमेंट का डेटा आप देखेंगे या प्रोसिक्यूशन का आप डेटा देखेंगे कि कितनी एफआईआर दर्ज हुई है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, तो आपको वो बहुत, मतलब आप उसका कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत हाई है और दूसरा बहुत लो है। तो उस मोमेंट पे यहाँ बहुत पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो प्रोसिक्यूशन पे वर्कआउट करें, कि एफआईआर दर्ज करें। अगर चाइल्ड मैरिज रोक भी दी गई है तो भी चाइल्ड मैरिज के लिए एफआईआर दर्ज करें। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, अटेम्प्ट टू रेप है, वैसे ही अटेम्प्ट टू चाइल्ड मैरिज होना चाहिए, जो हमारे अभी इंडिया में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ में प्रिवेंशन तो है ही। एंड द थर्ड वन इज चेंजिंग ऑफ माइंडसेट, क्योंकि ये सारा खेल माइंडसेट से शुरू है, और माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा, जब तक हम नहीं समझेंगे कि चाइल्ड मैरिज अब खत्म कर देना चाहिए। एक तरफ हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही लोग चाइल्ड मैरिजेस कर रहे हैं। सो ये जब तक दोगली सोच खत्म नहीं होगी, माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तब तक बाल विवाह खत्म नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। ओरिएंटेशन कैंप्स किए जा सकते हैं, लोगों को अलग अलग तरीकों से समझाया जा सकता है, ऐसी मटेरियल डेवलप करके भी समझाया जा सकता है, ओथ सेरेमनीज दिलवाई जा सकती हैं, और स्टडीज एंड रिसर्चेस विल आल्सो हेल्प अस कि हम उसको आगे कैसे लेके जाएं। बस इसी के साथ, क्योंकि मुझे पहले ही पर्ची दिखा दी गई है, लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी। मुझे क्या ड्राइव करता है, मेरा एक सपना है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड मैरिज विक्टिम मैं सिर्फ और सिर्फ एक जगह देखना चाहती हूँ, और वो है किताबों में। फिजिकली मैं चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड मैरिज विक्टिम कहीं नहीं देखना चाहती। एक तरह से मैं चाहती हूँ कि मैं ये डायलॉग दूं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ चाइल्ड मैरिज। थैंक यू। Thank you, ma'am, for your stimulating words and all the great work that you are doing for society and humanity. I would now like to invite Ms. Anjali Rimiji to address this conference. नमस्कार सबको, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सबको, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अंजलि रिमी है। I will do my best to speak in Hindi as much as possible. आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ट्रांस महिला अमेरिका में बैठ के ये कॉन्फ्रेंस में क्या कर रही हूँ, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज और ऑर्गन ट्रैफिकिंग में ट्रांस, किन्नर, हिजरा लोगों का क्या स्थान है। मैं वहां से शुरू करना चाहती हूँ जहां इस कॉन्फ्रेंस का आज के सेशन का नाम है ऑब्सक्यूरिटी। जैसे आप जानते हैं, वो हिंदी का अनुवाद उसमें होता है अंधकार। हम ट्रांस, हिजरा, किन्नर लोगों को उसी अंधकार में जीना पड़ता है, literally and figuratively too. And that is why we are here to have that conversation.
दूसरी बात जो मैं कहती हूँ कि मैं क्यों वहां से बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने तो आज यहाँ कॉन्फ्रेंस पे आते हुए किसी किन्नर को देखा होगा ट्रैफिक लाइट पे, या किसी किन्नर को देखा होगा वो जहाँ आप वो किसी शादी में जा रही थी बधाई देने या छल्ला मांगने ट्रेन पे, शायद आप मेट्रो पे आए थे। तो ये हो रहा है क्योंकि मैं एक एक्सेप्शन हो गई हूँ। I have been able to be one of the few transgender women who have been able to access and get in front of you and have access to education. ये हमेशा से ऐसे सच्चाई नहीं था। एक जमाने में हम किन्नरों का और हिजड़ा लोगों का बहुत सम्मान और मान किया करता था, ये भारत देश और पूरी दुनिया में। आप में से बहुत सारे जानते हैं, और मुझे एक स्लाइड ट्रैक शेयर करना था, तो अगर मेरे शेयरिंग प्रिविलेज दे सकते हैं तो अच्छा होगा। नहीं तो मैं बता सकती हूँ कि आप जब पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, अभी महाशिवरात्रि हुआ था, अर्धनारीश्वर बोलते हैं शिव जी को। बहुचरी माता को नाम सुना होगा आपने, मुर्गी माता का नाम। हम एक जमाने में transgender was revered. We were demigods. We were part of mythology and we were part of history. And hopefully you can see my screen now, or you're probably seeing the same screen. Can you see my screen? Because I can't. Yes, ma'am, we can see it. Awesome. तो हमें एक जमाने में बिल्कुल भगवान का दर्जा दिया जाता था, and it is not new to the Indian diaspora. We were very much considered to be part and parcel of divinity, and our work was there. And that continued until we got criminalized in the British Act of 1871. And also, ये जो unique status है हिजड़ा का, वो transgender का हिंदी अनुवाद नहीं है. It is a cultural indoctrination. It is a cultural existence of a feminine gender expression and identity. And it's neither male nor female, it's gender non-conforming. And, you know, there's enjoyment and there's also a confinement in all of this existence. And so what has happened is this rich hijra culture that we have had, the nomenclature of which existed for a long time with different names. आप साउथ में जाएंगे तो तिरनंगा आपको मिलेंगे, अरवानी, जोगती मिलेंगे. अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो आपको किन्नर मिलेंगे, शिव शक्ति, जोगती. अभी हमारी माता मंजम्मा को पद्मश्री अवार्ड मिला था, आप में तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो भी एक जोगती माता है हमारे लिए. इतना सारा सम्मान होने के बावजूद हमारी जीवन की व्यथा क्यों इतनी बुरी है? बुरी है क्योंकि it starts with not understanding who we are. वो colonization जो हुआ है हमारे साथ, we have not been able to decolonize our minds and believe that transgender and hijra people are beyond the binary of gender that was laid by the British or the outsiders, whoever they were. The second factor that I will give you is because of our stories. बचपन में मैं स्कूल जाती थी, लोग मुझे पत्थर से मारते थे. ये 20 साल पुरानी बात है, maybe 25. I'm dating myself now. But we have to get past that resilience and we have to find that courage to live. Otherwise, we won't be able to exist. What that does, it leaves us very deprived of access to many things. And we try to live and exist despite all that struggle. अब बात आती है क्यों होता है इस बारे में? Because we face multitude of unique obstacles जो कहीं और या किसी और intersection identity में आपके पास नहीं होता है. घर से निकाला जाता है,
I was sexually abused from the age of 11 till the age of 20 by different people, different men. वो भी trafficking होता है. मुझे लोगों ने इस्तेमाल किया, लोगों ने मुझे dress up kiya and use kiya. It is also the aggravation of trafficking. We have to recognize that human trafficking doesn't need to look a certain way. And that is why it is important to talk about trans people here. दुनिया भर में 20% से ज़्यादा trans लोग एक underground economy में जीते हैं, because we have been ostracized, we have been further marginalized, and we have not been allowed to exist. We have been pushed to do what you see us doing on the trains, and that is the chella and the badai. And 41%, including me, have experienced assault and forced rape and trafficking by having to do forced sex when we have had to make our ends meet by living on the streets. The two ways of existing in India, unfortunately, for trans hijra folks, has been either to be begging, which is this very demeaning connotation when we are actually giving you blessings. And the second one is sex work, where we have very little access to preventative sex education and aids such as condoms, whereby we are easy victims of HIV and AIDS and many other diseases. It can also be very important to recognize that हम में से बहुत सारे लोग पुलिस के पास जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि we have been already hung strong by the agencies. And आप पूछ सकते होंगे मेरे से कि we have a lot of laws in this country, we should be okay. But the reality is, उनका पालन कौन कर रहा है? Who is executing the Transgender Act, which has been revised all the way till 2020 to make our lives better? Is society really thinking about us? Is the pandemic going to not kill us? जब pandemic हुआ था, तो we did not have access to, forget medication, we didn't have even access to food, क्योंकि हमारे में से बहुत सारे लोग बाहर जाके बधाई मांगते हैं, दुकान पे दुकान जाते हैं, तो तभी उनको कुछ पैसे मिलते थे, लेकिन वो भी हो नहीं पा रहा था, because we struggled to be allowed to go out. लाठी लेके मारते थे हमको. And leave alone that, we lived in such close quarters that the infection was so rampant that many of our people died unaccounted for. And मैं यहाँ बैठी, I have seen a lot of that, and I consider myself to be a very privileged trans woman who's been able to access education and be in a different country. But there's a lot of change that needs to happen, and it is happening. And how can you help in stopping that? You can help by recognizing that discrimination and marginalization of trans hijra kinner folks happens right in front of your eyes. The mental trauma and the emotional harm that people can cause by their very little to very big acts can actually show that that trauma can exist. And I would just say that there's a whole lot of stigma that's attached to being a same-sex attraction person, or a trans or a hijra person. मैं कहीं कहीं बहुत सारे जगह बताती भी नहीं हूँ कि मैं एक trans महिला हूँ, because I fear that the very next minute I am not going to be seen as a human being. तो ये इसकी मैं आपसे एक ही solution देती हूँ. सबसे easy है आप सबके लिए to understand that the burden of intersectionality, ये हमारे सबके साथ होता है.
We carry many identities, and आपको ये समझना है कि आप में से ज्यादातर लोग सिस लोग हैं जो ये सर्कल के ऊपर बैठते हैं। आपको प्रिविलेज है, आपके डोमिनेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी मंदिर में जाने के लिए या किसी क्लासरूम में बैठने के लिए। हम लोगों को सीट के बाहर लेके जाते हैं और वाटर टैंक के पीछे उनका रेप कर दिया जाता है, जो मेरे साथ हुआ 15 साल में, बार बार, हर रोज, 1 साल के लिए। We are neglected, we are oppressed, we are discriminated. लेकिन हमारे अंदर बहुत जान है, हम उतनी आप बहुत सारे लोगों को देख के होंगे हमारे जैसे, तो आपको पता है कि हम वैसे ही इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। We are not going to get perished and erased so quickly. We fight back. But any of these identities, and when you combine all of these identities put together, जैसे कृति जी बता रही थी, हमें तो थ्रेड्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, एक्टिविस्ट को आते हैं, वो तो जरूरी है, जरूरी, I mean that is a given. But ट्रांस लोगों के लिए तो, ट्रांस हिजड़ा लोगों के लिए तो थ्रेड्स हर दिशा से आते हैं. If it's not the city agency, it is not the official, it is the common man. If it is not the common man, it is the doctor who refuses to touch. The two biggest inequities of trans people in the world is economic inequity and healthcare inequity. हमारे देश में इतने सारे ट्रांस हिजड़ा किन्नर लोग हैं जो अपना सर्जरी खुद कर लेते हैं because there is no access to education. बहुत सारे schemes आ रहे हैं and we appreciate that, but वो नए implement होते होते बहुत साल लग जाएंगे. The last census of trans people in this country was done in 2014. So we don't even have proper records of how many trans people are in this country. Economic inequity की बात करते हैं तो we have no access to education. हम में से बहुत सारे लोग भाषा का ध्यान भी नहीं रख सकते हैं. So we end up not having able to have a job, not have a roof over our head. और बाहर नहीं जाते हैं तो खाना नहीं बनता है, खाना नहीं बनता है तो भूखा सोना पड़ता है. उससे बेहतर है कि हम कुछ भी कर ले जो हम कर सकते हैं, which ends up being those two things which I mentioned previously, begging and sex work. So I think I've told you enough. I have invited you to trust and care for our communities. The first thing you can do as a human being is stop using the derogatory terms of saying chakka and hijra and all that as a curse word. हाँ, pronouns के बारे में तो बहुत controversy है, तो मैं उसके वो table आपको पढ़ाऊंगी नहीं, आप पढ़ सकते हैं खुद. But I will tell you that it begins with language. It begins with making sure that you are actually going to treat us like a human being. और ये तो अंग्रेजी के जो helpful tips है मैं दे रही हूँ आपको. हमारे हिंदी भाषा में बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं अच्छी तरह से शब्दों का, जिससे हाँ आप हमारे सम्मान को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं. The second thing is, आप टाइम लीजिए ना, आप हमसे बात करने के लिए. हमको 5 रुपए देके टॉप लाइट से चला जाएंगे तो ठीक है, उस मिनट के लिए हम शायद खुश हैं, कुछ हो रहा है. लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप, you have to be the catalyst who's going to be changing our lives. You got to listen to us. You got to take your access, and you got to listen to learn and unlearn. जो भी आपके घर में सिखाया जाता है, मेरी मम्मी बचपन में मेरी आंखें बंद कर देती थी जब किन्नर हिजड़ा लोग आते थे ट्रेन में, because she was so scared that they were going to take me away. No, we are not the people who are doing the trafficking. We are victims of trafficking. But that's not how news portrays us. That's not how the society looks at us as. They look at us like demons. घर नहीं दिया जाता है हमको रेंट पे. दिया जाता है तो बाथरूम लॉक कर दिया जाता है. And this is the reality of our life. So I could not beg you more. And the biggest thing you can do is do something monumental. ताकि हमारे लोगों को
एक स्केल पे मदद मिले। एंड उसीलिए मैं सेवा को धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम कहना चाहती हूँ फॉर रियली स्टेपिंग अप, बिकॉज ड्यूरिंग द पैंडेमिक हमने बहुत सारे लोगों को पूछा हमारी मदद करिए, किसी ने मदद नहीं किया ये नहीं कहूंगी, लोगों ने मदद किया whatever they could in their capacity, but the real help came from Seva. And I would like to conclude by playing a quick video. Hopefully we have the sound here to play that. Let me reshare so I can also make sure that we have the sound. Indian Trans All India Lives, and it is a pan-India SITO stands for Save Indian Trans All India Lives, and it is a pan-India grassroots effort to save, as the name says, the lives of trans hijra folks in India who are already very marginalized, and during these crises of the COVID virus becoming very rampant, they have been further marginalized, further isolated, further neglected. For trans hijra folks in India, sex work and begging is what they end up having to do with no other choices. Sorry to interrupt you. If they do not go out, Sorry to food to interrupt you. perhaps there is no shelter over their head for that night. And SITO becomes so critical for us to provide the base. Yes, can you hear me? Yes, we can hear your video, but your screen is not visible to us. Oh, sorry. Let me try that again. Can you see it now? Yes, ma'am. Sorry about that. SITO stands for Save Indian Trans All India Lives, and it is a pan-India grassroots effort to save, as the name says, the lives of trans hijra folks in India who are already very marginalized, and during these crises of the COVID virus becoming very rampant, they have been further marginalized, further isolated, further neglected. For trans hijra folks in India, sex work and begging is what they end up having to do with no other choices left. If they do not go out for that day, there is no food to eat. Perhaps there is no shelter over their head for that night. And SITO becomes so critical for us to provide the basics of livelihood, of existence that are deprived to them by providing them with food and medical kits. Seva International has really taken on a central force. I can categorically say that from the minute Seva came to know and started guiding us and helping us, the support has been unconditional. We couldn't have been able to reach at least half of these communities that are very hidden, isolated for safety reasons. Our folks who live with HIV, our sex workers, if it was not for the support of Seva and the trust they put in us to be able to reach these communities. We have a lot of partners, but what Seva has beautifully shown us is they wanted us to continue to be in the lead as trans people to help our communities, and they provided us the resources. Thanks to Seva! Thanks to Seva! Our community is not liberated until each one of the trans hijra folks of India have stable housing, have
have sustainable livelihoods, have respect in this community, and deserve all the dignity that they are very rightfully owed. And hence, SITO is a long-term effort of Parivar Bay Area in India that aims and visions to collaborate in building healthcare equity, information equity, financial equity, economic equity. We will continue the work, we will continue to better lives, and we will continue to deliver on being the love, light, and acceptance for this community, centering South Asian trans queer folks and building our Parivar. Thank you with that. Dhanyavad Bahut. Thank you for listening, and thank you for showing up for Trans Hijra Lives. And thank you, Seva International. Thank you, ma'am. Thank you for your stimulating words and all the great work that you are doing for the society and helping us in magnifying the cause of this conference in a best possible way. We are proud that Parivar Bay Area is our partner. Thank you so much. We are also delighted that Shri Saurabh Shah sir and Mr. Mehdi Hassan has also joined us. We welcome you, sir, to this conference. Shri Saurabh Shah is an Indian Police Service officer of 2009 batch, currently serving as Executive Director of the Power Finance Corporation Limited. Sir was previously engaged with the Ministry of Health and Family Welfare during the initial phase of COVID-19 crisis, where he was a part of the team setting up the war room for handling data and analyzing trends emerging out of the spread of the pathogen. Sir has been posted in the Ministry of Youth Affairs and Sports as the Director General of Nehru Yuva Kendra Sangathan and Director of NSS. Sir has vast experience in the distinct police administration. We welcome you, sir, to this conference. I would like to invite Ms. Mani. I would like to invite our student coordinator to kindly welcome sir. Thank you, sir. We are also pleased to welcome Mr. Mehdi Hassan. Can we have him on screen, please? He is joining us online. Sir is currently working with the United Nations Office on Drug and Crime, UNODC, Regional Office for South Asia, based in Bangladesh, as National Program Officer, Human Trafficking and Migrant Smuggling. He has over 8 years of progressive working experience on the prevention and response to the human trafficking and the protection and promotion of the rights of the indigenous people's rights and the rights of the persons with disability. Prior to working with UNODC, he worked with the United Nations High Commissioner for Refugees with legal protection teams in Cox's Bazar, one of the biggest refugee camps in the world. He also worked with the BRAC, Relief International, Article 19, and the National Human Rights Commission, Bangladesh, in differently leadership positions. He holds a bachelor's and a master's degree in the law from University of Dhaka. We welcome you, sir, to this conference. Thank you so much, dear Vani. I'm audible? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. Let me first let me try to share the Can you see my screen? Please, would you kindly confirm? Yes, sir, we can see it. Thank you. I would like to thank Seva International for inviting me in this conference. I'm really delighted to join with you. And this is a very good afternoon from Dhaka, Bangladesh. And please take my salam, namaskar,
adab to everyone. In this 15 minutes discussion, I would like to highlight the one issue with particular importance, focus on the trafficking for the purpose of organ removal, and also I will touch the UNODC mandate and what we are responding this crime globally, and also in South Asia. So I'm not sure how many of you know about the UNODC. UNODC is a UN agency. The full form is United Nations Office on Drugs and Crime. We have our office based in Delhi, India, and from Delhi we are operating in 6 South Asian countries, including Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Maldives, and other countries. And UNODC is the mandated UN agency to provide support to the member states to respond the human trafficking. In UN system, we have the UN Protocol Against Trafficking in Person, and UNODC is the custodian of this international instrument. And it is to note that this instrument also highlight the trafficking for the purpose of organ removal as a definition of human trafficking. I will discuss further later on this. So first of all, let me share you some of the activities, initiatives we are taking from UNODC. Like, we have started the expert working groups on trafficking in persons for organ removal in 2011, and then we formed expert working group in 2013. In 2015, we developed a toolkit for the assessment of trafficking in persons for the organ removal. If you just search UNODC toolkit for the assessment of tip for organ removal, you will find this document. This is very helpful document to assess the country's situation. This is a tool you can utilize also in your work, especially this is interesting for the work of the law enforcement agencies, prosecutors, judges in their operation. In 2017, we had an initiative from the GLOW Act project. GLOW Act is a UNODC global project. Under this project, we are also working in Bangladesh as well. So we took a multidisciplinary consultation with the inclusion of the law enforcement, NGOs, medical professionals, investigators, and also the community related to the trafficking in persons. In 2017, we conducted a research on trafficking in persons for the organ removal and development of a protocol for interviews of potential victims, organ donors. This is also available online. So if you like to go through, you can go read it. You can find it in Google. In 2018, we prepared a film for the virtual reality evidence collection tool. And also we piloted with the law enforcement agencies in September 2018. And interestingly, in 2017, 2018, and 20, we were discussing with the high-level UN General Assembly discussion, and General Assembly prepared resolution, and we were tasked together with WHO and CHR to work together, and UNODC to strengthen data collection and technical assistance to the authorities. And in 2021,
we prepared a brief on the trafficking in persons for organ removal. This is also available online. So if you like to go through, you can just Google it. Let me just clarify what is ICAT here. You can see the ICAT. ICAT is a largest interagency platform which provides support to the member states from the trafficking perspective, and this platform prepared the knowledge products like a briefing on trafficking in persons for organ removal and other relevant briefs related to the response to the trafficking in persons. Now let me discuss some general trends regarding the trafficking for the organ removal. As you know that this is one of the enumerated forms of exploitation, but routinely ignored, especially in South Asian countries, including Bangladesh. What we observed, there is a lack of reliable data, but new data confirms that these incidents are increasing, and also it is evident that there is a huge demand of organ and there is a shortage of organs. So the networks, the trafficking networks is collecting, recruiting the victims, and then they trying to collect the organs with the exploitation in different forms. So organs include kidneys, liver, corneas, and other forms of reported less frequently. And the nature of the crime is stigmatizing, highly sensitive, highly, and the organized criminal groups are very organized and transnational in nature. And the business, the profit, this illegal business is highly profitable, and it includes very complex illicit financial flows. So there is a need for specialized technical skills, knowledge in evidence collection by the criminal justice practitioners. I referred the criminal justice practitioners, the police who investigate the crime, also the prosecutors, also the judges who prosecute in the court of law. And there is also a need for cooperation between medical professionals, police, NGOs, and prosecutors. This is the area, the trafficking in persons for the purpose of organ removal, uniquely, it should include the medical professionals in this regard. So regarding these, we need to create a lot of awareness. I would like to also share some of the trends and facts regarding the these issues. Like according to the UNODC Global Reports on Trafficking in Persons, shows that between 2010 to 2018, approximately 300 victims of trafficking in persons for the removal of organ removal were detected across multiple countries. And we also need to emphasize here that still this crime is underreported. So perhaps in real life, this is the number is big. The latest data available confirms that trafficking for the purpose of organ removal has been reported in North Africa, South and Southeast Asia, Central America, and Europe. So you can see this is common. This is a common phenomena in almost all corner of the world. And then organs reportedly removed from victims in trafficking in persons for the purpose of organ removal cases, as I mentioned earlier, kidneys, and less commonly parts of livers. In studies, it is evident that male victims are reported more frequently than women. Children may also be victimized by organ traffickers. It often also involves health sector professionals, as I mentioned earlier, including surgeons,
anesthesiast, nephrologist, nurse, ambulance drivers, and other medical specialists. It also includes the management of hospitals, transplant centers, laboratories, and other medical facility staff, and insurance companies as well. Here, I would like to share some of the comparison and fact. But before that, I would like to highlight here that there are some misconception about misconception or misunderstanding or lack of understanding. People may think that organ trafficking, the term, and the trafficking for the purpose of organ removal are the similar. Actually, these are the two distinct crimes. We need to differentiate in both crimes. In many countries, there are separate legislation on this, like in Bangladesh, the organ trafficking legislation is different. The trafficking for the purpose of organ removal is different. And if I compare the object of the crime for the trafficking in persons for the organ removal is the person, but if we mention the crime only the organ trafficking, the object of the crime is the organ only. So we need to be very focused on these. Trafficking for the purpose of organ removal focus is the exploitation, but in organ trafficking we may not see the exploitation. So this is another difference. I will not discuss everything because we don't have much time on these. Just one more difference is trafficking for the purpose of organ removal punishment is serious, rigorous. It includes also in some countries the death penalty, like in Bangladesh, the trafficking for the organ removal may include the highest capital punishment, the death penalty. But for the only organ trafficking, the sentence, the degree of punishment is less comparing to the trafficking for the purpose of organ removal. So maybe we need to discuss more on this. We need to clarify more on this. Otherwise, these two crimes may confuse. But the bottom line is, though these are the two distinct crimes, there is also complementarity. There is also a similarity in terms of facts and also in some motives. The challenges I would like to highlight here about this crime is this can be transnational in nature, and there are a lot of challenges regarding the assurance of the victim protection, also the witness protection. Nowadays, we can see this is happening through online. The traffickers recruit the victims online, and this is really very challenging to identify this crime which are happening through the online, what we call cyber-enabled trafficking. Here there is a role of medical professionals. So there are some cultural obstacles sometimes to take the initiative against the medical professionals if they found guilty. I mean, if we found the relevance of organ trafficking incidents with the medical professionals. And also, I would like to highlight another issues like there is a non-punishment principle in UN Protocol Against Trafficking in Person. In many countries, in many national laws of the countries, this principle has been also incorporated, but in reality, sometimes it becomes difficult to ensure the non-punishment for the victims. Sometimes victims
are identified as the trafficker. So we need to also focus in this area. We also need the international cooperation for the law enforcement agencies to collect the evidence in different transit and destination countries. Sometimes victims are taken to the another countries for the operation and remove the organ. So these are the challenges we can see. And since this is very emerging issues from the policy perspective, still there is a lot of discussion. There is need to do a lot of discussions and trainings and awareness building. This is an example of a real life case from a country, and the incidence is, you can see this is a clinic where they used to provide certificate, invitation to come here to do the heart disease. But when the law enforcement agencies and immigration officials observed that there is a common, flows on coming different countries, the patients, particularly to this clinic, then law enforcement agencies observed that this clinic is not actually specialized for the heart disease, but patients were coming here to take the treatment for the heart disease, and then they visited the clinic, and then they found that they were operating a very large international network to collect the organ, and they were bringing the victims here with false promise, and then the victims were exploited in many ways. So you can see this is a diagram how actually the organ trafficking network is operating to collect the organ and then to hand over it to the recipient. So to conclude, I would like to recommend that all the relevant stakeholders should come forward to ensure comprehensive anti-trafficking laws that prohibit all forms of trafficking in persons, including for the purpose of organ removal. I know that India is currently taking a bold initiative to prepare the legislation on this. So from your side, whoever today present in this conference, you are very important stakeholder to raise these issues so that these elements as a trafficking should be included in the national legislation. This is very important to criminalize these as a crime in national law. Secondly, I would like to say we need to provide for diseased organ donation to shift the burden from living donors to diseased donors, and develop transplantation systems to increase states' self-sufficiency. We need to adopt ethical and transparent resolutions governing organ donations both from living and diseased donors. We need to establish national transplant registries and ensure recording of all donations and transplantation. We also need to establish criteria for the authorization by official bodies of medical facilities to perform donations and transplantations. We need to undertake data collection to assess the extent and severity of the phenomenon of trafficking for the organ removal. We need to ensure that the trafficking for the purpose of organ removal is given appropriate attention within anti-trafficking programs and policies. We need to strengthen prevention and awareness efforts. So I would like to thank Seva International that they included these issues in this conference. So this is also a excellent initiative in this regard. We need to develop clear frameworks for healthcare and other professionals to report suspected or confirmed incidents of trafficking for the purpose of organ removal. We need to deliver specialized training to the law enforcement agencies. We need to promote cross-border cooperation for cases of trafficking for the organ removal. We need to ensure victims are provided with appropriate and urgent healthcare support
We need to ensure a human rights-based, victim-centered, and trauma-informed approach when dealing with victims in the context of criminal proceedings. We need to ensure that victims of trafficking for the purpose of organ removal are not punished for illegal conduct. We need to ensure that victims of trafficking are granted access to compensation and other remedies. And my last recommendation is to identify and prosecute all actors who knowingly engage in trafficking for the purpose of organ removal, regardless of their status and including legal persons. So I would like to stop here. Thanks a lot for your patience listening. Thanks a lot once again. I'm stopping here. Thank you. Thank you, sir. Thank you for enlightening us with your knowledge and your thoughts and bringing up such a critical issue on this platform. Thank you so much. I would now like to invite Shri Vijay Jadhav ji to address this conference. So. नमस्ते। एक बार जोर से मेरे साथ नमस्ते। आज का दिन, आज 5 मार्च है और ये 5 मार्च को ये जो राष्ट्रीय बाल हक संरक्षण आयोग है, नेशनल जो प्रोटेक्शन का ये जो आयोग है, कमीशन, इनकी स्थापना 2007 में हुई। तो आज इनके लिए भी हमें उसको याद करना पड़ेगा, बराबर है ना? यस। और 8 मार्च को फिर महिला दिन भी आ रहा है ना? तो ये दोनों चीज, जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, वो दोनों चीज के ये बहुत नजीक है और उसी के ऊपर हम लोग ये सब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर जो मुझे यहाँ बुलाने का और यहाँ मैं आपके साथ संवाद करने का मुझे जो मौका मिला है सेवा इंटरनेशनल की तरफ से, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग मुंबई में, आप सभी को पता है कि मुंबई की लाइफ कैसे है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ट्रैफिकिंग की अगर बात करते हैं तो आपको अंदाज आया होगा कि कितने बच्चे आते रहेंगे, कितनी लड़कियां आते रहेंगी, कितनी महिलाएं आते रहेंगी। हम लोग 2 दिन से सुन रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या है और कैसे कैसे होता है ट्रैफिकिंग के बारे में। मैं आपको बताऊं कि मैं 2004 में मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है समतोल। समतोल मीन्स बैलेंस। स यानी समता, म यानी ममता, इमोशनल सपोर्ट, तो यानी तोहफा, गिफ्ट, और ल यानी लक्ष्य, टारगेट, मीन्स बैलेंस। ऐसे समतोल का 10 सूत्री पर हमारा काम चलता है। जब मैंने 2004 में इस संस्था को इस तरह से देखा कि भाई जो बच्चे घर छोड़कर आ रहे अलग अलग कारण से, क्योंकि वो भी ट्रैफिकिंग का एक पार्ट है और आपको सभी को पता है कि बच्चे कितने आते रहेंगे, वो कारण अलग अलग होगा, रीजन अलग अलग होगा। लेकिन जब हमने देखा तो एक स्टेशन पर मुझे एक हफ्ते में, जो हमारा मुंबई का सबसे बड़ा स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वहां पर हमने जब सर्वे किया एक हफ्ते में हमें 700 बच्चे मिले, 700 एक स्टेशन पर। अगर हम मुंबई की बात करेंगे तो आप कितने बच्चे आते रहेंगे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कल बात किया कि भाई इतनी बड़ी संख्या है ट्रैफिकिंग की, तो हम खाली महाराष्ट्र के एक जिले की बात कर रहे हैं, खाली मुंबई की, और महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि मुंबई में आने वाली बच्चों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी बड़ी हो सकती है। तो ये सब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि बहुत समय बात करने का है नहीं अपने पास, तो बड़े बड़े पॉइंट्स बताऊंगा कि ये सब करते समय जो आपको सभी को पता है कि जिस तरह से हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं, सब गेस्ट लोग की सपोर्ट नहीं मिल रहा है और प्रैक्टिकल जो काम चल रहा है वो कितना अच्छा हो सकता है सिस्टम की तरफ से भी और एनजीओ की तरफ से भी, तभी ये इसका अवेयरनेस होगा। तो अभी तक हमने हमारे रिकॉर्ड में 40,000 से ज्यादा बच्चों को उनके फैमिली से जुड़ा है।
तो ये मेरा 17 साल का प्रवास है। 17 साल में हमने 40,000 से भी ज्यादा बच्चों को उनके घर तक छोड़ा है। तो ये सब करते समय हमें मुझे जो अनुभव आया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। घर छोड़ने का जो रीजन है बच्चों का, या फिर जो बच्चे ट्रैफिकिंग होते हैं, उसमें से हमें दिखाई दिया है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या है परिवार। उसमें परिवार बोलेगा तो फैमिली में दोनों भी फैमिली हो सकते। ऐसे आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अमीर घर का लड़का घर नहीं छोड़ता है, या फिर उसको समस्या ही नहीं है। ऐसे सोचने वाले सोचते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ जो बाहर से काम करते हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि खाली गरीबी ये एक ही कारण है कि बच्चों से घर से दूर होने का। लेकिन हमें, अगर हमारा आप डेटा देखोगे, तो मैंने 3 IAS ऑफिसर और 800 क्लास 1 ऑफिसर और कम से कम 1000 से भी ज्यादा पुलिस और बाकी इतने बिजनेसमैन और उनके घर के बच्चे जो हमारे स्टेशन पर मिले, जो एक समय पे भीख मांगते थे। अभी क्यों आए, क्यों नहीं आए, इसका कारण अलग है सब। अभी उसमें डीप में अगर जाएंगे तो सब, इतना समय नहीं है अपने पास। लेकिन इससे पता चलता है कि हर घर का बच्चा वो अलग अलग कारणों से अपना घर से दूर हो सकता है। वो वो हमने समझना चाहिए। अभी दूसरा जो बात है कि ये सब करते समय दूसरे उसका जो सिटी का अट्रैक्शन है, जैसे हमारे मुंबई में हॉलीवुड बॉलीवुड का अट्रैक्शन है। फिर वहाँ एजुकेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। एजुकेशन में यहाँ हम लोग सब सिक्योर बैठे हैं, लेकिन जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं वो 8वीं 9वीं क्लास तक, आप सभी को पता है कि फेल नहीं करते हैं और बच्चा पढ़ता ही रहता है। और बाद में 9वीं क्लास में जाएगा तो उसका खुद का नाम भी लिखने नहीं आता है। तो ये भी एक समस्या है। और अपना देश इतना बड़ा है कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग जात है, अलग अलग भाषा है। और ये सब भाषा में अगर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगा तो शायद उनको वो एजुकेशन नहीं चाहिए, ऐसा भी है। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं और अपने काम के लिए चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो वो भी हमें दिखाई दिया है। बहुत सारे बच्चों को आप स्लम में देखो या किधर बस्ते में देखो, ब्रिज के नीचे देखो, अलग अलग जगह पे जब बच्चे बाहर रहते हैं या फैमिली बाहर रहती है जो रहने वाली, अभी हम लोग दिल्ली में देख रहे हो गुब्बारा बेचने वाले बहुत सारे फैमिलीज घूमते हैं। तो ये सब एडिक्शन वाले लोग हैं और बाहर रहने के बाद उनको नशा की आदत लगती है और उससे भी बहुत ज्यादा बच्चे अपना घर से जाने के लिए इनकार करते हैं। और बाल विवाह का विषय तो भारती मैडम ने, कीर्ति मैडम ने तो बहुत अच्छी बताया कि ये भी एक समस्या है कि मुंबई में इसका डेटा कलेक्ट करना तो बहुत मुश्किल ही बात है। लेकिन इतनी स्लम्स एरिया है कि वहाँ हर जगह पे कम उम्र के बच्ची का शादी हुआ दिखाई देता है और काफी बड़ी संख्या है। तो ये सब है। और दूसरा, हम लोग बहुत ज्यादा मुंबई के बारे में जो बोलते हैं कि सिटी इसका फिल्म का, तो उसमें जो बाल कलाकार रहते, जो आर्टिस्ट रहते, जो सीरियल्स चलती है या लिटिल चाम्स वगैरह वगैरह ये सब चलते हैं, इसमें भी ट्रैफिकिंग का प्रमाण बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है कि कोई पिक्चर देख रहा है और उसमें छोटा बच्चा बात करता है, एक्टिंग करता है, लेकिन उनके ऊपर जो फिजिकली और मानसिक जितना भी प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। और उससे भी बहुत सारे बच्चे घर छोड़कर आते हैं, लाए जाते हैं, रखते हैं और 2-2 महीना शूटिंग चलती है, स्कूल नहीं जाते हैं, बहुत सारे विषय। मतलब ये सब को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वो करते समय जब हम लोग ने आमिर खान से बात किया, बाकी अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात किया, तो ये सब सिचुएशन है। इसके ऊपर भी कानून की कुछ ना कुछ चालू रहता है बातें करना, लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल होता नहीं है। इसीलिए ये सब बातें उतने टाइम के लिए बात होती है और चलती रहती है। अभी मैं ये सब करते समय अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं महाराष्ट्र में कमीशन में भी था, चाइल्ड राइट्स कमीशन भी था। तभी मुझे बहुत ऐसा अलग अनुभव आया कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि अभी बड़े ऑफिसर की बात मैं नहीं करता, लेकिन जो नीचे ऑफिसर रहते हैं उनकी मैं बात अगर कहूँ, तो मैं
एक बाल गृह में विजिट करने गया, वो अच्छा किस्सा है। वहाँ जाने के बाद वहाँ का जो क्लार्क था उसको मैंने बोला कि भाई मैं बाल हक का आयोग से आया हूँ और मुझे कुछ पूछना था। तो बोले साहब यहाँ हम बाकी सब आयोग को नहीं पहचानते, हम खाली 7वां वेतन आयोग को ही पहचानते हैं। तो ये सब जो बातें हैं, तो क्या है कि अवेयरनेस जितना होना चाहिए बच्चों के बारे में और सिस्टम के बारे में, तो वो नहीं है उतना। इसीलिए शायद पुलिस से भी हमको अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है और बाकी सब चीज़ों से जब भी जाए वहाँ पर भी हमको कि ये सकारात्मक दृष्टि से देखा नहीं जाता। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद फिर उसके ऊपर आते हैं। जैसे आप बोलेंगे, एक एग्जांपल दिया कि भाई आपके घर का लड़की रहेगी तो आप ऐसे ही बोलेंगे क्या? वैसे ही सेम कहानी है, क्योंकि पुलिस को भी वही बोलना पड़ता है कि भाई आप अगर आपके घर का बच्चा घर छोड़ता है तो क्या आप इसी तरह से आप ट्रीट करोगे क्या? तो ये सब करते समय, पुलिस का ट्रेनिंग लेते समय ये सब बातें सामने आ रही है और आती भी है। तो मैं थोड़ा-सा और दूसरी भी एक बात करूँगा जो मैंने अनुभव लिया है। जैसे गवर्नमेंट की जो सिस्टम है उसमें से अपने सभी को पता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 8 सिस्टम काम करते हैं बच्चों के लिए। फिर वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, चाइल्ड बोर्ड हो या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हो, डीजीपीओ हो, सब कुछ हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कॉलेज में बैठी हुए जितने भी स्टूडेंट है उनको भी पता नहीं रहेगा। वो बोलेंगे कि हम इंजीनियर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन अलग-अलग विषयों पे काम करते हैं। लेकिन घर तो सभी का है ना, परिवार तो सभी का है और हर परिवार में एक बच्चा है ना? तो ये बच्चों के साथ क्या-क्या सिस्टम है और किस तरह से वो काम करते हैं, ये अगर नहीं पता रहेगा तो फिर हम लोग को आज जैसे बैठे हैं वैसे और भी कॉन्फ्रेंस में जाएँगे और पूछेंगे कि भाई अपने डिस्ट्रिक्ट में कितने सिस्टम है? पता नहीं, वो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट एक होगा शायद, ऐसे होगा। लेकिन इतने सारे सिस्टम होने के बावजूद भी बच्चों को क्यों नहीं फिर न्याय मिलता है या फिर उनको हेल्प मिलती है? तो एक सोचने वाली बात है, रिसर्च वाली बात है और अपने सभी को पता भी है कि वहाँ जाने के बाद अपने को क्या-क्या दिक्कत का सामना पड़ता है। वैसे अगर मैं बोलूँ तो चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में सबको पता होगा शायद यहाँ बैठे हुए। पता है क्या सबको? 1098 के बारे में? पता है ना? तो ये 1098 की जो हेल्पलाइन है, उसमें भी उसके सिस्टम में अगर हम जाएँगे तो बहुत बड़ा आपको समझ में आएगा कि भाई हम तो फ़ोन तो किया, लेकिन वहाँ हेल्प करने वाला 2 घंटे के बाद आ गया। जब 2 घंटे के बाद आ गया, तो क्या वो जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वो 2 घंटा हमारे लिए वेट कर रहा है क्या? तो ये भी ऐसे बहुत सारे विषय हैं, जैसे 2013 में रेलवे पे ये हेल्पलाइन का बूथ का सिस्टम चालू हो गया, 2013 में। और 2013 के पहले से समतोल जैसी बहुत सारी संस्था भी रेलवे स्टेशन पर काम करती थी। लेकिन उनके बावजूद ऐसा आ गया कि भाई ये भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, बाकी एनजीओ कोई काम नहीं कर सकती, वो खाली चाइल्ड लाइन ही काम करेगी। तो इससे क्या हुआ? तो एक तो जो काम करने वाले लोग थे, वो बाहर चले गए या उनको बाहर निकाला गया और जो लोग काम कर रहे हैं, उसको ठीक से काम करने की पता नहीं है। तो ये बीच में जो गैप हो गया, उसमें बहुत सारे उसका जो नुकसान है, वो बहुत सारे बच्चों का ही है, क्योंकि बच्चों को ठीक तरह से हेल्प नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। वैसे अभी जो ट्रैफिकिंग का जो भी हम लोग बातें करते हैं या जो रीज़न है, उसमें आधार कार्ड एक बहुत बड़ा विषय है। आधार कार्ड में बहुत सारे हम लोग हर जगह पे आधार कार्ड बोल तो रहे हैं, लेकिन डुप्लीकेट आधार कार्ड भी बहुत सारे हैं। और ये बहुत सारे डुप्लीकेट आधार कार्ड होने के कारण ये बच्चों का एज जैसे दिखते है कि आप बोले कि लड़की की उम्र कितनी है, उसके पता ही नहीं है तो फिर गड़बड़ होगा, क्योंकि उसके बॉडी से पता नहीं चलता इसकी उम्र कितनी है। तो वैसे आधार कार्ड का जो विषय है, वो लड़का 15 साल का दिख रहा है लेकिन आधार कार्ड में 20 साल लिखा है। और इससे वो जो हमारी गवर्नमेंट सिस्टम है उसको दिखाएगा तो बोलते हैं आधार कार्ड में तो 20 है और आप बोलते हैं कि ये बच्चा है, कैसे हो सकता है? तो ये सब विषय पे बहुत बहस होती है, बहुत मतलब
बहुत चर्चा होती है और फिर सिस्टम सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसे ये सब विषय है, क्योंकि मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, जब ऊपर ऊपर की बात करूंगा, क्योंकि यही पॉइंट पे सब कुछ ट्रैफिकिंग का विषय चलता रहता है। दूसरा विषय है कि हमारा मोबाइल्स है। अभी वैसे देखने जाएगा तो मैं महाराष्ट्र के 10 जंक्शन पे काम करता हूँ और हर महीना मेरे पास कम से कम 200 बच्चे आते हैं डेली, हर महीना, पर मंथ। अभी ये पर मंथ में हमने जो भी बच्चा है उसका हमारा विषय ये है कि उसका घर ढूंढे, और मेरे को अभी तक मेरी उम्र में एक भी बच्चे का घर नहीं मिला, ऐसा हुआ नहीं है। एक भी बच्चे का घर नहीं मिला। मैं तो बहुत बार चैलेंज दिया हूँ, आज भी देता हूँ कि जिनको बच्चे का घर नहीं मिलता है कि उसको हमारे पास उसका लिस्ट बनाओ, हम ढूंढेंगे। तो बाकी जो एनजीओ में बच्चे रहते हैं उनका घर क्यों नहीं मिलता है, एक बड़ा सवाल है ना। तो ये ऐसे से क्या है कि समतोल में ऑर्फन नाम का विषय ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये बोलने में बहुत आसान है, और जब काम करते हैं हम लोग तभी समझ में आता है कि भाई ये सब विषय पे कौन कौन रोकता है। अभी उसका नाम नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चलते रहता है। जो लोग बच्चों के साथ काम करते हैं उनको पता है कि कौन रोकता है कौन नहीं रोकता है। तो ये सब करते समय हमारे पास अगर बच्चे दिखाई नहीं देंगे तो हमें फंड्स कैसा मिलेगा, और बाकी सब बातें होती रहती है। लेकिन ये सब करते समय अपने को काम करते समय ये सब विषयों पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मोबाइल्स और ये आधार कार्ड वाला विषय भी बहुत ये ट्रैफिकिंग के बारे में बहुत मुख्य विषय हो सकते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पास अभी ये जो बच्चों के बहुत सारे कानून हैं, जैसे जुवेनाइल एक्ट है, और फिर चाइल्ड मैरिज का है, पोस्को एक्ट है, आरटीई है, या चाइल्ड लेबर का है। इतने सारे विषयों का जितने भी डिपार्टमेंट है उनके साथ क्या कोऑर्डिनेशन है, अगर हम बात करें कभी भी, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन का विषय कभी होता ही नहीं है। जब चाइल्ड लेबर की बात करेंगे तो अभी तक भी चल रहा है कि 14 साल के अंदर का, और जुवेनाइल एक्ट बोलता है 18 साल के अंदर, 18 साल तक होना चाहिए। तो इसमें भी और भी जो नहीं चल रहा है, कोऑर्डिनेशन का जो बैलेंस नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चों को जो भी तकलीफ है वो सहन करना पड़ रहा है अभी। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबको अगर रोकना है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इतने अनुभव से कि रेलवे स्टेशन पर ही एक ओपन शेल्टर होना चाहिए, कि जैसे आने वाली संख्या जो है रेलवे से, जैसे अभी ठीक है चाइल्ड लाइन का बूथ खड़ा हो गया है, कुछ बच्चों को मदद मिल रहा है, बाकी एनजीओ को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई सभी के साथ मिलके काम करो। तो ऐसे अगर ओपन शेल्टर रेलवे के अंदर ही होता है तो शायद बच्चा सिटी में जाएगा ही नहीं, और वहां के वहां ही उसका सोल्यूशन निकाल के वो वापस रिहेबिलिट हो सकता है। उसमें सीडब्ल्यूसी का पार्ट भी बड़ा है। बच्चा 24 घंटे के अंदर, कानून बोलता है कि उनके सामने खड़ा करो, लेकिन 24 घंटा वो सीडब्ल्यूसी थोड़ी बैठती है, वो भी एक बात है। लेकिन कानून में है करके फिर फोन फान करके, हाँ ठीक है बच्चा मिल गया तो हाँ मिल गया, हाँ रख दो। कहाँ रख दो, बाल गृह के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और बच्चा बाल गृह को जेल समझता है, वो वहां जाना नहीं चाहता। और दूसरा एनजीओ में रखा तो सीडब्ल्यूसी वाले बोलते हैं कि आपको परमिशन नहीं है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चों को तकलीफ का सामना सहन करना पड़ता है। ये सब चीजों को हमने बहुत सारा विषय को काम करते समय, अभी यहाँ बताना ठीक नहीं है क्योंकि समतोल 12 विषयों पे काम करते हैं अलग अलग, जिसमें सेवा इंटरनेशनल का बहुत बड़ा हाथ है। और हम लोग अन्नदान भी करते हैं। जो स्लम एरिया है उसमें 2 ऑटो रिक्शा हमको सेवा इंटरनेशनल की तरफ से मिली है, और इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा अंदर तक बहुत सारे बच्चों को खाना भी दे सकते हैं। तो ऐसी जो सुविधा है वो अलग अलग चीजों से अगर मिल जाती है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अभी हम लोग महाराष्ट्र में तमाशा करके एक कल्चर है, जैसे नाटक बोलते हैं, नौटंकी बोलते हैं यहाँ, वैसा महाराष्ट्र में तमाशा करके एक है। अभी कोविड के समय पे उनको एक भी कार्यक्रम नहीं मिला तो उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी। तो ऐसे बच्चों के साथ भी समतोल एक हॉस्टल खुलना चाहती है,
और वहाँ वो एक अभी उसका एक प्रोविजन चल रहा है, उसमें भी हम लोग सहयोग की मांग कर रहे हैं सभी के साथ, तो वो भी होगा। क्योंकि कल्चर सभी जगह का, वो राजस्थान का हो, दिल्ली का हो और किधर का भी हो, कल्चर कल्चर होता है। अगर वो टिकेगा तो समाज टिकेगा, और वो कल्चर के साथ साथ उसको अपना जो आधुनिक युग है उसको जोड़ देना पड़ेगी, लेकिन वो कल्चर भी टिकना चाहिए, अपनी संस्कृति भी टिकना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे पास चिट्ठी आई है, 15 मिनट ही है मेरे पास, तो ये सब चीजों को, अभी चाइल्ड मैरिज के बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैडम ने तो बहुत सारी बात की है। फिर भी वहाँ जो अपना 2013 का जो जीआर आया है, उसमें गांव के समय पे जो ग्राम सेवक रहता है, ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक रहता है, वो उसका प्रतिबंध अधिकारी रहता है। लेकिन इसका अवेयरनेस नहीं होने के कारण कौन जाता है उसके पास और कौन बोलेगा उसके पास। इसीलिए बहुत सारे मैरिज, आप जैसे बोले कि आज एक जगह पे है, फिर जगह बदली किया और मैरिज हो गया, फिर ये सब चालू रहता है। तो बहुत चीज ऐसी है कि उसको हम लोग अवेयरनेस की ही जरूरत है ज्यादा करके, और उसके ऊपर हम लोग ने ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। शायद ये 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें उभर के आएंगी, क्योंकि ये जो अंजलि मैडम आप सुबह बात किया परिवार से, ऐसे जो किन्नर लोग हैं, वो समतोल ने इनको काम दिया स्टेशन पे, क्योंकि वो ट्रेन में बजाते हैं, ताली वाली बजा के पैसा जमा करता है। तो हम लोग ने 2 किन्नरों को रखा था। तो जितने MSW वाला और बाकी प्रैक्टिकल वाला काम नहीं करता, उतना उन्होंने काम किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लेके आए और बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए, तो हमने उनको एक सम्मान दिया और बहुत बहुत दिन उन्होंने काम किया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि 40,000 फैमिली मेरे साथ जुड़ी है। कहाँ पर भी जाए, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ऐसे कॉन्फ्रेंस में जाते समय, ज्योति मैडम भी यहाँ मौजूद है, हम लोग को होटल में व्यवस्था मत करो यार, हम लोग कोई कार्यकर्ता के घर में जाएंगे, कोई पालक के घर पे जाएंगे, मस्त खाएंगे पिएंगे, क्योंकि उतना सम्मान होटल में भी नहीं मिलेगा। इतने बच्चों को घर छोड़े कि जहाँ जाए वहां फोन करे तो लोग लेने आते, और वो भूलते भी नहीं। आज अभी हमारा बहुत सारे बच्चे इतने आगे गए हैं कि एक IT में हमारा बच्चा अभी सर्विस कर रहा है बेंगलोर में। उन्होंने 25,000 का डोनेशन का चेक हमको भेजा, जो एक समय पे हमारे पास था। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, मैं एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया हो खाली। तो ऐसे बातें करते समय तो बहुत सारी बातें हैं, हम बीच में भी बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है हम लोग हमेशा हमारे कार्यकर्ताओं को बोलते हैं, क्योंकि स्टेशन पे 2 ही टाइप के बच्चे, एक फ्रेश बच्चा, एक नया बच्चा, एक पुराना बच्चा। तो पुराने बच्चे तो काफी पैसे कमाते हैं ऐसे ही, वो कोई बैंक में जाके भरते नहीं है। तो सॉल्यूशन, ये बीड़ी सिगरेट गांजा गुटखा ये तो होगा ही। तो ये सब चीजों को हम लोग को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा लोग अवेयरनेस इस चाइल्ड राइट्स के बारे में करने पड़ेंगे। सिस्टम को ट्रेनिंग की जरूरत है। बहुत सारी बातें अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दिल्ली में भी वो बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं, उसमें भी 15-16 साल के बच्चे रिक्शा चलाते हैं। और क्या बोलते हैं वो, पानी है, बिजली है फ्री है, दारू है फ्री है, सब कुछ है। तो ऐसे सब करेंगे तो फिर हमारा आगे का लाइफ और बच्चों का लाइफ क्या होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं जो देखा वो बोल रहा हूँ, हम किसी को टोक नहीं रहे, लेकिन इससे हमारे बच्चों का लाइफ क्या होगा, क्योंकि हर घर का बच्चा है। और हम लोग अगर बोलते हैं कि बच्चे ही देश के भविष्य है, तो शायद इस भविष्य को हमको अच्छे से रखना पड़ेगा, तभी देश का प्रगति होगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sharing your valuable thoughts and knowledge with us. We are very thankful to Samathul Foundation for all the great work and noble work which your organization is doing. Thank you so much. I would now like to invite Shri Saurav Shahji to address this conference. Thank you. And can we go full screen? Yeah. For the presentation.
So I'll just start by thanking the entire organizing team, including Hansraj College, Seva, ICSSR, and all the various social organizations that have joined hands to bring together this event, Chetna. And I was very happy to look at the range of topics that have been chosen for the thematic session. In question, it is existing in obscurity, organ trafficking, child marriage, but the overall selection of topics, they are very relevant and they touch our lives at various points. So my own experience as a public policy practitioner in a sense, and then as a law enforcement officer and being on the side of the institutions looking at organ trafficking, child marriage, and various associated topics have been varied. I mean, mainly for a decade, I've worked in a district policing organizations in Bihar. And then in the last couple of years, I've worked in some diverse sectors, including my current portfolio is in power sector, where we look after power sector reforms, access of electricity, slightly different. But before coming here, I was looking after two volunteer organizations. One is the Nehru Yuva Kendra Sangathan, which mainly works for rural volunteers. And the other is National Service Scheme, which is something a lot of people here might be familiar with because they work through institutions, schools, colleges. And so, I mean, these have been topics that we have been dealing as issues in the districts. And then again, from an organizational perspective, when I came in the National Service Scheme and Nehru Yuva Kendra Sangathan, I stayed in these organizations roughly overlapping this period of COVID. So COVID, in effect, as we all know, accentuated a lot of these differences, the issues of access. So a lot of problems that already existed were magnified, were amplified by the advent of COVID. Not just, I mean, on a macro level, if you look at the entire digital divide or the poverty issue, I mean, the wealth divide, everything just widened during COVID. And similarly, I mean, a lot of these things, which otherwise would have been which anyways were adverse, became further adverse due to COVID. For instance, if you only come to organ, the entire issue of supply and demand, a lot of essential surgeries that would have happened never happened. So suddenly a lot of organs which otherwise would have worked with some medication, with some health, I mean, some kind of health support or something, are no longer working. So there is a greater demand for organs now. So I mean, this demand for organs is ultimately driving the supply of organs or the procurement of organs and the entire illegal organ trafficking trade. And the other thing is society as a whole. I mean, especially in India, there is no culture of organ donation, post-death organ donation, or pledging your organs. So this is something we encourage in National Service Scheme also. And for all the youth awards and all, this was a lot of young volunteers who were our award winners or who were graded for these awards. They were essentially individuals who were into blood donation to begin with. I mean, we saw blood donation and tree plantation as some of the beginner volunteer activities, and organ donation was one of the major pledges that we expected volunteers. I mean, of course, this can't be forced, this can't be, I mean, thrust upon a society, but this is something that as be it any kind of organization, social, governmental, we have to encourage, we have to ensure that this catches on. And because I mean, we can't deny the need for organs. There is an obvious need. There is an obvious case that organs will be needed. I mean, for certain surgeries, for certain replacements, and human life is valuable. So preserve that value, we'll need organs, but there should be a rightful channel. There should be this societal trend towards donating organs, which will help bridge this gap. Can we go to the next slide, please? I think you can use the arrow, yeah. So not very well. So these are just some of the points. I mean, where organ trafficking stands within the overall paradigm, within the overall universe of trafficking. So trafficking itself, I need not tell anyone here, it's a much broader issue. Organ trafficking in particular, for which we'll talk, is a subset of the overall trafficking. But many of the issues that afflict trafficking also affect organ trafficking or create the situation for organ trafficking. A lot of causal factors are similar, as the distinguished speaker before me was speaking about broken family structures, poverty. I mean, these multidimensional disadvantages are what drives trafficking in any sense, and organ trafficking in particular also. So
Kidneys, of course, I mean, as like we all know, I mean, these are statistical data that just the previous slide. One slide before, can we go? The back arrow. Kidneys are the major organ that is, that is used for transplants, that a lot of unscrupulous medical practitioners, as the speaker from Bangladesh was alluring to, do that. And there is a legal framework for this kind of organ trafficking, or the punishment range. But often, because of the nature, and as the thematic topic rightly mentions, that these exist in obscurity. So that obscurity also provides a cover for this kind of action, and the prosecution and conviction is very difficult, even if there is a case. And because the victims, they don't stay in one place, the victims are widespread. So and these are mainly, these are people in transport, these are people in transition. So if somebody in transition is trafficked into organ trafficking and is actually, becomes a victim of organ trafficking, very difficult to get the evidence. It's very difficult to piece together that evidence, have the victim present in the court. So often, these are people who are already tormented. A lot of them are already at the margins of society, at the fringes of society. So it's very difficult to bring them back, get this evidence in the court, and ensure some kind of conviction. And unfortunately, even if they are caught, they go to jail for a few days. The sentences will be lengthy, but for that we need prosecution, conviction, which happens but rarely. Next. This again is something we already talked about, the statistics, how, what could be the possible numbers. And these are, limited databases. To be frank, there are no government organizations do it, social organizations do it all the time, but there are no definitive studies as to what is the actual quantum of organ trafficking, because of, again, it being undercover, it being repressed. There is no reporting, and often, there is a lot of shame and guilt, undue shame and guilt, stigma associated with victim of this kind of crime, like many of crimes of this nature. So the volume of crime is probably unknown. When it comes to police action in these things, there is also a thing that degradation of quality of human life is often not treated as equal to termination of human life or attack on human life. So the physical violence part, which is the very obvious part of any kind of crime in a district, I've served enough in a district police to know that if there is a murder, if there is a dacoity, if there is a loot, so these kinds of bodily or property offenses are reported more widely by the media. These create a greater fear in society, because these are essentially crimes against, not always, but against the middle class, against the slightly better to do people. Of course, property offenses always, but even in bodily offenses, the more highlighted cases are the cases which involve people who are above a certain economic strata of the society. While when we come to social crimes such as trafficking, organ trafficking, so they affect the people who are on the margins of society, who do not constitute a market, who do not constitute a voice. So this somehow, this certainly gets built up in the nature of action, nature of containing these kinds of crime also. So when it comes to a dacoity, a murder, there's a lot of public spotlight and the police gets working. But when it comes to missing children, of course, the documentation is different. And then there are jurisdictional issues. So a crime happens in multiple jurisdictions. The child is transported from one district, transits through various other, and reaches somewhere else. So again, when it comes to railway crimes, this has always been the grouse, because there are multiple structures. There is a central government RPF, there is a state government GRP, and there are jurisdictional issues, and where the crime has happened is never ascertained. So because of the nature of these crimes, them being continuing and transiting through days and jurisdictions. So the crime, the FIR of a crime is a very interesting thing. It begins with a date and a place. So if there is a fixed date, there is a fixed place, there is a greater chance of that FIR going to conviction. So it never happens. Can I take 5 minutes? So, and again, for the protection of children, there are two kinds of streams. One is juvenile in conflict with law. The other is children in care of, who need care of law. Often, when you go to child houses, both these streams mix together, which again, is a deterrent for missing children being brought to these places. So we'll move to the next slide. So COVID, we have already talked about how COVID has actually accentuated these crimes. You can go.
We can go to the next one. So this is a survey carried in 2016 to 18. We can go to the next slide. Just a data point for the kind of, I mean, what constitutes the victim of crime and what is the, so we can say, I mean, we can easily say it's more females are victim of this crime, trafficking in general. Of course, when it comes to organ trafficking, the data might be different, and young girls in particular, but of course, I mean, young boys are also there. So this affects just everyone. And as the distinguished speaker before me spoke about, it affects all stratas of society also. But of course, more predominantly, it will affect somebody with lesser economic opportunities. Next. What will cause these crimes? I mean, of course, some part of it, economic need, less understanding. There are people who take advantage of mental or physical disability or poor learning abilities. So these are the causal agents. These are the precursors that prepares, I mean, that that make a victim at the end of the day. Next. Trafficking can be of many ways. There are individual traffickers, which can be which can start from a village level medical practitioner to an organized group, which can exist in many districts. So there are international chains, also syndicates that operate cross border, which make the crime even more difficult to detect and to ultimately prosecute. So I mean, this is something I mean, which is not just, I mean, we need a national consensus, a global consensus on many of these things. There are UN dictums also. I mean, there are UN conventions, there are UN laws also. But of course, I mean, the kind of support it requires from governments across the world will only increase, especially after COVID. I think there is a need for rethink, and this discussion is a right juncture that there should be greater focus on these issues going forward from now. Can we go to the next one? So I'll just come to child marriage. I'll briefly touch the topic of child marriage. We already know the law, the legal structure for child marriage. And child marriage, if you see, is not just an episode. It's the beginning. It's a beginning of a long chain of disadvantages. I mean, it sets the stage for many disadvantages. The learning opportunities that would otherwise come to a child, be it a girl or boy, more particularly the girl, because of course, I mean, young boys will also be affected, but they'll still have some opportunities. But for a young girl, it'll entail the end of childhood. It'll take away the playtime. It'll, I mean, suddenly push a young girl of 10, 12, 13 into adulthood, for which she is not prepared, not in many ways, not socially, not mentally, not biologically, but everything that comes with a adult will be attached to her, despite her not having the devices to handle it, her not having the resources to handle it. So, I mean, the kind of impact that it has is long lasting. It probably alters the entire life cycle of the young girl. We see some stories in media of young girls who had child marriages yet succeeded in life. But I mean, that is the 0.01% that we are looking at, because the kind of disadvantage it creates is unmatched to any of the other, I mean, other similar crimes, if we say. Yet, I mean, we don't see it as a legal offense. I mean, it's mostly seen as a social anomaly rather than the kind of weight of legal offense that should have come with it. Another surprising trend that I have been noting is that as society progresses in a certain way, education goes up, especially women's education goes up. So there is a sharp decline in many things. For instance, TFR goes down, which is happening now. Thankfully, the total fertility rate, I mean, in the latest NFMS survey, it has been going down. But that break is not visible yet with child marriages. In the last 15 years, the decline in child marriage is hardly 10 to 15%. So, I mean, just 15 BPS decline in, this is a very worrying trend, because all the other associated parameters are working now. So if women study more, they'll marry late, they'll have lesser children. So the other things are matching up. But when it comes to child marriage, the same is not happening. Can we go to the next slide? So yeah, just the data here that only 14, I mean, we are just 14th or 14th highest rate of child marriage. But I mean, we'll also have to look at who the other 13 are. These are not countries which are democracies of long standing, which have a, these are often countries which have been disturbed by civil wars. I mean, the need for child soldiers, a lot of them are sub-Saharan African countries, and conscription, early conscription. So you need child brides. So we can't really, I mean, compare. We are not comparable to any of these countries. So
even at the earliest, we should have been 50th or 60th, if not later than that. And being 14th here is another, the other problem is, I mean, we are a very big country. So 14th as a percentage is as a rate is very high, because the quantum that we'll be providing, the number of child brides, number of child grooms we are creating, probably, I mean, we might be almost 30-40% of the entire global burden on this kind. So and again, I mean, something I already talked about, that the decline is not visible. The decline that should have come with increasing education, access to health, reproductive health, and other things that is happening. This decline in child marriage is not happening. So this is something the law enforcement agencies, the governance framework of the country can look into. But most importantly, social organizations, I mean, we need to have, I mean, maybe tougher laws alone will not be an answer. A lot of it also will come from what the social organizations do, what our media does. I mean, I've actually, I don't watch a lot of television, but I've seen one or two retrograde Hindi cinema, I mean, these serials also where they were as a child. I mean, so you can't have that in this day and age. And even if it's representing a different time, I mean, there should be some kind of, I mean, censorship in general should not be there, but I mean, this is something that needs to be looked into. It has to be berated in public, and we have to, I mean, act together as a society, as a country on this count. So thank you, everyone. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable presence and very beautifully putting up the real picture of child marriage and organ trafficking. Now, I'm very sure that all of you must have certain questions for our panelists, but since we are running a little late of the schedule, so I kindly request all of you to please connect with the speakers at the time of lunch. Now, I would like to request Shri Kumar Saurabh Ji, Director, Seva International, to present formal vote of thanks. Thank you so much, ma'am. Yesterday, we learned a lot about human trafficking, and we felt we learned a lot. And today's session has given and shown us the mirror that we don't know much or anything at all about human trafficking. From the simple ideas of child marriages to ideas of sex trafficking, to organ trafficking, to data, to facts, to figures, to personal experiences, to stories, we saw it all in the last 2 hours. I wish to thank Dr. Rama, Principal Hansraj College, for helping us and being the key pillar behind this conference, as well as Dr. Prabhanshu Ojha, the convener of the conference, who has been working on the back end to ensure everything in the conference goes well. Thank you, both of you, for helping us organize this conference. I would like to thank Anjali Rimiji, your own journey, your own experiences, the courage and determination you showed in your work is inspirational for all of us. Thank you, ma'am, for joining us. I'd also thank Saurav Shahji. The details that we could see in just last 10 minutes of the presentation helped us summarize and look at what aspects may go beyond the entire idea of human trafficking. Thank you, sir, for your address. I would also like to thank Mehdi Hassan ji. Often think that these things still stay in obscurity. And Mehdi Hassan ji showed that what is the global paradigm of human trafficking, how do globally people see human trafficking, especially in Southeast Asia, how people see and value human trafficking, showing us the data and facts behind the entire scenario. Thank you, Mehdi Hassan ji, for joining us in the conference. I would also thank Kriti ji. Kriti ji, you showed us the reality of child marriages. Me as an individual as well, I was not aware that it still is so rampant in India. Thank you as an individual, and thank you as part of the conference to show us the light and show us the way. And last, thank you, Vijayji. Groundwork is often undervalued in conferences which go academic. I'm glad that we are able to bring in and hear voices like yours on the ground and see work that is happening on the ground. Kudos to you for that, and thank you so much, sir, for joining us. The perseverance and empathy that you have shown as a way to counter child trafficking is the way to go, and we hope that the students, scholars, and professors in this conference will learn from it. I would also extend my gratitudes to all panelists for taking out time off their busy schedules. I would thank the team of Seva International, including Shyamji, Nishanji, ICCSSR, and the entire team of volunteers for helping us in smooth running of the entire conference so far. And I would also like to thank all the delegates who sat through very
patiently, very cautiously looking at the screen, looking at the panelists, taking down notes, and hoping that we learn from the conference and take away these learnings to define a better future for India and the world. The next to this is the lunch. We have a short time for lunch, which is around 25 minutes. The lunch is outside. Your volunteers will guide you. Anyone with a yellow a marker on the neck is someone who can assist you with. Please take the assistance of volunteers, take a quick lunch. We meet back in the same hall at 2 o'clock. Thank you.
Everyone has hopes, dreams, and wishes for a better world. But at Seva, every day is about recognizing the power of these simple aspirations and working towards fulfilling them. Run by the local people for the betterment of their fellow neighbors, Seva International touches the lives of millions every day. They also encourage people to work in a unified manner, using naturally available resources and in keeping with the traditions and practices of these local communities. Seva has provided several platforms to enable people to volunteer wherever they are and in whichever way possible through various initiatives spearheaded by the organization. The work is endless and the opportunities to serve galore. Stretching over the ever-changing vast landscapes of both India and the world, Seva International has reached out to underprivileged and disaster-affected communities in varying capacities. Firm believers in the tradition of Seva hi Parmo Dharma, the organization strives to serve humanity by promoting volunteer and civic engagement around the world.
ठीक है। हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है लंच के बाद। मैं वरुण जी से और ज्योति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पर आ जाएं प्लीज। आज के हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स। सेवा इंटरनेशनल, हंसराज कॉलेज और ICSSR के कोलैबोरेशन में आयोजित ये 2 दिन की जो अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, आज उसके तीसरे सेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलग अलग मुद्दों पर पूरे विश्व भर के अलग अलग स्पीकर्स जुड़े और ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, किस रूप में है, उसके अलग अलग क्या क्या आयाम हैं, उस पर हमने बहुत एक अच्छा ज्वलंत मंथन किया, विचार किया हमने। और उम्मीद करते हैं कि जो ये सेशन है, कोविड-19 के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। हमारे जीवन जीने का तरीका बदला है, सोचने का भी तरीका बदला है, लेकिन ये तरीके बदलने में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी निश्चित रूप से तरीका बदला है। वो जो अंदाज है उसमें किस तरीके का बदलाव आया है, क्या क्या प्रभाव पड़ा है, उसके ही तमाम पक्षों पर हम लोग बातचीत करेंगे। मैं अपने सभी अतिथियों का सबसे पहले स्वागत करता हूं। ऑनलाइन भी हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं, मिस्टर मैट फ्रेडमैन जी, उनका भी स्वागत है। और स्टेज पर वरुण जी हमारे साथ आ चुके हैं और ज्योति जी, एक बार क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करें। मैं शुभम जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आए और पॉट देकर के उनका स्वागत करें, वरुण जी का। शुभम जी और वाणी जी तुलसी का पौधा भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। आपका स्वागत हंसराज कॉलेज में। सुनीता जी भी हमारे बीच आ गई हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टेज पर आएं। सुनीता जी ऑनलाइन है, ऑनलाइन जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। ज्योति जी का भी स्वागत है, क्लैपिंग के साथ हम सब स्वागत करेंगे। तो अपनी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। कल से जो ये चिंता हम सबकी शुरू हुई एक बहुत ही जरूरी विषय पर, सबसे पहले तो हम सब सेवा इंटरनेशनल को बधाई देते हैं उसके 25 वर्षों की बहुत समृद्ध यात्रा के लिए। हम सब एक जोरदार तालियां बजाकर सेवा इंटरनेशनल को कांग्रेचुलेट करते हैं कि जरूरी विषयों पर, अभी श्याम सर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि यूक्रेन में भी सेवा इंटरनेशनल के वॉलंटियर्स लोगों की मदद के लिए लगे हुए हैं। यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सभी यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी संस्थाएं, इस तरह के NGO जिन्होंने समाज को बचाया हुआ है, अगर हम कहें, जिन्होंने इन जरूरी विषयों पर बातचीत करके, ग्राउंड रियलिटीज पर चिंता करके, तो मैं इस यात्रा के लिए आपको बधाई देता हूं। और हंसराज कॉलेज के सभी टीचर्स, सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी वॉलंटियर, सबका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना सेशन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आफ्टर कोविड-19, प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशंस, इसमें हमारे ऑनलाइन 2 स्पीकर हमारे ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और ज्योति जी और वरुण जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए अब मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे पहले स्पीकर मैट फ्रेडमैन जी, आप CEO मेकॉन्ग क्लब, मैं उनके बारे में, उनको इनवाइट करने से पहले मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। मैट फ्रेडमैन इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सपर्ट with more than 30-year experience. He is CEO of the Mekong Club, an organization of Hong Kong's leading business, which have joined forces to help in all forms of modern slavery. Mr. Fredman previously worked for USAID and the United Nations in over 30 countries. Mr. Fredman offers technical advice to numerous governments, banks, and corporations working to eliminate all forms of modern slavery, and is the author of 12 books. In 2017, Mr. Fredman won Asia's prestigious Communicator of the Year Gold Award. We welcome you, sir, in the conference and invite you. Mr. Matt Fredman, स्वागत है आपका। Hello, everybody. Can you hear me okay? Can you hear me? Yes, yes,
We are hearing you, sir. Oh, okay, very good. And can you see my slides? Yes, yes, sir. Okay, very good. So let me get started. So my name is Matt Friedman. I'm somebody who's lived in Asia for about 30 years, 8 years in Nepal, 5 years in Bangladesh, 10 years in Thailand, and another 10 years here in Hong Kong. I just like to talk a little bit about COVID and the impact on modern slavery as it relates to the business world. And so to begin with, I just want to kind of help people to remember how many people are associated with modern slavery. It's estimated that there are 40 million people around the world. In fact, there are more slaves today than any other time in history, with many of them, 62% of them in Asia. And the reason for this is there's a lot of people in Asia. You know, India has 1.38 billion. You have 1.4 billion in China. You have many other countries that have large populations. And secondly, the feudal systems that have allowed this to kind of grow and expand have never been completely dismantled. And as a result of that, we have a lot of people in modern slavery. But when it comes to the number of people who are actually helped each year, it's very low. Out of 40 million people last year, 108,000 were helped. That little red line represents the people who were helped. The remaining blue represents the people who weren't helped. And when we look at the number of criminals, around 500,000 of them, only around 9,000 of them were put in jail over the last couple of years. When it comes to the pandemic, a lot of people don't realize that there are 3 elements of the pandemic. The first one is the health issue. This is where the virus gets into the human body. People get sick, people get ill, some people die. That particular focus is what we see right now, with many people still looking at COVID, still looking at it from the perspective of what is it going to do to me? What is it going to do to my family? But after that, we're going to be seeing kind of a change in our economies because things slowed down, because workers weren't able to do things, because the global economy isn't what it was before. Eventually, we will begin to see changes. And lastly, we will see changes in supply chains. Food that was supposed to be planted that wasn't, food that was supposed to be picked that wasn't, transportation of that food changes, and as a result of that, it's going to have an impact on us. So we as human beings have to recognize that these trends exist in the locations that we're at. To put this into perspective from the standpoint of what impact it will have on the world related to poverty, the World Bank estimates that 500 million more people will be pushed back to poverty. And this could continue for a number of years after that. Now, remember, it took us about 25 years to get these people out of poverty. And now as a result of this disease that's been around for about 2 years, 500 million are being pushed back again. Now, I work for an organization that works with the private sector, works with the banks, works with the manufacturers, works with the retailers, the hospitality sector, to help businesses, the private businesses, to understand what is human trafficking, how does it relate to them, and what they as organizations can do to prevent this from hurting their business. And so we work with these big businesses. But what we're seeing now with COVID is that a lot of people who had jobs, let's say they were working in a garment factory, were told that the garment factory job is no longer there. The orders aren't coming in from the West. Factories are shutting down, and then people are being sent home. So perhaps that person was the breadwinner, and perhaps they were supporting 5, 6, 8 people in their household. All of a sudden they're sent home, and then they're quarantined at the same time. So if you're talking about families that live paycheck to paycheck, and all of a sudden the money doesn't come in, what do they need to do? They need to borrow money, because that's the only way they're going to be able to survive. By borrowing money, they set themselves in a situation where if they can't pay the money back, the expectation is that, well, a family member is going to have to come with me to go off to a brothel or go off to a factory to work to pay back the person who lent the money. So we anticipate that human trafficking will increase. In fact, the statistics that we have seen is that it could go from 40 million people at present to as high as 60 million people. And the reason for that is the indebtedness, the vulnerability, the fact that people have lost jobs, the fact that people have gone back into poverty situations. And we're seeing this all over the world.
It's not just in less developed countries, we're seeing it in developed countries as well. Here in Hong Kong, as a result of COVID, we're seeing that many businesses are having difficulties, many of them are closing down, and that's having a devastating impact. What we're also seeing around the world is that in factories, sometimes workers who used to have freedom of movement are no longer allowed to do that. They are kept in the factory. They are told that they can't leave, and if they do leave, they can't come back. So this possibility of workers being in a situation where they lose their freedom is very much a part of where we are now with the COVID situation. Another thing that we're seeing is that as kind of the orders start coming back into, let's say, the footwear and apparel industry, we are seeing that certain workers are coming back. They are then, because the orders are big, forced to have overtime. Perhaps the overtime is forces them to work 14, 15, 16 hours a day. Some of these people don't get paid anything extra in this particular situation. And in fact, in Bangladesh, we heard of situations where workers would go to a factory and say, we don't have anything. I will work for free if you give me food and a place to stay, and I'll work the 16 hours. The point I'm making is that the policies and procedures and the systems that we had in place to protect workers in a lot of locations have broken down during this period of COVID. And as a result of that situation, we see a lot of vulnerability. We see workers who are desperate. We see workers who are really trying to find a way of having money come in because they have no source of that money to pay for their daily activities or the debt that they have incurred. Now, my organization, the Mekong Club, works across Asia. We work in India, Bangladesh, we work in Southeast Asia, all over Asia. And as I say, we work with the banks, we work with the manufacturers, we work with the retailers, we work with the hospitality sector. So we're working with brands. These are the companies that you see that are all over the world promoting their products. And what we really try to do is to help to raise their awareness of how to treat workers well, how to make sure that workers have an experience where they're not being exploited, where they're being treated well, where basically they are given what they need to be given in order to live a satisfying life. And that includes also focusing on a living wage. So what we're seeing as part of COVID is it's not business as usual. The companies can't come in and do audits. They often don't have people who can fly in to see what's happening on the ground in the factories. So what we do with these big global brands is we help them to understand that if you have businesses in South Asia, you can't cut off your ties. You have to maintain a relationship with them. You've worked with them for years. You have a responsibility to be there for these people who are in need at this particular time. And so we try to make the business case, establish and maintain those relationships. With the big brands, when their orders have begun to reduce, we say we need you to have some type of a plan so that the factories that are working in the locations that you are working with understand that you will eventually come back and that you will eventually be giving these orders. And perhaps during this time, you have something in place to help those workers along. So you need a short-term plan, a medium plan, and a long-term plan to be able to address this. We try to get the companies that manufacture garments, for example, to come together so that they can talk with each other. They can exchange information and they can help as a community to ensure that the factories that exist across Asia, Southeast Asia, both South Asia and Southeast Asia, have what they need in order to ensure that they are able to survive during this very difficult period. So what we do is kind of get that community to recognize that they're not doing this alone, that they're doing it with other organizations, and that makes a big difference. We try to get the brands to understand that if workers are sent home and they have nothing, you should try to give them something, some type of support, even if it's half pay or a quarter pay, to allow them to survive during this difficult period. And so we make the business case that you have invested in these people in the past and you should continue investing in them now. What we try to do is to get the brands to contact the factories, to call them up, to find out what their issues are, to find out what they're doing with the workers, to help them
to ensure that they have this communication back and forth. Because without these calls, there's a lot of insecurity. And the factories don't know what's happening. They don't know what is going to be occurring in the future. And it's really important for them to have some assurances that the business world, the massive global business world, cares enough to be having these conversations. And so it's also important when you have these phone calls to find out whether or not there is indebtedness, to find out how much that debt is, to figure out some kind of a plan to ensure that that debt can eventually be paid, to ensure that workers have freedom of movement, that they can leave, and that excessive overtime isn't built into what's happening. And lastly, it's extremely important to just ensure that the global business world knows that they have to do the right thing. We in the world are all in this together. We have to address this together. And as a result of that, we should be working together. With that, thank you very much. I'm done with my presentation. थैंक यू सो मच मैट फ्रेडमैन जी। आपने उन ग्राउंड रियलिटीज की ओर इशारा किया कि कोविड-19 के बाद कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ गई है। लोन लेने के बाद कैसे जो वर्कर्स हैं वो अपने कंपनी की उस जाल में फंसते जा रहे हैं जिससे वो कभी निकल नहीं सकते। फोर्स ट्रैफिकिंग के बारे में आपने बताया और आपका ऑर्गेनाइजेशन निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आपके इस स्पीच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जो अगले स्पीकर हैं मिस्टर वरुण पाठक जी, उनका मैं स्वागत करता हूं, उनको बुलाऊं। इससे पहले मैं कुछ बातें उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। वरुण पाठक जी अभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दिल्ली के चेयरपर्सन हैं। वरुण पाठक जी एडवोकेट हैं, लगभग 15 वर्षों का उनका एक लंबा अनुभव है, खास करके चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, इंक्लूडिंग रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग victims. He has been engaged with the Ministry of Women and Child Development as consultant and was impaneled with the National Commission for Protection of Child Rights to conduct visits for identification of juveniles in adult prisons in Delhi. आपका बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी। निश्चित रूप से बहुत गंभीर मुद्दा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इसके अलग अलग पक्षों पर आप बात रखेंगे और कोविड-19 के बाद क्या चाइल्ड ट्रैफिकिंग के स्टाइल में भी, उसके ऑपरेशंस में भी कुछ बदलाव आया है। हम उम्मीद करते हैं इन पक्षों पर भी एक वकील के नाते और उस क्षेत्र में कार्य करने के नाते भी आप उसको रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ओझा जी, थैंक यू सो मच। इतने काइंड शब्दों के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरे सभी साथियों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल और सलाम। आप सब लोग इतने गंभीर मुद्दे के साथ यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं और साथ में इतना बड़ा ग्रुप मुझे स्टूडेंट्स का एक साथ दिख रहा है जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पहले स्पीकर्स एनएसएस के बारे में अपडेट कर चुके हैं। जो भी मेरे साथी अगर जुड़े हुए हैं एनएसएस के साथ तो अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है। मैं भी एक एनएसएस के साथ जुड़ा रहा और उसके बाद सोशल वर्क को समझा, लोगों के इश्यूज और लाइफ को समझा और उसके बाद लगा कि इसी सेक्टर, इसी फील्ड में आगे बढ़ा जाए और कुछ सोसाइटी और समाज के लिए किया जाए जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको लेकर। हंसराज कॉलेज ने जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है तो उनका धन्यवाद, ICSSR का बहुत बहुत धन्यवाद और सेवा इंटरनेशनल जिनका नाम ही सेवा है और सिर्फ दिल्ली नहीं दुनिया के हर दुर्गम परिस्थिति और उसमें वो काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं हर कमजोर वर्ग के साथ। तो उनको मेरा थैंक यू और सलाम, जिस तरह से सब लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। ओझा सर ने कहा कि कोविड को लेकर जो आज मुझे इशू दिया गया है कि कोविड के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सब में क्या बदलाव आए हैं, क्या हुआ है। हम अगर सीधे सीधे देखें तो कोविड के बाद हम दुनिया को ना दो पार्ट में देख पा रहे हैं कि दो तरह से पूरी दुनिया को अगर हम देखें, एक कोविड से पहले और एक कोविड के बाद जो त्रासदी, जो चीजें पूरे दुनिया में जिसने बदलाव लेकर आया, बहुत सारी चीजें हुई जो खराब हुई, सब लोगों को पता है, उन पे चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मगर बहुत सारी चीजें हमने सीखी।
आज हाइब्रिड मोड में जब हम लोग सब यहाँ पर एक साथ हैं, हमारे बहुत सारे साथी मेरे पहले से हांगकांग से, मेरी दोस्त सुनीता भी आने वाली है नेपाल से, और किस तरह से हम पूरी दुनिया को कनेक्ट कर पाए एक ही हॉल से, तो वो कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं हमारे साथ। और संस्थाओं ने, सिविल सोसाइटीज ने जिस तरह से आगे बढ़कर इनिशिएटिव लिया है वो सच में काबिले तारीफ है। अब बात करता हूं मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उनके रिहेबिलिटेशन वाले इश्यूज को लेकर। अगर सच में मैं कहूं तो वास्तव में रिहेबिलिटेशन वाले पार्ट पर अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। जिस तरह से हम लोग आगे तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मगर हमारे जो विक्टिम हैं उनकी लाइफ के लिए वो जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कभी भी एक ऐसे कंडीशन में है, कभी भी शोषण और ट्रैफिकिंग की तरफ वो जा सकता है, उनके लिए, उनको फिर रिहैब करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है। कुछ गिने चुने ही हमारे पास स्कीम या प्रोविजन है, क्योंकि रिहैब करना आसान नहीं है। मतलब संस्थाओं के लिए, सब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। सरकार को इनिशिएटिव लेना होगा और उनको गवर्नमेंट स्कीम के साथ जोड़ना होगा, वो हम सब लोगों को समझना होगा, तो वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में मुझे लगता है कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर है, बॉन्डेड लेबर है, सेक्स ट्रैफिकिंग में जो कमर्शियल सेक्स में महिलाओं या बच्चियों का यूज किया जा रहा है, इवन थर्ड जेंडर का भी आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोगों ने बात की। तो ये ट्रैफिकिंग तो है, मगर ट्रैफिकिंग का मोड भी आप सब लोगों को पता होगा। मेरे भाई और साथी विजय यादव जी ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से एक बड़ा नंबर है जो ट्रैफिक हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रैफिकिंग, अगर आईपीसी 370 को हम देखें तो ट्रैफिकिंग में ट्रांसपोर्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक जगह से दूसरी जगह उनको कहीं लेकर जाया जा रहा है फॉल्स कमेंट्स या प्रॉमिस के साथ। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है हमारी कंट्री में, अगर मैं देखूं पूरे भारत के तंत्र में और साउथ एशिया के ज्यादातर कंट्रीज के लोग यहाँ पर हैं, तो रेलवे और ट्रेन एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके थ्रू हो रहा है। अगर पूरे देश में देखूं तो लगभग 80% के आसपास ट्रैफिकिंग बाय ट्रेन हो रही है। दिल्ली की मैं बात करूं, स्पेशली दिल्ली टू हावड़ा रूट की, जहां पर मैं पिछले 15-17 सालों से देख रहा हूं, चीजों को एनालाइज कर रहा हूं, समझ पा रहा हूं, तो 90% तक ट्रैफिकिंग बाय रेलवे हो रही है। आप एज ए चेयरपर्सन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या एज ए सोशल वर्कर या एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैं देखूं उन सभी आंकड़ों को, तो दिल्ली से हावड़ा वाले रूट पर, खासतौर से दिल्ली में उनके आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां से सबसे ज्यादा बच्चे रनअवे हैं, मिसिंग हैं, बच्चे, महिलाएं या ट्रैफिक्ड हुए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, उसको भी हम सब लोगों को समझना जरूरी है, और मैं चाहूंगा कि उस पर हम पहले चर्चा कर लें। इस इशू को लेकर लगातार हम रेलवे के साथ बातचीत करते रहे, और रेलवे मंत्रालय और भारत सरकार ने, बहुत कमर्शियल है, सब लोगों को पता है। आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है तो जो कभी 2 रुपए का टिकट 50 रुपीज तक भी गया, कुछ कम भी हुआ, वो लगातार चीजें हैं, तो वो कमर्शियल है कि आपको आना है तो आपको एक टिकट लेना है तब आप आ पाएंगे। मगर बहुत सारे बच्चे आज भी, महिलाएं, बिना टिकट के 2-2 दिन का ट्रेवल करके और अदर स्टेट से दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। मुंबई छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पहुंच रहे हैं, जो सर ने बताया 700 बच्चे अगर या लोग एक वीक में पहुंच रहे हैं, तो 100 के आसपास आ रहे हैं। 2007 में दिल्ली में, मैम ये अनजस्टिस होगा अगर आप सिर्फ 5 मिनट्स ही रहेंगे तो, या प्लीज। ओके, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। दिल्ली में 2007 में एक स्टडी कराई कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर, उसमें देखा 7 डेज की स्टडी थी, 8 AM to 8 PM, और 35 बच्चे उसमें नए अनअटेंडेड विदाउट टिकट जो आ रहे थे, जिनके साथ कोई नहीं था, पर डे आ रहे थे। 272 ट्रेन सिर्फ दिल्ली में उस वक्त आती थी। अब नंबर बढ़ा है, कोविड के बाद काफी परिस्थितियां चेंज हुई हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है। और देखिए तो एंट्री गेट, खासतौर से नॉर्थ इंडिया और दिल्ली में हम देखें तो 4 से 5 हमारे मेजर रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, शाहदरा, निजामुद्दीन, ये हमारे बड़े एंट्री पॉइंट हैं। तो उस पर भी अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए, जैसे इस गाइडलाइन में भी हमने एज ए मेंबर ऑफ दिस SOP कमेटी, हमने वहां भी सजेशन दिया कि जब भी अनअटेंडेड बच्चा आ रहा है या एक ही एज ग्रुप के बच्चे किसी व्यक्ति के साथ हैं, तो वहां पर उनकी आइडेंटिटी जो है उसको चेक किया जाए। उसके बाद अभी दिसंबर में फिर रेलवे ने और WCD के साथ मिलकर इस SOP को रिवाइज किया। उसके बाद भी कुछ गैप हमें नजर आए।
अब हमने उसमें मिलकर जैसे एज ए CWC चेयरपर्सन, जो यादव जी ने बताया कि सिर्फ चाइल्ड लाइन ही वहां मुंबई स्टेशन पर काम करती है, मगर दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में चाइल्ड लाइन के बूथ के साथ साथ अदर संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। साथी है, सलाम बालक ट्रस्ट है, प्रयास की चाइल्ड लाइन है स्टेशन पर, अलग अलग स्टेशन को उस तरह से डिवाइड किया है, तो वो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर हमने कुछ नंबर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, तो हमने देखा एक बड़ा और कुछ ट्रेन को हमने आइडेंटिफाई किया, पर्टिकुलर किस ट्रेन से कहाँ किस सिचुएशन में वो आ रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग लगातार हमारा कम्युनिकेशन, मतलब इवन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हर ऑर्डर में जिसमें हमको दिख रहा है कि बच्चा अनअटेंडेड है, हम उसको मेंशन कर रहे हैं पर्टिकुलर किस ट्रेन से आया है, अगर बच्चा उसका नाम बता पाता है, और टिकट लिया नहीं लिया, वो एडल्ट सपोर्ट के साथ था या नहीं था, उन सब इश्यूज को हमने साथ में रेज किया। अगेन फिर DRM, ADRM, GRP और RPF, अलग अलग तरह की फोर्सेस होती हैं, आप सब लोगों को शायद आइडिया होगा रेलवे स्टेशन पर। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPSF एक स्पेशल फोर्स होती है, सिर्फ ट्रेन को मूव करने के लिए उनकी 2 आवर्स की सिर्फ ड्यूटी होती है। RPF जो है वो रेलवे प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए रेलवे एक्ट के अंदर काम करती है, और GRP जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं उनको देखने के लिए स्टेट पुलिस वहां पर फंक्शनिंग होती है। तो उन सबके साथ लगातार हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। कुछ हमने एक्शन टेकन और कुछ स्टेटस उनसे मांगा, जिसमें उन्होंने काफी चीजें काफी इंप्रूव की हैं। मंथली लेवल पर मीटिंग, स्टेशन डायरेक्टर जो एक IRS ऑफिसर होते हैं स्टेशन नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली पर स्पेशली, उनको नोडल ऑफिसर बनाया, और बहुत सारे कम्युनिकेशन जो मंथली, वीकली और क्वार्टरली लेवल पर किए गए हैं, और स्टाफ को सेंसिटाइजेशन और काफी सारी चीजें कोशिश की जा रही है। मगर ये सिर्फ एक स्टेशन से काम नहीं होगा। जिस केसेस में हमने मेंशन किया, उन्होंने उस कनेक्टिव स्टेशन जहां से आसाम या बंगाल से भी प्रोसेस शुरू हुआ है बच्चे या बच्ची का, उनको भी उन्होंने काफी अवेयर किया है, प्रोसेस लगातार किया जा रहा है। मगर उसके बाद भी मुझे लगता है कि जैसे कुछ और इनिशिएटिव लिए गए कि RPF और GRP में कुछ स्टाफ को अपॉइंट किया है एज ए नोडल ऑफिसर, जो चिल्ड्रन और वुमेन इन इशू को लुक आफ्टर करेंगे और इमीडिएटली उसमें आगे एक्शन लेंगे। अगर इसके अलावा कुछ और चीजें रेलवे में, ये सब तो है ही, इसके अलावा अगर हम देखें कि चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर और जो कमर्शियल सेक्स में जो ट्रैफिकिंग हो रही है GB रोड उन सब में, जब हमने रेस्क्यू किया देखा, तो सच में रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट बहुत पीछे है। बाहर निकलने के बाद उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो वापस अपनी लाइफ में जाएं नहीं जाएं, फैमिली से क्या कहें क्या ना कहें। जो उनके साथी, दोस्त या रिलेटिव ने धोखे से उनको वहां पर भेजा है बहुत सारे केसेस में, वापस किस उससे वहां पर वो जाएंगे, जिनके बहुत सारे लोगों के लिए वो जिंदा ही नहीं है, मर चुकी हैं। और एक रेस्पेक्ट वाली लाइफ की जरूरत है, जो सच में बहुत मुझे भी एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहते में दुख है कि हम उस लेवल पर चीजें नहीं कर पाए हैं। एक रेस्पेक्ट वाली लाइफ, या उनको नर्सिंग ट्रेनिंग हो या कुछ इस तरह के काम में जहां एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, मगर रेस्पेक्ट के साथ वो काम कर सके, उसकी हमको जरूरत है। चाइल्ड लेबर जो एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट करने के बाद और 50,000 रुपीज का कुछ रिहेबिलिटेशन के लिए अमाउंट किया गया है, जो एम्प्लॉयर से जो हजारडस कंडीशन में बच्चे हैं रिकवर किया जाएगा। मगर बहुत सारी कंडीशन में वो सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटेशन एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो अभी उन्होंने 2000 में स्कीम आई, 2016 में उसको रिवाइज किया, और अभी 7 फरवरी 22 लास्ट मंथ ही उन्होंने 2022 में उसको फिर रिवाइज किया है। सिर्फ यही एक ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर हम रिहेबिलिटेशन की कोई बात कर सकते हैं या उनको कुछ हम सपोर्ट दे सकते हैं। वहां पर अगर बॉन्डेड लेबर विक्टिम है तो उसके लिए इमीडिएटली इंटरिम रिलीफ जो पहले 5,000 हुआ करता था, अब इस मंथ इंक्रीज करके उसको 30,000 कर दिया गया है, जो जहां भी रिलीज होगा वहां के कंसर्न SDM या DM उसको रिलीज सर्टिफिकेट के साथ 30,000 रुपीज का इमीडिएट रिलीफ देंगे। सेकंड, फिर वो नेटिव स्टेट में अगर कोई एडल्ट पर्सन है तो उसको 1 लाख रुपीज का कंपल्सेशन होगा। माइनर है या विमेन है 2 लाख रुपीज का कंपल्सेशन उनके स्टेट के DM को उनको देना है। और अगर साथ में अगर वो कमर्शियल सेक्स वर्क से, ब्रॉथल से, मसाज पार्सल से, प्लेसमेंट एजेंसी से जो जॉब के लिए लेकर आते हैं, अगर वहां से उसको रेस्क्यू किया गया है तो 3 लाख रुपीज का, या स्पेशल डिसेबल पर्सन है उनके लिए 3 लाख रुपीज का कंपल्सेशन है। तो एक यही दिखाई देता है, और इंक्लूडिंग इसमें भी एक वजह है कि यही स्कीम क्यों इतनी स्ट्रांग है, उसका ये रीजन है कि इसको जो मॉनिटर करने के लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसको देखता है, हर स्टेट से 6 मंथ पर इसकी रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट ली जाती है, और हर केस को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने लेवल पर लुक आफ्टर करते हैं। उसमें गैप भी हो सकते हैं, मगर स्ट्रक्चर जो बनाया गया है बहुत मजबूत स्ट्रक्चर बनाया गया है। और साथ में गवर्नमेंट की जो भी वेलफेयर स्कीम होंगी, मतलब
पीएम आवास हो, इंदिरा आवास हो, लोही आवास हो, कोई भी हो, या किसी भी स्कीम के अंदर वो विडो हो या उनके सोलर लाइट या कुछ और उनको मिलना हो, किसी भी स्कीम में वहां के डीएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले इस फैमिली को प्रायोरिटी दी जाए, उनको लिंक किया जाए इसके साथ। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट ये है। आई होप के समय मुझे 2 बार स्लिप मिल चुकी है और मैं चाहूंगा कि ओपन सेशन डेफिनेटली हो। आपकी जो क्वेरी है, आपके जो सवाल है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसमें कर सकें। एज ए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इंपॉर्टेंट होता है कि विद इन 24 आवर्स किसी भी केस के विक्टिम को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने एज ए बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट प्रोड्यूस करना होता है। अगर नहीं प्रोड्यूस किया जाता है तो कंपल्सेशन है, सेक्शन पनिशेबल ऑफेंस है सेक्शन 34 के अंदर 6 मंथ और 10,000 रुपए का है। और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे, मैं मानता हूं कि नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं। तो आप सब लोग हैं, 1098 इमरजेंसी हेल्पलाइन है, पुलिस का नंबर है 112 है, या अदर कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन में कहीं कोई दिखता है तो आप इमीडिएटली इसको सिस्टम के अंदर लेके आइए। एज ए यूथ एम्बेसडर आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि हर बच्चा सेफ हो, हर महिला सेफ हो। कहीं भी आपको अब्यूज दिखाई दे तो आप अपनी वॉइस को जरूर रेज करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। हम आपको और सुनना चाहते थे लेकिन समय की अपनी मर्यादाएं हैं, और आपको सुनकर के मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा कि कोविड-19 के बाद भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अनवरत रूप से चल रही है, भले ही वो उसके माध्यम बदले हों। मुझे मेरे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की वो कविता याद आती है कि बदले हैं महज काफिर, बस बदले हैं महज कातिल, और उनके मुखौटे वो कत्ल के अंदाज, वो खंजर नहीं बदले। तो कत्ल का अंदाज भी वही है और खंजर भी वही है, और उसके पीछे चल रही है सपनों की सौदागरी। अच्छे अच्छे सपने आपको दिखाए जाएंगे। मनुष्य का स्वभाव है कि वो महत्वाकांक्षी होता है, वो चाहे किसी जंगल में रह रहा हो या महल में रह रहा हो, और फिर उनके सपनों को बेच दिया जाता है। बहुत ठीक कहा आपने कि वो लौट करके अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं वापस जाना चाहता है, और अगर वो चला भी जाता है तो पुरुष हो या महिला, ऐसा नहीं है सर कि महिलाओं के साथ ही, पुरुषों को भी उस समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो बहुत ही ज्वलंत आपका वक्तव्य रहा, बहुत विचारोत्तेजक वक्तव्य रहा, आपका आभार। अब हमारे साथ जो अगली अतिथि हैं जिनको सुनने का हमें सौभाग्य मिलेगा, श्रीमती ज्योति पठानिया जी हैं। आप फाउंडर डायरेक्टर हैं चैतन्य महिला मंडल के। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ बातें आपके बारे में बताना चाहूंगा। ज्योति पठानिया is the founder director Chaitanya Mahila Mandal, an organization which aims of collective activity for the benefit of society. Jyoti ji completed her BSc in agriculture to then pursue her Bachelor of Law. She has experience in supporting women and children through economic independence and education. She is recipient of Dr. Bhim Rao Gasti Prabodhan Puraskar by the Savitri Bai Phule Mahila Ekta Samaj Mandal in 2022. बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका। Namaste. Firstly, I would like to thank the organizers of this program. It has been very well conceived and organized, and I wish I could have been here yesterday also. I'm sorry for not being able to be here, but I will definitely look at the recordings to make some more notings. मैं आज भी सुबह से जब से बैठी हूँ हर एक स्पीकर की बात सुन के 1994 से काम कर रही हूँ, पर अब भी रोज कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, और रोज ऐसे लगता है कि इसमें और भी कुछ है जो मैं जान सकती हूँ और मेरे काम में उसका उपयोग करके ले सकती हूँ। चैतन्य महिला मंडल नाम की संस्था हमने पुणे पिंपरी चिंचवड़ में स्टार्ट की थी इन 1994। मैं तभी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट थी, और शाम को बच्चियां मेरे घर पे आती थी यही देखने के लिए कि ये मैडम कैसे कंपनी चलाती है और क्या क्या करती है, और मेरे पास से कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तभी समझ में आया कि देयर इज समथिंग दैट आई कैन गिव टू अदर्स, और स्लोली सामाजिक इसकी तरफ ध्यान गया। धीरे धीरे मैं ज्यादा करके इसी काम में जुड़ गई और फिर संस्था की स्थापना की। पहले महिलाओं का काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट किया,
उसमें से पता चला कि उनको शेल्टर की जरूरत है जब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में होती है, क्योंकि कहाँ जाए और कहाँ कैसे जिए, अपनी जिंदगी को कैसे दोबारा स्टार्ट किया जाए समझ नहीं पाती है. सो देयर हैज टू बी अ शॉर्ट गैप. इस करके वो स्टार्ट किया. वो करते करते सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, इसलिए विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वी वर सपोज टू गिव एडमिशन टू फर्स्ट. कहाँ मिलेंगे करके हम पूना के रेड लाइट एरिया में गए, क्योंकि रोज पेपर में पढ़ते थे कि पुलिस ने रेस्क्यू किया है इतनी महिलाओं को. रेस्क्यू किया इतना ही आता था, पर उनका आगे क्या हुआ उसके बारे में कोई नहीं लिखता था. दैट वाज नो न्यूज एंड स्टिल इजंट टुडे आल्सो. When we went there, we realized that children in the red light area automatically become second generation victims of trafficking. क्योंकि वहां पे जो भी चलता है, कितना भी कोई कुछ भी करे, कोई देखता नहीं है. पुलिस भी आती है तो शोषण करने के लिए. So we decided to start the first night crash in the red light area to prevent second generation trafficking of children. शाम को 6 से सुबह 9 बजे तक हमारी क्रेश चलती है. छोटे छोटे बच्चे आते हैं वहां पे. धीरे धीरे जैसे वो गूंगी करने वाली दवाई जो घर मालकिन डालती है उनके मुंह में ताकि वो माँ को तकलीफ ना दे, वो बंद हो गई कि बच्चों की अपनी होशियारी नजर आने लगती है और माँ को भी लगता है कि मेरा बच्चा भी नॉर्मल है. और फिर वो कहती है कि मेरे बच्चे को इस दलदल से निकालो, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई. आई एम अ विक्टिम. Totally. She does not believe, she does not understand that also. And that is the major issue, कि most victims do not realize that they are victims. Firstly. क्योंकि कई बार घर के ही लोग रहते हैं जो उनको कभी धंधे पे बिठाते हैं. घर के ही लोग रहते हैं उनको बेचने वाले, सपने दिखाने वाले. कभी कभी पति ही रहता है जो घर में शायद दूसरी बीवी के साथ में आराम से ऐशो आराम से जीता है, पर इसको शादी करके उधर धंधे पे लगा देता है और वो वहां से डोर से उसकी जिंदगी चलाता रहता है. सो ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स यू गेट टू सी इन दिस वर्ल्ड when you start working socially. But in brief, I am going to first point out to what each person has said today, what I have taken away from their points. I think the first was Dr. Kriti Bharti, who mentioned that threat to victims and informers is very potent. Now already the speaker before me has told you a little bit about government schemes. आप सबको पता है, पेपर में भी आता है. सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है जो गवर्नमेंट आजकल कोविड ऑर्फन्स के लिए कर रही है. सो मॉनिटरिंग इज देयर, इम्प्लीमेंटेशन इज देयर. बट मेजर इश्यूज दैट वी फेस इन दिस इज first, like she said, threat to victims or informers. So I think one thing we need to be very clear about is that victims need protection. If there is something that we can do about that, because no matter how much you file cases, you help to protect, victim को समझ में ना आए, आज उसे लगे. अब जैसे चाइल्ड मैरिज की बात ले लो आप, तो बच्ची एक दिन के लिए बोलेगी कि हाँ भाई मेरी मैरिज अनल करनी है, पर अगर कल को कोई बोलेगा कि आपके माँ बाप को जेल में डाला जाएगा, शी इज गोइंग टू मूव 4 feet बिहाइंड. वो जरूर नहीं चाहेगी कि मेरे माँ बाप इसकी वजह से जाए जेल में. Most of the time the traffickers are very well known to the victims, और इसके लिए उनकी सहानुभूति वो बहुत जल्दी कैप्चर कर सकते हैं. And it is very easy for them to turn turtle. इसके लिए आज मैंने कुछ कहा, मैंने मान लो FIR दर्ज करवा ली उनको मदद करके, पर 2 दिन के बाद में उनकी बात पलट सकती है, बदल सकती है. They are not at fault for that. उनकी कोई गलती नहीं है उसमें. इसके लिए victims protection and विक्टिम्स का जो थ्रेट होता है, इसकी वजह से 164 सेक्शन के अंडर आपने एक बार उनका बयान ले लिया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने, then that should hold forth in the court of law right till the end of the trial. The major problems that we have in convictions that everybody keeps saying is that prosecution of victims is very low. Prosecution level अपनी बहुत low है कंट्री में. उसकी वजह यही है बेसिकली कि there is no following up, और जुडिशरी बहुत देर लगाती है हर एक केस में. आप देखो आज फाइल की तो अगले 5 साल 6 साल, तब तक तो विक्टिम भी शायद आगे निकल चुकी है जिंदगी में, वो सब भूल चुकी है. आप फिर उसको बोलोगे कि आ जाओ कोर्ट में खड़े हो जाओ और ये बोलो वो, she has gone beyond that, she doesn't want to. So
I don't think we can change the judiciary in this country. We don't have any right to talk about them. But that is a major point where we have problems. Implementation. कानून कायदे है, जितने हैं वो भी काफी है, पर उनका implementation करवाना is very 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 important. जैसे अभी अपने सामने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य चेयरपर्सन ही बैठे हैं दिल्ली के. हमने बहुत बार ऐसे अनुभव किया है कि जब कोई जाता है उनके सामने बच्चों को लेकर के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू सर, हाँ, प्लीज नो पर्सनल डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, पर आप कौन लगे उनके, आपका क्या संबंध, यू नो. एंड फिर आप कितनी भी बार समझाने की कोशिश करो कि बच्चे के साथ में ये हुआ है, बट इट डिपेंड्स अपॉन देयर माइंडसेट एंड व्हाट दे फील शुड बी डन फॉर द चाइल्ड. और फिर बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूट में डाल देंगे इफ दे फील पेरेंट्स आर नॉट फिट इनफ, कि आप ठीक नहीं हो, कि और जो भी रीजन है, बच्चे को इधर उधर से उठा करके चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में डाल दिया जहां पे बंदिश किया जाता है, बंद कर दिया. विजय जाधव जी ने सुबह उनके भाषण में भी वही कहा. एंड द चाइल्ड फील्स दैट उनको जैसे कैद में डाला है. ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ देयर, ही डजंट वांट टू बी देयर, उसकी जीवन उसमें नहीं है. Child welfare committee has no other option. I can understand their point also. But are we thinking about the best interest of the child? What is its best interest? उसके बारे में सोच करके हम निर्णय लेने की क्षमता हमें रखनी चाहिए और करके लेना चाहिए. I think Anjali Rimi in her talk said that LGBT community के लिए how can you start? The first point is that you can begins with the language or the manner of you talking, right? So I think there we can take away that we need to be treating each and every victim as a human being. हमारे बराबरी के. जब हम रेड लाइट एरिया में काम करते हैं तब अनेक बार लोग देखते हैं और बोलते हैं बाप रे आप उधर जाते हो, आपकी इतनी हिम्मत होती है. महिलाएं ये तो है, अपने जैसे घरों में से ही तो आई है, अपने देश के किसी ना किसी कोने कोपरे से किसी ने फंसाया, किसी ने ये किया, उनको उधर लेके आया, बिठा दिया, बाहर नहीं जाने देते हैं, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, उनको धंधे पे लगाया ही जाता है. उतने में एक आध बच्चा हो जाए, फिर बच्चे के लिए जीने लगते हैं, घर वाले भी नहीं पहचानते हैं, कुछ नहीं, नो वे गोइंग बैक. कितनी बार हमने देखा है रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस रेस्क्यू कर देते हैं और फिर माँ बाप को बुला देते हैं और माँ बाप बोलते अभी अब हमारी कोई जरूरत नहीं, अभी ये बच्ची का हम क्या करेंगे. क्या करे वो बच्ची अचानक, है ना. सो द फर्स्ट थिंग when we treat them with disrespect or when we look down upon victims of trafficking, the first thing that we are doing is we are standing with the trafficker. ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है. तो इसके लिए the first thing when you meet a victim of any kind of trafficking or any kind of problem, I would say, first thing is treat him with respect. बेचारी, बहुत जल्दी हमारे मुंह में शब्द आता है. They don't want to be called बेचारीज. Please give them due respect. हम आपको मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं, और कोई नहीं है तो आज के बाद में तो मत कहिएगा कि कोई नहीं है, हम है ना. Each one of us can do that. Can we not? Right? And I was told that I am supposed to be telling you about ways and means in which we can help, ways and means in which we can help victims to come out of this. I think each one of us sitting in this room, I'm very happy to be here to have such a young audience in front of me. Each one of us can become a first responder. जगह जगह पे जिंदगी में हमें ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं. आंखें खुली रखी तो कहीं ना कहीं का आपको पता चलेगा कि there is something going wrong. Our sixth sense also tells us very often कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है. रोज हम गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर बच्चे मिल जाते हैं जो आते हैं कुछ मांगने के लिए, कुछ करने के लिए. How many of us stop और पूछते हैं? हम सोचते हैं भाई पैसे दे दिए, थोड़े हो गए. Money is the last thing. Because most probably they are being trafficked just to beg, है ना. देना ही है तो उनको खाना खिलाओ, टाइम हो तो गाड़ी साइड पे लेके इकट्ठा करो और बोलो भाई कहाँ रहती हो, कहाँ है माँ बाप, क्या चल रहा है, कैन आई गिव यू अ बेटर फ्यूचर, कहाँ पे रहते हो, स्कूल जाती हो कि नहीं, क्यों नहीं जा रही हो स्कूल, क्यों नहीं जा रहे हो आप. हैव वी ट्राइड टू डू दैट? वी हैव नॉट.
So let's think about, I think Nishanji will tell you, we were in a Kalinga fellowship recently online in which we learned this only, how we can be first responders, each and every person. How can we become first responders? बच्चा है, छोटा लगता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उनको खड़ा करो, let the child welfare committee take over. And I would say even after that follow up करो, so the child feels कि कोई तो है मेरा जो मेरे बारे में पूछता है, जो पता लगाता है. महिला हो तो प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है आपके यहाँ पे, उनके सामने लेके जाओ, नजदीक के पुलिस स्टेशन में जा. We should start with that. Shri Saurabh Shah in his speech said that for as long as there is a gap between the demand and supply, this trade will continue. Trafficking, human trafficking, is the easiest and most inexpensive business to be done. जहां पे इन्वेस्टमेंट जीरो है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि टैक्स भी नहीं भरना पड़ता है, इलीगल है. तो बहुत सारे लोग उसमें अलग अलग तरीके से कैसे पैसे कमा सकते हैं उसके पीछे ही लगे रहते. और जब तक डिमांड है तब तक कोई ना कोई वो सप्लाई करने के पीछे लगेगा. So I think what he said to me was very clear. Can we not all of us decide that post death we will donate all our organs? Let us make sure that the demand reduces. That demand is available in the market easily and at low cost or without cost, so that children are not trafficked for such things, so that women, men are not trafficked for such things, those who can't afford it. कम हो जाएगा ना अपने आप. जब सप्लाई मिल जाएगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगा. आई रिमेम्बर एक बार मेरा सत्कार हो रहा था, सातारा जिला की कोई बहुत बड़ी संस्था, चीफ पूना में ही आए थे वो, एक्स आर्मी ऑफिसर, सम एसोसिएशन इट वाज, एंड मिस्टर श्रीनिवास पाटिल, he is I don't know whether he's still he's I think now the governor of some state, and he was, or maybe is still, he was the chief guest of that function. उनके हस्ते मुझे वो पुरस्कार दिया गया और फिर पुरस्कार दिया, मैंने बात की और मैं बैठ गई और फिर उनका भाषण शुरू हो गया. और उनके भाषण में कहते हैं वो कि ज्योति, आई सल्यूट यू, आई लाइक द वर्क दैट यू आर डूइंग. यू नो, आप रेड लाइट एरिया में जाकर के इतने बच्चों के लिए, इतने महिलाओं के लिए इतना सब कुछ आप कर रही हो. आई रियली सल्यूट यू बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड आई हैव सीन द कंडीशंस. एक एक फ्लैट, 1 bedroom हॉल किचन के फ्लैट में 30, 35, 40 महिलाओं को साथ में रखा जाता है. You can imagine the amenities that are available for them. और बच्चे तो naturally जगह ही नहीं रहती है, ना नींद आई तब, नहीं और कुछ करने के लिए. So what is going to happen? Second generation automatically is going to be trafficked. और उसके जाकर के उसके बाद में वो बोलते हैं कि उधर की महिलाएं है ना आज, इसके लिए हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित है. और मेरे मन में आया कि मैं अगर खड़ी रहूं और आपको बोल के ये सुनाऊं कि आपके घर की महिलाएं अगर उधर रहती तो आप यही बात बोलती क्या? कोई भी नहीं बोलता, कोई भी नहीं कहता. But there are many people in this country who still think like that, कि because there are women, commercial sex workers they are called, commercial sex workers, whereas actually they are victims of commercial sexual exploitation. There is a very thin line between the two of them, very thin line. 90% of the women are victims of commercial sexual exploitation. 10% of them are commercial sex workers. Let us learn how to differentiate. Let us learn how to differentiate so that we can empathize with them and give them due respect to help them to get out of that trade. Then I think Mehdi Hassan may say, I don't think I have clicked anything, but basically non-punishment of victims is also something that goes about very often, which I think we need to stop. But I think basically the buck stops with implementation of the laws, which Vijay Zadov ji said in the morning. Implementation of the laws is what is the most important part, and the first responder in that is the police force. The police force, till it does not improve its act,
Yes, we have IPS officers, we have them who are very sensitive also, who want to bring about a change. But जो लिखता है कंप्लेंट जब कोई वहां पे पहुंचता है पुलिस चौकी में, या जो मिलता है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहता है, वो नॉर्मली एक पुलिस कांस्टेबल या ऐसा ही कोई ना कोई होता है जिसको कोई पड़ी नहीं रहती है। अरे कहाँ से आया, क्यों भाग के आया, जा वापस चला जा, क्या करना है, कितने साल का है, अरे तू खुद भाग के आई थी ना उसके साथ में, तो अभी क्यों रो रही है, तेरा पति है ना, पति की बात नहीं मानेगी क्या, जो करता है वो, अभी आज झगड़ा किया है, 2 दिन के बाद में फिर बोलेगी, फिर उसके पास ही चली जाएगी, चली जाए इधर से। नो हेल्प इज अवेलेबल। Since we have been running Chaitanya Mahila Mandal since 2002, we are running a shelter for women in difficult circumstances. Beyond that, since 2018, we started running the one-stop center scheme of the central government, जहां पे पीड़ित महिलाएं और बच्चे किसी भी तरह की मुसीबत में हो और उनको वहां पे पेश किया जाए, या वो खुद उधर चली जाए, तो उनको 100% सपोर्ट, चाहे किसी भी तरह की हो, फ्री में दी जाती है. That is one more place where any of you can take a victim if you find one, or can send her, not even take her or him or the child, wherever it is, so that he or she gets help. आप सब ये एक काम तो जरूर कर सकते हैं कि आज पता लगाइए कि न्यू दिल्ली में वन स्टॉप सेंटर्स, एक से ज्यादा तो जरूर होगी, 2 तो जरूरत होगी. Where are they? So कम से कम मुझे कोई ऐसा नजर आए, चाहे मेरी मेड ही हो जो रोज पिटी जाती है या रोज अपने पति के दौरान और कुछ ना कुछ करने के लिए लगाई जाती है. I can help. You will be doing your job as a first responder, and the person, the victim, will be given help. One thing also Vijay Jadhav said was very good. That was Aadhaar card or mobiles. हमारे यहाँ पे ना बुधवार पेट में there is a whole lane of Bangladeshi people who are staying there. सबके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड है. शायद अपने देश से भाग के आई हुई या भगाई हुई उधर पहुंची हुई महिलाओं के पास में, सबके पास में ना हो, but they are the first ones who have them. So it is not necessary कि आधार कार्ड है means that is a validication of age, a valid proof of this thing. We had one victim who came to us recently. Actually, I have also been told 1 minute left. I think that was 1 minute back only. But who had been sold by her own father when she was 13 years old to a man who was double her age and married off to him. उसने 5 साल बड़ी उम्र लिख करके उसका आधार कार्ड बनवा दिया. अब बच्ची को खुद मालूम था कि ये मेरे आधार कार्ड में मुझसे, she was an mother died when she was very small, तो उसको डेट ऑफ बर्थ अपनी खुद की मालूम ही नहीं थी, स्कूल कभी गई नहीं थी. उस आदमी बहुत ज्यादा जुल्म करने लग गया कि भाग गई और कहीं पे फंस गई. पर जब हमारे पास पहुंची, she had already entered and was trying to get out of her 3rd marriage, and after age verification she was still only 17 years of age. पुलिस के पास लेके गए, वो बोलती है मेरे पहले आदमी के पास से मेरा डिवोर्स हो गया. डिवोर्स कहाँ करवाया? नहीं, मैंने और उसने पेपर पे साइन कर लिया कि वी आर नो लॉन्गर हस्बैंड एंड वाइफ. हो गया. उसके मन में फिट बैठ गया था कि अभी उसका सब छूट गया. अरे भाई, हमको ये सब लिखवाना पड़ेगा, पॉक्सो के अंडर कार्रवाई करनी पड़ेगी, बाकी सब वो छोड़ दो, अभी पीछे छूट गया. आई डोंट वांट टू थिंक ऑल्सो अबाउट दैट. सो विक्टिम्स को आप जस्टिस सिस्टम में भी लाना चाहते हैं तो इट इज ऑल्सो अ मेजर hurdle. You have to be able to gain their respect, gain their total confidence. Till then you are not able to actually help them. दोस्ती ही बना लो, कभी भी जरूरत पड़े तो ये रख लेना मेरा नंबर, फोन करते रहना. आप उसका नंबर लेके कैसी है, ठीक है ना, याद आ रही थी इसके लिए मैंने फोन किया, हाँ, और कुछ नहीं था. इतनी सी 2 लाइन बात करके पूछ ली तो भी वो खुश हो जाएगी, और जब सच्ची मुसीबत में होगी या कोई प्रॉब्लम में होगी जरूर आपको फोन करेगी. You will be a responder, will you not? You will be helping, right? So post COVID situations or pre COVID situations, they are all the same. Post COVID में संख्या बढ़ गई है,
हमारे यहाँ पे आने वाली महिलाओं की संख्या दुगनी हो गई है, जो प्री कोविड से कम थी। नेचुरली भूख है तो आखिर में पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, एंड सो दे गेट अट्रैक्टेड, they get cheated, they get pulled into all kinds of trades, into all kinds of illegal acts unknowingly. They still do not realize that they are victims, so it is very difficult to bring them onto book. Perpetrators को इसके लिए बहुत मुश्किल होता है उनको लॉ के इसमें लाना. I think that is a major challenge, and maybe we can have a whole lot of lawyers undergoing treatment if Seva International or some other big organization can think of doing something like that, where we give special training to prosecution and let the police force know that we have such a legal expertise कि आप जब केस दर्ज कर रहे हो तब भी हमारे से एडवाइस ले लो, and let us do it together so that the perpetrator is brought to book finally. Only then are we going to have an increase in the prosecution numbers. नहीं तो नहीं होगा. Somewhere each one of us, or maybe if any of you tomorrow decide to become lawyers, you can think कि हाँ जी, I would also like to. There are people who give training, there are organizations. When we find such victims, हम नहीं सोचते कि we are know all. हम उसी संस्थाओं को फोन करते हैं जो इसी फील्ड में काम करते हैं day in and day out. They have their legal experts. हम लोकल पुलिस को बोलते हैं कि प्लीज सर आप सुनिए, रुकिए जरा 2 मिनट. हम उनको भी बुला लेते हैं, आप उनके साथ में मिलकर के एफआईआर दर्ज कीजिएगा. सो व्हाट सेक्शंस यू आर पुटिंग इन, व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग, लेट अस मेक श्योर. मुझे याद है कि एक ऐसी महिला जिसको हमने ये किया था, एक बच्ची को भगा के लेके जा रही थी, वो पुलिस ने पकड़ के दोनों को हमारे शेल्टर होम में डाल दिया. अब वो दोनों इकट्ठी एक साथ में बैठी जा रही थी और वो बड़ी औरत छोटी वाली बच्ची को बोल रही थी कि अब पापा को फोन करने बोल, पापा को फोन करने बोल. छोटी वाली बंगाली थी. सो वी कॉल्ड अ बंगाली लेडी एंड सेड पहले दोनों को अलग कर दो और बात करो उससे. तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया. अब ये लेडी इज द ओनली पर्सन शी नोज फ्रॉम देयर, इसके लिए उसके पास चिपक के रह रही है और कोई वजह तो है ही नहीं. पता चल गया तो पुलिस को हमने बोल दिया कि भाई ये तो सिर्फ ऐसे नहीं मिसिंग की केस नहीं है, दिस इज ट्रैफिकिंग का, आपको दर्ज करना पड़ेगा. उन लोगों को बुला के सब किया. जुडिशरी के सामने जब मैं खड़ी हुई कोर्ट में और मैंने बोला कि दिस लेडी हैज बीन डूइंग दिस 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 दिस, हमें ये सब पता चला. लेडी जज ऐसे बैठ के मुझे बोलते कि मैडम बट शी इज ऑल्सो अ विक्टिम, नो. कौन बदले उनको, कैसे बदलाया जाए? How can we increase the rate of convictions? So there are lots of hurdles, but that does not mean that we stop here. Challenges will keep coming. We will keep finding new ways and means of doing it. The perpetrators have got loads of money to fight their cases, to feed people under the table, to do everything possible. And we are always short of resources, always. We are used to that now. पर एक बार ठान लिया कि ये करना है तो हम सब कर सकते हैं. So I hope आज कि मैं जब यहाँ से जाऊं, I will have each one of you sitting in this room assuring themselves, not me, your own self, that I am going to be a first responder from today, and that I now know what I can do and where I can go if I find somebody in an odd situation, right? Thank you so much for calling me once again. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी. आपने हर एक व्यवहारिक पक्ष को सामने रखा और वो बातें सामने लाई जो हम सब सोचते हैं. जैसे आपने कहा कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने, और भी कि कई बार हम चुप रह करके भी जो ट्रैफिकर है उसकी मदद कर रहे होते हैं. तो निश्चित रूप से जिनकी भी ट्रैफिकिंग हुई है उनको सपने दिखाए गए, अच्छे जीवन के उन्होंने सपने दिखाए, और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सपने दिखाने वाले अपने ही थे. मुझे बद्र साहब का शेर याद आता है कि वादे करके वो तोड़ देता है, मेरी पलकें निचोड़ देता है, और ख्वाब दिखला के चांद तारों का फिर अंधेरे में छोड़ देता है. तो निश्चित रूप से वो सपने दिखाने वाले अपने होते हैं. और भरोसा, मैम बिल्कुल ठीक कह रही थी कि आप उनसे पूछिए, लेकिन आप उनसे पूछेंगे तो वो भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि इतने स्तर पर उनके भरोसे को उनके अपनों द्वारा ही तोड़ा जा चुका है. बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस बहुत एनरिचिंग स्पीच के लिए मैम. बहुत सारे पॉइंट्स हैं और निश्चित रूप से हम सब ने बहुत कुछ सीखा.
मैम की स्पीच से। हमारे साथ पी विजयन जी जुड़े हुए हैं। आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर केरला। P. Vijayanji, previously he was Inspector General of Police, Kochi Range, and Deputy Inspector General, DIG of Police, Kerala Police Academy. He has 23 plus years of experience in investigation and prosecution of various crimes, including human trafficking cases. He devised and led the Shadow Police team with a primary focus on crime detection and prevention of violence against women through effective surveillance in cities of the state. आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुलिस पहली कड़ी है जिसे हम देवदूत कहते हैं, जिसे मसीहा कहते हैं, जिनमें हम एक ईश्वर की छवि देखते हैं, और खासकर इस मुद्दे पर आप ही वो पहली कड़ी हैं। आपके निश्चित रूप से सर बहुत सारे अनुभव होंगे, वो हमें सुनने को मिलेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। Very good afternoon to one and all. Thanks for inviting me to a platform which is discussing very important, very important issue. Distinguished panelists and dear friends, this is last 2 years I can safely say that the attention of Indian police, especially, and it to greatest in the world police, have been largely into this management of epidemic, a pandemic called COVID-19. We are mostly engaged in lockdown. That is, it's ensuring lockdown or maintaining COVID protocol. Even now, I think that the most police forces one way or other engaged in COVID-related management. So the interesting thing about, or the most pathetic thing about the policing is that its priorities are sometimes been decided by the emergencies occurs in the society. Police was not so experienced in managing. We have done many jobs. We have never been too much into this health-related pandemic and or health-related issues. But this since 2000. In the beginning of 2000, police was dragged to this health sector too. And in my state, initially, actually, it was mostly been taken care of by this health department. We were assisting, but later we were asked to act from the front, and we were mostly into this ensuring the lockdown or announcing some places a triple lockdown like that. So here, that is COVID-19 has really one way it is we can say it has exposed the fault in the existing system. Not only just exposed it, it has that is worsened this trafficking the scenario. And the most affected among the all lots in as far as COVID-19 pandemic is concerned, the children. They have been actually been confined to their old walls of the room if they have a house at all for their parents, and they have been denied of their companionship, their classroom teachings, examinations, the friendship like that. So the most vulnerable section among that, it has become more vulnerable. The children has become more vulnerable as far as the trafficking is concerned. Besides this, that is the pandemic has pushed more people below the poverty line. So large number of people poverty line. There is no proper statistics. Some studies by the SITO Foundation and says it's a very alarming rate they are doing, and the World Health Food Organization also. So poverty is the root cause of, we have often seen the root cause of promoting or this trafficking. And another interesting important thing is that due to the COVID restrictions, most of these NGOs are also not those that were actively involved in this trafficking related preventive activities and rehabilitation. They are also not been that much active because of the COVID related restrictions. And this education has mostly gone on online. Online has created a big digital divide. Digital divide for those who have digital gadgets and connections, good connectivities, and those who have not.
Another important thing is that those having a very good attention span and very good, not that much good attention span. The poor strata of the society has really been denied of this good digital connectivity and good gadgets. I was in UP, was extensively traveling last week, last 20-21 days in connection with election. They say that most of the schools have gone on online, but the children generally attend to the classes through this their father's mobile phone or something. When they go for this their work, they'll carry that mobile phone also. So they have been denied. Another thing is that I often say that's a reminder of that Amartya Sen's famous book, that is First Benches. Generally the schools in basically are running for, have been meant for the first 5 students sitting in front of the teacher. So the thing is that means their attention span will be generally very high, but the remaining children's attention span may not be that much. I was one among them, that is, I was not having much attention span. But the presence of the class teacher made us to be more attentive in class. At least some must tend to be attentive in class. Last 2 years, this presence of the teacher, classroom teachers, instructions and guidance have been really been denied to our children. All these things, that is the police, that that is in many states we have formed this anti-human trafficking unit. But the most of the policemen have been taken for this COVID-related management or COVID protocol management and all. So then they were not been paying that. They could not pay that much attention to them. Then this the aggravating situation of poverty and this the less presence of NGOs in society and this online addictions, online or digital divide. Besides that, the online education has pushed almost all of us to the digital space. This now, the children or youngsters are mostly living in the virtual world. They seldom come to this real world, or if they come to world, they're having some food or sleeping only, they are coming to the real world. Most of their time they are spending their own virtual world. Now the criminals have also migrated to the virtual world. Most of the criminals are migrated to the virtual world, and they are very in all means they are trying to groom the children. Cyber grooming is taking place through various means to entice the children to these various type of sexual exploitations. So altogether, generally lockdown and might have, we generally think that this trafficking might have reduced, but instead this COVID-19 pandemic and resultant lockdown and COVID protocol management, it has taken a different turn altogether. We say that we are living in new normal. This our COVID-19 pandemic eruption, we say that we are living in new normal. The human trafficking also taken a new normal in different format altogether. So in police, actually, I said that I must confess that it was not been always been a priority number 1 in the policing, that the enforcement of human trafficking. Because we are, when even now, till the date, as mentioned earlier, we were not much been active in health sector. The COVID-19 has pushed us to health sector also. So whichever law is there in the world, you can see that some provisions for the police enforcement with a limited staff and all these things, and little less sensitization also, that causes that police was not taking it as it's a priority number 1, even though it should have been taken. But the COVID-19 pandemic has really made little more worse things like that. But this is, but I was DIG Railways for some time, along with some other charges. We got information that one train is being ferrying almost around 600 to 700 children from Jharkhand to Kerala. It is meant for various orphanages in Kerala. Then I did an quick inquiry and found that is the orphanages itself, they are running as a profit-making business, some sort of an activity bringing from here and there. So we registered a 370 IPC case, and that was went to CBI, and also a big issue over here. Kerala, as far as is concerned, it is not in a supplying state. We can say that it's not much children has been supplied to the trafficking, but of course it is a transit place, or it can be considered as an end receiving place.
So we have registered some cases, and we have been, there are some difficulties. You know that it can't, police alone can work in this one. It should be, it requires a lot of, inter-departmental, inter-agencies collaboration in successful implementation of this various laws related to this prevention and this detection of this human trafficking. Because often, you know, that once we catch hold of one person, how will give a shelter to that person, food to that person, how will take him to different places, and how will identify whether it is been trafficked. And because lot of it's a multi-sectoral participation in this one. But we have really been sensitized to this one, to our police force, through intense training through the anti-human rights anti-human trafficking unit. Now, besides that is, enforcement is definitely very much required. It is the job of the police with the support of various agencies. But why I say that is, if you don't address to the root cause, I don't think that it's going to be it can be completely stopped. The root cause we have to address. Police has taken, there is a very unique department a division has been created by Kerala government, that is social policing division. Social policing division is looking to this type of thing, especially that is the preventing the preemptive actions, promoting preemptive actions, and to prevent for the children they end up in such type of problem. One program we have initiated, one unique program is initiated, is called Project Hope. Project Hope is to identify the children who have failed in their school examination, both in 10th or in 12th examination. All those have been dropped out of the system. Often we have found Kerala, the 10th rate, passing rate is relatively very high, but still some children have been thrown out of the system. Generally, the school failed students or the dropouts are more vulnerable for any type of exploitation. So we have initiated a program that is to help the children to clear their basic education and enable them with some sort of soft skill and hard skill, which make them to be more employable. And since 2017, it has been under the Social Policing Directorate. This program has been going, and it has been found very, very effective also. Another initiative which we started called Student Police Cadet Program. It is to empower, to create a more responsible and capable citizens. They are trained high school students are more responsible and capable citizens. Empowering them with and making them to understand their own rights. And this is one thing we do, that is the prevention of such type of exploitation to empowering the children. Student Police Cadet Program being run in over 1,000 schools in Kerala. At present, 82,000 children are trained in it. They have been largely been used for this type of an awareness campaign, prevention against awareness against the human trafficking and all. And this program started in 2006. Then it has actually been rolled out nationally by the government of India. So this is another vulnerable area is that the children with deviant behavior, either some behavioral problem or learning difficulties or substance abuse type of things, and such children are also more vulnerable to be exploited by the trafficking agencies. So we have initiated a program in 2010. It is going very well now. That is our responsibility to children. Kerala Police initiated this program, now taken over by the Women and Child Department of Kerala, and now almost 3 to 4 lakh children are under this particular scheme. There is especially during the COVID period, we initiated a program called Domestic Conflict Resolution Center. Called this particular program is to settle the amicably settle the domestic dispute, especially among the spouses. Because the most often the children's one issue is that the domestic the problems, the violence in domestic, the lack of peace in the families. So all this in all these situations, children are actually more being felt orphaned. So such things make them more vulnerable to being exploited by other agencies. And then another initiative we have created is the school protection group. It is to
to create an invisible wall of protection by forming a stakeholders group. Over 6,000 schools is having this school protection group. I'm not to this not to project a lot of projects programs we have been running. What I am saying that along with this strict enforcement, that also with a lot of collaboration and participation among various agencies, we have to focus on that is the preemptive side of it. Work from this its originating, how we can prevent from the root itself. Otherwise, we try to block the water in between. The river will start somehow, it will flow. But we have to go to the upstream and we have to find out the basic practice which leads to this type of crimes. So I think that it is in India is having a population of over 40 crore children below the age of 14. Such nations, there are chances of India. Generally, we say that India is the youngest nation in the world. But so we'll say that the demographic dividend is going to make India a great nation. It is not a demographic dividend. It is right now it is a demographic bulge. It can be made as it can be exploited by the people world around for the better for their interests, for the furthering their brutal interests. So we have to be very watchful. If we are not so really proactive and with a good plan and action, India will be made as a happy center for the trafficking of children. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद पी विजयन जी। और आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट होप की आपने चर्चा की, जो अनएजुकेटेड बच्चे खासकर वो ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं, उसमें शिक्षा भी एक बड़ा कारण है। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो बातें कही कि केवल पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर सकते, केवल समाज नहीं, केवल एनजीओज नहीं, सबको मिलजुल करके इसके खिलाफ खड़ा होना होगा, यूनाइट होना पड़ेगा। धन्यवाद। और आप सबके मन में अगर कोई प्रश्न है तो हमारे साथ पी विजयन जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ज्योति जी हैं, वरुण जी हैं, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? हाँ, शैलेंद्र सर। सर बस अगर कोई पुलिस वाला कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहा हो तो उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने के लिए कोई थाना है क्या? पी विजयन सर, क्या आपने प्रश्न सुना? मैं एक और बार मैं ये प्रश्न रिपीट करता हूं। इनका प्रश्न था कि अगर पुलिस वाले कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर? Can you speak in English, because I'm not so good in English. हाँ, Monica ma'am, please. Yeah. Explain. Sir, the question which Dr. Shailendra has asked is that if the police is not ready to register the complaint of a victim, where do we complain about the police officer not reporting? Are there any special provisions for that? Can a police officer at the outset refuse not to lodge a complaint? Not at all. Police doesn't have any authority to refuse to register a case. Especially if there is a cognizable offense is reported, it is the bounden duty of the police officer to register the case. It may be false, but it is after investigating only the police officer can come to a conclusion that it is a false. If a police officer in the Tanada failed to register a case, then that is that in almost all the states it is anti-human trafficking unit has been formed. Because in police is a hierarchical organization. If one unit failed to respond to the genuine, because there is another, for example, there is in Uttar Pradesh or there are circle officers or then the SSPs or something like that. In our places also 3-4 hierarchies are there. In one area it is fails, that is definitely it can be brought into the other people. That is the many NGOs has been very often come to me also if someone
not responding properly. They used to come to us, that is saying that is, this police is not a registering case. So it is not some sort of magnanimity police is being doing. It is the border duty of the police officer to register the case. And it is the right of the citizen to ask for the justice also. So I guess there are provisions in place. I mean, you can talk to the higher authorities. You can tweet. These days, I guess we have mobile at our hands. We can complain about this issue. There are officers. You can talk to PIOs. Every organization has a public information officer. There are many provisions, I guess. And as you have pointed out, you can talk to the higher authorities and you can bring it to the notice of the people who are in hierarchy if the lower rank person is refusing to lodge a complaint. This is the takeaway message, I guess. Sir, basically what his question was that is any action taken against the police officer? Can any action be taken against such a police officer who doesn't lodge a complaint? We can go to the higher authorities. We can get the complaint registered afterwards. That is, there is no doubt about that. But is there any provision in place to punish a police officer who has not taken it? No, there is normal provisions only. That is, anyone fails to perform his duty, there are departmental actions. We cannot register a case against it. But in some laws, for example, POCSO, if a police fails to act, a police officer can be punished for punishment go up to 2 years. But in normal cases, if it is a sexual exploitation or such things against a child, in such cases, police fail to register a case. There is a provision that is police officer can be punished up to 2 years. Sir, I guess there is a message from the entire house over here that in case a police officer is refusing, you should also have some stringent laws to punish a police officer who is not adhering to his duties. Most often what happens is probably the departments wrap up the things, and this is the general perception. So we must not put things under the wrap and probably have some stringent laws as well. This is probably what House has in mind. No, but I can say that being a senior police officer, I can't enact a law, but what I can do that is under the disciplinary rules, I can take stringent action against it. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. But I think anyone can go to the one-stop center and ask for help to register a complaint in case you don't get help. हाँ जी, मैंने आपको अभी वन स्टॉप सेंटर के बारे में बताया था ना. आप में से कोई भी अगर पुलिस काम नहीं कर रहा है, आपको मदद नहीं मिल रही है उनके पास से, तो नजदीक के वन स्टॉप सेंटर पे जाइए, वो आपको मदद करेंगे, वो उनका काम है. धन्यवाद. एक आखिरी प्रश्न, राजेश सर प्लीज. थैंक यू. बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन चल रहा है. बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन चल रहा है. और मेरी चिंता के दो वजह अभी यहाँ है. एक तो कि क्या, जैसा कि अभी मिस ज्योति जी ने कहा था कि माइंडसेट कैसा बना हुआ और कैसे चेंज करने, तो क्या माइंडसेट चेंज करने के लिए हमारे सिलेबस, किसी तरह के भी सिलेबस में, एकेडमिक सिलेबस या जो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उनके यहाँ कोई उन्हें एजुकेट करने के लिए क्या कोई ऐसे वो ये है, कोई सिस्टम है, कोई सिलेबस है इसका? एक तो ये चीज. दूसरी बात के क्या कोई यहाँ पर रेटिंग है या कोई इस तरह की चीजें हैं रोकने की, जैसे ट्रैफिक पुलिस, जैसे अभी रेड लाइट की बात की गई थी. हम कहीं भी जब जाते हैं रेड लाइट में, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां कुछ बेचते हुए, अब पहले तो ऐसे सीधे बैगिंग करते हुए, अभी कुछ थोड़ा सा तिरंगा लेके आ जाएंगे, कुछ और चीज थोड़ी पेन लेके आ जाएंगे छोटा सा, और कहेंगे कि 20 रुपीज दो, 50 रुपीज दो, उस तरह
हम स्टॉप करें। ज्योति जी कह रहे थे कि आपने क्या कभी वहां रोक करके उनको कहा, वो बात करने को तैयार नहीं होते। वो मतलब कि आप उनको अगर खरीद रहे हैं, दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो बहुत थोड़ा कुछ कह के भी चले जाएंगे, या ऐसे ही आपको ऐसे जाने नहीं, जैसे आप पूछताछ कर लेंगे वहां से हट जाएंगे। तो क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि वहां जो ट्रैफिक पुलिस वाला है, या वहां जो गश्त करने वाली पुलिस है, जो वहां का एरिया, उसके एरिया में कौन लोग खड़े हैं, वहां कौन इस तरह का ट्रेड करा रहे हैं, उन पर भी कोई इन्फोर्समेंट हो। और जो नेक्सेस है कि एक को अगर हम पूछ रहे, मैं एक बार बस में ट्रेवल कर रहा था, एक बच्चा कुछ ऐसे कुछ मांगता हुआ आया और उसको बोलने लगे, पूछने लगा कि आप पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अब वो एक पीछे बैठा हुआ था, आपसे मतलब आप जो है कुछ करना है तो उसको देना है तो दीजिए, नहीं तो आप दुनिया भर का उससे जो है जाजा मत पूछिए। तो अब 3-4 खड़े रहते, पता नहीं वो कुछ हिंसक हो जाए, वायलेंस हो जाए, हम क्या कर सकते? क्या इसके लिए स्टेंजेंट कोई, जैसे 2 घंटे बाद पुलिस आती है, जो पीछे सुबह कह रहे थे कि अगर हेल्पलाइन को फोन किया जाए, पता चला कि पुलिस को, तो 1 घंटे 2 घंटे तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो ये एक्चुअली माइंडसेट जो चेंज करना, वो पूरा जॉइंटली जो सबको मिला करके और एक्सटेंजेंट एक्शन होने की जरूरत है, और एजुकेट करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या सोचते हैं? थैंक यू सर। बहुत ही गंभीर सवाल है आपका, और वो सवाल हम सब लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो हम हर दिन देख रहे हैं, और हम उसमें क्या कर सकते हैं, ये उससे जुड़ा हुआ सवाल है। एक तो रिपोर्टिंग की जब बात आ रही थी, तो पॉक्सो को सर ने भी कहा, और मैं फिर आपको बता रहा हूं, कहीं भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है किसी बच्चे के साथ, बहुत ही मजबूत कानून है। हम सब कहते हैं ना, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है कानून, मगर ये उन कानूनों में से एक है जो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है। आशाराम बापूजी आज भी अंदर हैं, इसी कानून की वजह से बाहर नहीं आए हैं। सेक्शन 19 कहता है कि रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, कि कहीं भी सेक्सुअल अब्यूज हुआ है रिपोर्ट आप कीजिए, और अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई रिपोर्ट नहीं करता है तो सेक्शन 21 वहां उनको पनिशमेंट की बात करता है। एक दूसरा हम बात कर रहे हैं, आपने कहा जो बच्चे बैगिंग या इन सब में इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मुद्दा और इशू है। इसको लेकर सेक्शन 76 जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है अगर किसी बच्चे से भीख मंगवाई जा रही है तो, और 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को फिजिकली रूप से जो हाथ या पैर या आईज वो करने के बाद अगर उनको यूज किया जा रहा है कमर्शियल, तो वहां भी और पनिशमेंट 10 to 20 ईयर्स तक आगे बढ़ जाता है। एक इसके साथ साथ आप सुप्रीम कोर्ट ने अभी लास्ट ईयर एक सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन 6 है सुमोटो, और उसमें लगातार अगर आप बहुत सारे लोग अगर देख रहे हो या जानते हो जो सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, तो कुछ नंबर पिछले 2-3 महीनों में रेड लाइट पर बच्चों का कम हुआ है। उसका रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को और बाकी जो तंत्र है उन सिस्टम को दिए हैं कि जहां भी स्ट्रीट सिचुएशन या रेड लाइट पर बच्चे हैं आप उनको लेकर आइए। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पे उनको प्रोड्यूस कीजिए और उसके बाद फिर बच्चों को दिया जाता है। जो नॉर्मली एक सवाल बार बार आता है ना, बच्चों को लिया आपने होम में रख दिया, वो सिर्फ किसी की मतलब कोई ऐसा बेनिफिट किसी का और नहीं है बहुत ज्यादा कि होम में रखने से किसी को कुछ ज्यादा वो हो रहा है, मगर बच्चों को सिर्फ आज रेड लाइट से लिया, कल वापस फैमिली में दे दिया, ठीक है उस रेड लाइट पर नहीं होंगे तो दूसरी रेड लाइट पर होंगे, तो वहां पर पूरी तरह से उनकी इंक्वायरी कराना, फैमिली की, बच्चों को एजुकेशन के साथ जोड़ना, बाकी सारी स्कीम के साथ जोड़ना। अभी जो हम लगातार उस इशू पे काम कर रहे हैं, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फिल करने के बाद देखना कौन सी फैमिली फिट है या नहीं है, किस बच्चे को हैंड ओवर करना है, किसको नहीं करना है, कितने समय बाद करना है। साथ में दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्पॉन्सरशिप स्कीम है, उसके साथ जो भी दिल्ली के बच्चे, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे बच्चे जो बैगिंग के हैं वो महाराष्ट्र और राजस्थान अदर स्टेट से भी है, तो उन बच्चों को जो दिल्ली में हैं जिनकी फैमिली एजुकेशन से जोड़ा जा सकता है, 2000 रुपीज का कंपल्सेशन एक स्पॉन्सरशिप के थ्रू उस फैमिली को मंथली बेसिस पर दिया जा सकता है, ताकि बच्चे जुड़े रहें और इस तरह के काम से ना आए और रेगुलर स्कूल में हो। तो इस तरह की कुछ प्रोविजन है जो लगातार है, बस हम लोगों को अगर दिख रहा है कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमें सिस्टम के सामने लेकर आना चाहिए।
धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न। एक मिनट, मैं जरा इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि भैया अगर आपको ऐसी कभी समस्या लगे कि को बहुत सारे लोग वो बच्चे के साथ में है और आप नहीं कंप्लेन कर पा रहे हो, तो आप एक लेटर लिख लीजिएगा आपके बाल कल्याण समिति को, और इवन इफ यू फील यू कैन नॉट गो टिल देयर, आप सिर्फ उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा उनको, ताकि आपके पास उसका एक्नॉलेजमेंट रह जाए। दे विल हैव टू रिप्लाई टू इट बिकॉज स्पीड पोस्ट से पहुंचा हुआ लेटर होगा, एंड दे विल हैव टू टेक एक्शन ऑल्सो। They will have to. Okay. Many children in our country, she was talking about Pune, where people from Bangladesh are there and they have been assigned Aadhaar cards. The burden on our country is increasing because there is a lot of, cross-border people coming in. I guess because we are working on silos. हमारा MCD अलग काम कर रहा है, हमारा दिल्ली गवर्नमेंट अलग काम कर रहा है, नेशनल लेवल पे एजेंसीज आर, their number is huge, but they are working in silos. There is no cross connectivity between the people. So why don't we have the data coming in from all quarters at a cloud, and then we know how many are migrants? Why don't we check in illegal migration, because that is also an additional burden to the nation. So I mean, there needs to be a lot of crosstalk between people working in different disciplines, different areas. Then only we can reach to where we have to reach. डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल और सजेशन दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। मैं दो लाइन में उसको फिनिश करूंगा। एक, जो आपने ये कहा है डाटा और ये सारी चीजें, मिसिंग चिल्ड्रन और बाकी सबको लेकर भी लगातार हमारा रहा है कि वो हो। आधार भी एक बड़ा रीजन भारत सरकार का था कि सब लोगों की एक आइडेंटिटी कुछ हो, मगर उसके बाद भी हमारे यहाँ तो लॉ के साथ साथ बहुत सारे, आपको पता है कि क्या सिचुएशन है। बिल्कुल, आधार भी जितनी तेजी से फेक आधार बन रहे हैं, वो भी एक इशू है। छोटा सा बांग्लादेश की आपने बात की, अभी क्योंकि समय ज्यादा नहीं था हम शेयर नहीं कर पाए, मगर लास्ट वीक ही एक मेरे पास जो केस आया, 2 बच्चियां जो डाउटफुल थी कि बांग्लादेश से हैं ट्रेन में, और जो हमने एसओपी की बात की थी तो रेलवे में टीटी ने कंट्रोल रूम आरपीएफ को इन्फॉर्म किया, और रास्ते से ही जो बंदा उनको लेकर आ रहा था दोनों माइनर बच्चियों को, वो गायब हो गया, मिस्टर हलदार। उसके बाद यहाँ आरपीएफ को हैंडओवर किया, ऑर्गेनाइजेशन को हैंडओवर किया, और जीआरपी को उसके बाद क्रिमिनल ऑफेंस था तो हैंडओवर किया। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली कि उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग है और लगता है कि बांग्लादेश से हैं, तो इमीडिएटली मैंने रेजिडेंस कमिश्नर बांग्लादेश को कांटेक्ट में लिया और उनसे कहा कि अपनी टीम भेज के तरह वेरीफाई कराएं। रिटन डायरेक्शन कमेटी की तरफ से भेजा। सच में पता चला उसके बाद कि वो बांग्लादेश से थे, और इतना जबरदस्त नेटवर्क होता है ट्रैफिकर्स का कि वो तो ट्रेन से गायब हो गया जैसे उसको डाउट हुआ, और यहाँ पर 2 अननोन लोग आ गए उस बच्चों को क्लेम करने के लिए। एक, और उसने कहा कि हमें तो पिंटू ने, मतलब जो पर्सन था, कि उसने फोन किया और हम आ गए, हम उसको जानते भी नहीं, बस हमारे पास फोन आया और हम लेने के लिए आ गए। तो वो भी प्रोसेस था। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि वो सिर्फ 3 दिन पहले 15,000 रुपए उनकी फैमिली में देकर उनको ढाका के पास से पहले वेस्ट बंगाल लाया गया। आते ही 3 दिन के अंदर उनके नकली वोटर आईडी कार्ड बने जिसमें उनकी एज 20 ईयर थी, और उस वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से वो 24 परगना का आईडी प्रूफ था, और वो दिल्ली आए। उसकी सारी इंक्वायरी मैंने क्राइम ब्रांच को रेफर की है और लगे हुए हैं। देखते हैं, अभी 1 वीक हुआ है, कितनी चीजें और निकल कर सामने आती हैं। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारी चीजें हैं। धन्यवाद। In next few years, abhi to we've been talking about Bangladesh, West Bengal, and the traffic between Howrah and Delhi. Very soon you might have issues Delhi to Jammu because Rohingyas have come in and the trafficking is going to increase. So the takeaway message which should go from the proceedings from here is that I guess we should talk about these issues on a more wider platform so that these things are talked about. They are generally hidden under the carpets. So that is my request. धन्यवाद। आपका आखिरी प्रश्न, इसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक होगा। जिसके मन में भी प्रश्न है वो हमारे स्पीकर्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप अपना आखिरी प्रश्न पूछे। Thank you. So I actually had the question that to Vijayan ji. So in this wonderful conference that's been organized, we have heard from survivors, we have heard from NGOs and police officers and so on. I feel one voice that's missing is the traffickers to better understand why and the how of the crime. So what I would like to understand is, could there be some light shed on processes
that the traffickers use to actually conduct the crime, and what are the steps taken to interrupt the supply chain of this entire movement? Vijayan ji. Sir, can you hear? Yes, yes, yes. There is, I told you there is this trafficking. There are different ways of trafficking for different purposes. That we must understand that, trafficking is not that, the same. There is, some cases can be for forced labors. We'll say that, there is sometimes wherever the child laborers are there employed. When we go into details, sometimes we'll see that there is a trafficking element behind it. Sometimes it can be forced burglary. That is in the street when we see that someone was telling that, mentioning about that is each one of us to be the first responders. When you go to the street or you go to in front of a religious place, sometimes you can see someone, some ladies may be carrying a child. We may think that it may be his or her son or daughter. May not be that like that. Sometimes it may be a trafficked child. Sometimes for the sale of children for different purposes, or it can be for the post marriages. Ma'am was talking about a 13-year-old girl has been married at a 26 or a double-aged post labor, or it can be for the organ removal also. Can be sometimes there is a big industry running in the world that is for the removal of the organ, and the many times is for the sexual exploitation. So cases may vary from the case to case. Only thing is that when one way to, for example, I told you that is I got an information that bunch of means around 600-700 children being buried from one distant places to Kerala. And why I was wondering that, that generally we run an orphanage. Orphanage is for that nearby places and all. To fill this orphanage, to fill there is not much orphans they are getting. So they are bringing far away places. Why can't they build up an orphanage in that place itself? So this is an industry. This is an industry that is by showing these children, they have to collect money. To run their business, they have to, this is a business. So each case, we have to look at it differently. It can be, the thing is that instead of looking at the means what purpose this child has been brought in, ask a question, try to spend some time with that child and find out. And when that also, you put an answer that are you trafficked or you have been exploited, you will not be going to get an answer. You won't be at all getting. Spend some time, make that child to a comfortable position and build up a rapport. Then we go into the detail, then we'll come to know that and work from this child has been brought. And for what purpose it has been brought and how he has been or she been exploited. So there have to, so that is the what that is, there is one person who from the audience was asked, okay, but the mindset, mindset in many ways we have to change. One is that is the mindset of employing this type of children in our home. Sometimes the mindset of we people also, the public, it is very easy to, to talk about many issues, but very difficult to work for the people. Very, very difficult to work for the people. We have to work for the people means we have to really compassionate, empathetic towards that person. Our aim should be to solve the problem instead of getting aggravating it. So if we are really concerned about the person, the thing is that if you are really interested in solving this problem, if you happen to encounter with a child, please spend some time, try to find out, there may be some officer may not be interested in registering cases, but that should not deter you from helping that child. We should go ahead with that one. That's what I cannot give one word solution answer to this question. I think that might have made it clear to you. धन्यवाद. Thank you so much, sir. मैं सभी अतिथियों का धन्यवाद करता हूं इतनी अच्छी चर्चा और कार्यक्रम का औपचारिक संयोजक होने के नाते भी. और अभी आगे की थोड़ी देर का हम लोग ब्रेक लेंगे और इस उद्देश्य के साथ मैं प्रियंका जी को आमंत्रित करूंगा. 2 दिन की जो हमारी चर्चा रही, मुझे दुष्यंत जी की वो पंक्ति याद आ रही है कि फिर से ऐसा कोई कानून बनाया जाए
जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और मेरे दुख व दर्द का तुझ पर हो कुछ ऐसा असर, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। प्रियंका जी आप मंच पर आए, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। With the interest of time, I'm cutting short a lot of lines and paragraphs. I would like to extend my heartiest gratitude to all the panelists over here and all the delegates. So tea is waiting for all of us, and would like to make a small request. Please come back in another 15 minutes. We have a lot of panelists who are waiting for us for the next session. Thank you so much. And a big thank to Prabhanshu sir for all the support and guidance. Thank you, everyone.
Good afternoon, everyone. We will start the session in 2 minutes. Thank you. Good afternoon and namaste to all. I request everyone to put their phones on silent, please. My name is Sushant. I shall be the moderator of this session. The theme of this session is Azaadi Ka Amrit Mahotsav, past, present, and future of anti-trafficking intervention. As we all know, human trafficking violates the basic tenets of human rights and dignity. Its impact can be witnessed in society, economy, health, and rule of law. The scale of trafficking deals a particular blow to gender equality, and women's rights present a strain on law enforcement and affects security and health system. The year 2021-2022 is being celebrated as Azaadi Ka Amrit Mahotsav, and it provides a unique opportunity to reflect on India's efforts in combating human trafficking, including identifying its contemporary challenges. This session aims to envision the future of human trafficking intervention. I'll take this moment to welcome and introduce our esteemed guests. I request Kumar Shivamji to come on stage, please. We have with us Mr. Ravi Kant, President Shakti Vahini. Mr. Ravi Kant, founder, member, and president of Shakti Vahini, is an advocate of Supreme Court. Shakti Vahini is a pioneer organization in the field of anti-human trafficking. The organization has been working for women and child rights for last 16 years in different states of India. We have with us Ms. Rachna Mudra Boina, Director, Human Rights Law Network. Rachna ji, her work is focused on rights of LGBTQI persons. She's a co-founder of National Transgender Network, Telangana. She's also engaged with UNAIDS, Telangana Queer Swabhiman Yatra, Telangana Women, and various other organizations and movements. We welcome you, ma'am, to this conference. We have with us Ms. Sunita Kar, survivor leader, Ilfat and Bijoyni leader. Sunita ji is from West Bengal. Trafficked as a teenager. Her journey from survivor to leader is inspirational. Despite facing stigma, she did not give up and instead raised her voice to set an example to the vulnerable girls and women and society. We welcome you, ma'am, to this conference. We have with us Shri Pradeep Rai ji, Vice President, Supreme Court Bar Association. Mr. Rai is also chairman of various subcommittees of Supreme Court Bar Association, including e-commerce, E-Committee of Supreme Court Bar Association. Mr. Rai has over 2 decades of standing at the bar in the Supreme Court of India, various high courts, commissions, regulatory bodies, and tribunals. We welcome you, sir, to this conference. We have with us Khemlal Khader ji, survivor leader, SAANS and Ilfat, former child laborer who was once abused, now working to fight for the rights of children living the same fate. Khemlal ji was all 6 when he began his life as a child laborer. At an age when children are just learning to read and attempting to string together alphabets and write their names, Khemlal ji was forced to break coal and pack mud into brick molds.
As part of SAANS and ILFAT, he hopes to work toward eliminating human trafficking. Mr. Rachna ji has joined us online. I would like to invite Ravikant ji to address this conference first. सभी लोगों को हमारा नमस्कार। When we want to talk about आजादी का अमृत उत्सव की बात कर रहे हैं और हम लोग एंटी ट्रैफिकिंग इंटरवेंशन पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं ये तो जरूर बोलूँगा कि भारत सरकार ने पिछले लास्ट 20 इयर्स में हम लोगों ने देखा है कि बहुत बदलाव हुई है। जो मानव अवैध व्यापार को लेकर के जो एक तरह से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसके बाद से लास्ट 20 इयर्स में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एंड उसमें बहुत सारी चीजें हुई। सबसे पहले तो भारत सरकार ने जो पेलेमरो प्रोटोकॉल जो है, जो यूएन प्रोटोकॉल ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसको रेटिफाई किया और उसके बाद से लगातार ग्राउंड्स बनते चले गए कि कानूनों को मजबूत करना, और साथ में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी मजबूत हुई, साथ में पॉक्सो एक्ट आया। तो चूंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बास्केट ऑफ क्राइम्स है, एक क्राइम उसमें नहीं होता, उसमें बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, तो महिलाओं और बच्चों के प्रति जो हिंसा के लिए जो कानून है वो लगातार स्ट्रेंथन किए गए हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो हम लोगों की सरकार है वो जगह जगह पे मजबूती लाई है। इसके अलावा जब से हमने पेलेमरो प्रोटोकॉल साइन किया, जो यूएन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसके बाद से हम लोगों की ऑर्गेनाइज क्राइम जो अप्रोच है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के वो लगातार बढ़ी है। और 2013 में जब निर्भया केस हुआ था, उसके बाद से जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया तो आर्टिकल सेक्शन 370 ऑफ द इंडियन पीनल कोड लाया गया और फर्स्ट टाइम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लॉ में डिफाइन किया गया। तो यह एक बहुत अच्छा कदम रहा, क्योंकि उसके पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन ही नहीं थी कहीं कानून में। और आप ये भी समझिए कि हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने आज से 70-75 साल पहले, और जब हम आजादी की अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हम लोगों को उनकी वो विजडम को देखना पड़ेगा कि इन दैट 70 इयर्स बैक उन्होंने यही एक अपराध था जो संविधान के कागज में डाला था। इन आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्होंने ट्रैफिकिंग, बेगार, बॉन्डेड लेबर, इन सब के ऊपर बैन करने की बात की गई थी, बोला गया था कि ये बैंड है। तो जब संविधान में, और वो भी इतनी उनकी विजडम थी कि उन्होंने इस क्राइम को फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में डाला था, जो कि हमारे संविधान का दिल होता है। और हम लोगों को कम से कम 60 साल लगा इंडियन पीनल कोड में प्रोविजन लाने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। तो 2013 में इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 370 आईपीसी आया और उससे काफी बदलाव हुआ। अब ट्रैफिकिंग डिफाइन हो गया है और उससे लॉ इन्फोर्समेंट को बहुत आराम मिला है, एक तरह से उनको आसानी मिली है कि लोगों को पनिशमेंट करने के लिए। साथ में हमारे यहाँ बहुत बच्चे गुम हो जाते थे। जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो मिसिंग चिल्ड्रन की भी बात करना होगा। और not only state governments and central government, but also the Supreme Court as well as various high courts, they have also taken landmark decisions. बचपन बचाओ आंदोलन की लैंडमार्क जजमेंट है 2013 की, जिसमें उन्होंने कहा कि मिसिंग चिल्ड्रन पे एफआईआर होना अनिवार्य है। पहले क्या था, बच्चे गुम हो जाते थे, एफआईआर भी नहीं होती थी। पर सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट आई 2013 में, बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार में, and in that judgment Supreme Court told that if children are going missing, then someone is making them missing, and it is not that children are just going missing, and therefore law enforcement need to register FIR, though it had lot of oppositions from various police agencies. मैं खुद 2009 में petition डाला था and that was rejected. I had gone to Supreme Court and said कि missing children पे FIR होना जरूरी है। But in 2013 जस्टिस अल्तमस कबीर की बेंच थी, उन्होंने ये लैंडमार्क जजमेंट लिया। और लैंडमार्क जजमेंट इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले बच्चे गुम हो जाते थे, कोई पता नहीं चलता था, ना सरकारी आंकड़ों में आते थे, वो मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट रह जाते थे। पर अब
2013 के बाद से जैसे बच्चे गुम होते हैं FIR होती है, और अब हम लोगों के सामने क्लियर एक डेटा आ रहा है कि कितने बच्चे मिसिंग है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पूरी तरह से स्टेट पुलिस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट इतना भी है जो हमारी अपनी, चूंकि ग्राउंड में हम लोग काफी काम करते हैं, ऑलमोस्ट 90% केसेस आर गेटिंग कैप्चर्ड नाउ। और जब हम लोग डॉक्टर नायर की NHRC की रिपोर्ट आई थी 2007 में, उसमें भी उन्होंने 2 तरीके के कैटेगरी बताया था बच्चों के मिसिंग होने का। उसमें एक कैटेगरी था चिल्ड्रन हु गो मिसिंग एंड चिल्ड्रन हु कंटिन्यू टू रिमेन मिसिंग। जो गो मिसिंग था और कंटिन्यू टू रिमेन मिसिंग, जो कंटिन्यू टू रिमेन मिसिंग था, वो बहुत ही एक तरह से चिंता की विषय थी, क्योंकि अगर भारत में 45 से 50 हजार बच्चे हर साल गुम हो जाएं तो ये बहुत ही चिंता की बात है। जब इतनी बड़ी सरकार इतने जगह हमारे ओके ठीक है, तो हम लोगों का ये मिसिंग चिल्ड्रन की जो जजमेंट थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये पहली बार हम लोगों को डेटा दिया कि कितने बच्चे मिसिंग हो रहे हैं। तो ये अगेन अब जो है, कहीं पर भी गवर्नमेंट्स कैन नॉट डिनाई कि हमारे यहाँ पर ट्रैफिकिंग नहीं हो रहा है। अगर 40,000 आज के डेट में भी अगर 40,000 चिल्ड्रन आर गोइंग मिसिंग एंड दे आर जस्ट वैनिशिंग, तो दैट इज द डेटा विच गवर्नमेंट नीड्स टू टेक कंसर्न एंड लॉज नीड टू बी स्ट्रेंथेंड, क्योंकि किसी का भी बच्चा गुम हो, 40,000 45,000 बच्चों की बात हो रही, यहां तो अपना एक बच्चा गुम हो जाए तो जान निकल जाएगी। तो यहाँ पर इतने ज्यादा बच्चे गुम हो रहे हैं, तो ये एक डेटा है जो कोई डिनाई नहीं करेगा और अब आंकड़ों में आ रहा है। जहां तक बात है कि जो आगे की बात है, तो मैंने जो बोला एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की नेटवर्क भारत सरकार ने बहुत मजबूती की है। अभी करंट गवर्नमेंट ने भी उसमें काफी पैसे लगाए हैं कि जगह जगह पे AHTUs को स्ट्रेंथन किया गया है। हमारी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें यह भी था कि उन लोग अभी नए कानून ला रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के, उसका मैं ड्राफ्टिंग मेंबर भी रहा हूं, और उसमें काफी हम लोग सोचे हैं कि उसमें कम से कम रिहैबिलिटेशन की बात को हम लोग उसमें चाहते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम को जो ऑर्गेनाइज क्राइम को वो करने के लिए, जो इंटरवीन करने के लिए हम लोग नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को नोडल एजेंसी बनाई गई है। क्योंकि आपको समझना होगा कि जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस होते हैं, अगर पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के एक थाने से अगर बच्चा गुम होता है और उस बच्चे की ट्रैफिकिंग दिल्ली से लेकर के मुंबई तक उस लड़की को बेच दिया जाता है, तो वो सुंदरबन का वो छोटा सा थाना इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगा। जब इंटर स्टेट केसेस होंगे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी चाहिए, और ये नेशनल प्लान ऑफ एक्शन 1998 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे बना था। तब से ये डिमांड है। भारत सरकार ने अभी प्रेजेंटली NIA एक्ट में चेंज करके नोडल एजेंसी NIA को बनाया है, और हम लोग पूरी तरह से एक तरह से हम लोग एश्योर्ड हैं कि अभी जो करंट सेशन में या आने वाले सेशंस में, चूंकि ड्राफ्ट लॉ रेडी है, एक बार तो लोकसभा में जा करके वापस हुआ, फिर उसके बाद वापस नहीं हुआ, वो लोकसभा एंड हो गई, तो उसके कारण वो बिल खराब हो गया, मतलब एंड हो गया, it died its natural death. Then again the government drafted it, and now we are in midst of the new law which is going to come. Future उसमें है। और जो एक और इम्पोर्टेंट इशू है, चूंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, यंग बच्चे हैं, मैं एक और भी चीज करूंगा कि कन्विक्शन रेट्स हमारे यहाँ बहुत लेस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइम्स में। इट इज इन सिंगल डिजिट्स। अगर इतने बच्चे गुम हो रहे हैं, इतनी सारी केसेस है, तो वाई कन्विक्शन रेट्स आर वेरी लेस, नंबर 1। और जहां तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिहैबिलिटेशन की बात है, रिहैबिलिटेशन के लिए हम लोगों को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बार, इतनी सालों से इतनी ज्यादा वुमेन पर फोकस है, पर रिहैबिलिटेशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कोई भी ऐसी प्लान कोई भी सरकार आज तक नहीं बना पाई, एक्सेप्ट स्वाधार और उज्ज्वला, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऑफ विमेन इन शेल्टर होम है। तो ये एक, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो व्हाई कन्विक्शन रेट्स आर सो लेस? Why should law enforcement not get sensitized and fight it with an organized crime approach? Why victims are not getting justice? Why there is no rehabilitation program specifically focused for victims of human trafficking? And why these victims have to just sent back to their home and left to do nothing? तो ये सब चीजें हैं जिसमें कि उनको लाइवलीहुड स्कीम से जोड़ा जाए। बहुत आशाएं हैं कि नई कानून जो आ रही है उसमें बहुत चीजों को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने एड्रेस करने की कोशिश की है। वी आर वेरी होपफुल कि थिंग्स विल इंप्रूव विद द गवर्नमेंट कमिंग इन विद द न्यू लॉ ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। थैंक यू सो मच।
Thank you, sir. The legal perspective is very insightful about this issue. मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा सुनीता जी को. नमस्ते, मेरा नाम सुनीता कौर है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। बीजेनी ग्रुप से मेरे कलेक्टिव के नेम, और साथ ही साथ मैं इल्फात के साथ मैं जुड़ी हूँ। और इल्फात के बारे में मैं थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ। इल्फात जो है वो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा सर्वाइवर कलेक्टिव है, जिसमें कई तरह की सर्वाइवर्स, ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स जुड़े हुए हैं। तो 13 कलेक्टिव लगभग है 10 स्टेट से, तो 6000 से भी ज़्यादा इसमें सर्वाइवर जुड़े हुए हैं अभी। तो मैं यहाँ पर आई हूँ सिर्फ एक बात बोलने के लिए कि बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन एक मुद्दा है जो बहुत ही ज़रूरी है एक सर्वाइवर्स के जिंदगी में। मतलब वो जब रेस्क्यू होकर अपने होम पे आते हैं, तो उसके बाद जो उनके साथ जो होता है कि उनको कई तरह की सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे कि लीगली तो कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता है वो जब अपने थाने पे आते हैं। मैंने मेरा खुद के एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, मेरे कई सारे साथियां हैं जो अभी भी मतलब उनके प्रोसेस चल रही है उनके लीगली। तो क्या है कि वो जब आते हैं अपने घर पे, फिर उनका जो केस वो सिर्फ एक डायरी वो जब मिसिंग हो जाते हैं, वो दरखास्त होता है थाने पे। फिर आने के बाद वो जब अपने एफआईआर दर्ज करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें होती है कि वो तो एक तो एफआईआर तो दर्ज नहीं करना चाहते हैं, दूसरी उसके साथ उल्टे सीधे बात बोलते हैं। और वो जब रेस्क्यू होकर थाने पे आते हैं, उनका 164 जो है वो होने नहीं देते। थाने वाले जो कांस्टेबल होता है ना, वो होने नहीं देते। तो उसके मेडिकल जो होता है वो भी होने नहीं देते। और केस में जो स्ट्रॉन्ग जो सेक्शन होता है वो धारा कुछ भी नहीं डालते हैं। इसकी वजह से ना बहुत सारी दिक्कतें आते हैं आगे जाके उनके केस के इन्वेस्टिगेशन ले उनको जजमेंट मिलने के लिए। जैसे मेरे पास एक लीडर्स है, वो मतलब एक जगह से कई जगह पे ट्रैफिकिंग हो गए थे। तो उसके बाद वो जब आए तो उनका 164 भी सही से नहीं हुआ, उनका मेडिकल भी नहीं हुआ, और जो धारा होता है वो सही से नहीं लगाया। और उसके बाद जो हुआ कि वो जब मतलब उनका पापा जो है रेस्क्यू करने के लिए उसको, वो लड़की बहुत चालाक थी, तो उनको फोन करते थे, पापा मैं यहाँ पे हूँ, आप आके मुझे ले जाओ। तो क्या होता कि उनके पापा पुलिस स्टेशन में जाते हैं। जाने के बाद पुलिस बोलते कि हमारे पास इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसे नहीं है, हम तो कैसे जाए। तो वो अपने लड़की को लेने आने के लिए घर भर सब कुछ बेच के चले जाते हैं। पुलिस के साथ साथ उनकी डिमांड पूरी करते करते, पुलिस के भी बहुत सारा डिमांड होती है, तो पूरी करते करते जाते हैं। मतलब ये सारा दिक्कत आता है, तो इन पे फोकस करना चाहिए। और आने के बाद वो लड़की को लीगली सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत सारा दिक्कतें मतलब उनको आता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो दिक्कतें आते हैं इसके लिए कोई सोल्यूशन अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और उसके साथ साथ विक्टिम कंपेंसेशन जो है उनको पता नहीं होता, और वो जो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है सही से, उसके लिए विक्टिम कंपेंसेशन उनको सही से नहीं मिलता है। उनको रेस्क्यू करने के लिए 30 लाख का मतलब खर्च हुआ, लेकिन उनके पास जो डेटा है बिल का वो 18 लाख रुपया है। लेकिन वो उसने मतलब दर्ज किया था 18 लाख का, उनको मिला सिर्फ 4.5 लाख रुपया। ऐसा होता है, बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, डालसा से वो सलसा जा रहे हैं, ऐसे करके प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लग जा रहा है, जिसके वजह से उनका जो पैसा है वो और भी खर्च होते जा रही है। लेकिन ये जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो एक सर्वाइवर्स को दिक्कतें झेलना पड़ता है। और रिहैबिलिटेशन के बाद जब आते हैं तो कुछ भी नहीं होता है हमारे देश में। मतलब रिहैबिलिटेशन के बारे में कुछ भी सही से कानून नहीं हुआ, वो गवर्नमेंट का स्कीम भी नहीं है जो सर्वाइवर्स के साथ जोड़ दिया जाए। तो इसीलिए मतलब सर ने अभी कुछ देर पहले बोला टिप बिल के बारे में, उनके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि टिप बिल आए। हम पिछले 2 मंथ पहले जो ह्यूमन राइट्स
डे था तो हमने सोचा कि पार्लियामेंट में टी बिल आएगा, तो इसीलिए हमने दिल्ली में आके कई तरह के हमारे लीडर से कई जगह पे वो सारा आया, टी बिल के बारे में चर्चा किया और फिर बहुत सारे एमपीज के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, मीडिया के साथ एडवोकेसी की है हमने। आगे हमारा जो डिमांड्स है हम उस एक मतलब फॉर्मेट बनाए हैं काफी सारे एमपीज और स्टेक होल्डर्स के साथ। लेकिन एक बात हमने देखे, जब रिहैबिलिटेशन की बात आती है तो कोई ध्यान नहीं देता है, बोलते किसके ये जिम्मेदारी हम किसके ऊपर डाले तो किसके ऊपर डाले। तो हमने बोला बहुत जी कि वैसे ही सरकार के बहुत सारे स्कीम है, अगर उसके साथ सर्वर को जोड़ दिया जाएगा तो बहुत कुछ फायदे हो सकते हैं। हम नए कुछ नहीं लाने के लिए बोल रहे हैं, तो आगे चलकर देखेंगे हम टी बिल जो आएगा तो उसमें क्या क्या है और बहुत कुछ हमारा जो नेचुरली हमने देखा जो प्रॉब्लम फेस किया उसके वजह से हमने सोल्यूशन ढूंढा और उसमें डालने के लिए कई जगह पे गए हैं, जैसे कि और बहुत सारा एडवोकेसी किया है हमने बताया। तो यही एक प्रॉब्लम होता है कि हम जितने भी कोशिश कर ले ट्रैफिकिंग के लिए, एक अच्छा सा बिल बहुत है हमारे देश में, कानून है, लेकिन उसको लागू करने के लिए मतलब जब उनका बारी आता है तो वो एकदम काम नहीं करता है। अगर ये टी बिल के बारे में हम बोल रहे हैं, इससे पहले जो थे वो काफी थे, लेकिन ये बिल काम नहीं आता है। तो अगर टी बिल भी आएगा तो हम बहुत सारे सर्वाइवर्स को उनके राइट्स के लिए लड़ने के लिए जाते हैं तो ड्यूटी बेयरर्स की ऐसे बोलते हैं कि कहाँ पर लिखा है अब दिखाओ। तो टी बिल जो है ना इसमें बहुत कुछ है, इसीलिए हम लड़ रहे हैं टी बिल को। ये अगर पास हो जाएगा तो बहुत हेल्पफुल होगा एक सर्वाइवर्स के लिए। और साथ ही साथ इनके इसके जो रिहैबिलिटेशन जो है इनमें, तो ये रिहैबिलिटेशन के बारे में आता है तो सिर्फ शेल्टर होम के बारे में बोलता है, लेकिन देखा जाए तो एक सर्वाइवर्स को जब घर आ जाता है उसके बाद कोई इनका पता नहीं चलता है कि क्या वो फिर से ट्रैफिकिंग का ही, तो हमने देखा है कि फिर से वो ट्रैफिकिंग हो गए। तो ये बड़े पॉइंट होता है। तो रिहैबिलिटेशन सरकार मतलब जितने भी कानून बनाया, अगर सर्वाइवर्स के रिहैबिलिटेशन के बारे में ध्यान नहीं देगा तो ये प्रोसेस चलता ही जाएगा और ट्रैफिकर्स को मौका मिलेगा फिर से उनको धमकाने के लिए और आगे उनको मतलब जो परेशानी जो पिछले वो झेला है वो फिर से वो उसके जिंदगी में आएगा। ऐसे हमने बहुत केसेस है देखा है, हमारे पास 6,000 से भी ज्यादा मतलब लीडर्स है जिनका ये अलग अलग ट्रैफिकिंग के इश्यू के साथ वो मतलब जुड़ गए थे, तो अभी वो रेस्क्यू होने के बाद अपनी जिंदगी में लड़ रहे हैं बहुत जोर से क्या कहते। और इसके साथ तो मैं बोलना चाहूंगी कि चाहे जितने भी चीज आए, रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सभी को बोलना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को हम चाहते हैं कि ये एक सर्वाइवर्स जो दिक्कतें झेलते हैं इसके ऊपर सर्वाइवर्स के बात सुनकर जो टी बिल आ रहा है उसके बारे में उसमें जो सलूशन होना चाहिए वो अगर कर दिया जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये सारा जो मतलब दिक्कत आता है मैंने बोला है बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारा दिक्कत होता है एक सर्वाइवर्स के जिंदगी में, अगर उसको पॉइंट करते हुए अगर सलूशन निकल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा एक सर्वाइवर्स को जिंदगी में जीने के लिए। और कोई हमारी ये बिल अगर आएगा तो हमारी मतलब जितने सर्वाइवर्स है आगे जाके बहुत कम आएगा और जो ट्रैफिकिंग अभी भी नहीं हुआ तो बहुत काम आएगा इसमें। तो हम यही बोल के अपने बात खत्म करना चाहते हैं। तो थैंक यू सभी को। Thank you, Sunita ji. Now I'd like to call Senior Advocate Pradeep ji to address this conference. Ms. Kemlal Kamatri ji, the ILFAT organization belonging to Sunita Karji and Ravi Kanji, our colleague, and Seva International. This is really, I'm surprised to see that a college is so much concerned about human trafficking, and such event is being organized, which is fruitful, which is actually a subject matter of concern
of not only India, but almost entire globe. Most of the countries are actually suffering with this. Despite having the law, despite having all the provisions, the solution doesn't come out because sometimes laws alone will not help you. The acceptance of the society, concern of the society, that creates something which gives you energy, which gives you morale to control the things. Like Dowry Act, take the example of Dowry Act or Widow Remarriage Act, when it was introduced. And now, can you actually 5 to 10% marriages are there where you will find that dowry is not there, but ultimately almost all the marriages, it has that kind of provision. Somebody may treat it as evil, someone may treat it as a custom, but whatever it is, but it is there in some form or other. As far as this human trafficking is concerned, I had an opportunity to work with Honorable Justice M.N. Venkat Chalaya, who is the chairman of India Legal Research Foundation, and those days he was chairman of National Human Rights Commission and former Chief Justice of India. Then Justice J.S. Verma, who is no more, he was also former Chief Justice of India and chairman of National Human Rights Commission. When these commissions were formed in India, they lacked structure. They did not have anything. Offices those days used to happen in BP House. BP, I am saying this BP House, Sardar Vallabhbhai Patel Bhavan. That is at this circle near Akashvani at first floor. Thereafter, now they have an independent building at near Bengali Market, near Mandi House, Sudarshan building. But those days, when they started working on police complaints against police, or there are some complaints of child labor and all, there was a lot of resentment in the society. Just take an example of Bhadohi, which was known for the carpet area, that was the carpet belt. There, almost every household was involved into it. And most of the kids who were actually involved into this carpet weaving and all, the tourists, or you may say the other organization, they may find them as a bonded labor. But actually, that was the question of their survival. They did not have means to survive. They did not have means to have even 2 meals. For them, if you say that, no, this is a kind of violation, because our government also, they don't have those kind of means. They are, even if they want to say something, that is a very good, that may be a good speech, but only speech cannot feed you. Only speech cannot provide you all the facilities. Then what Sunita was saying, that the complaints are not being registered. Again, I will say, I'm not going to being too technical. There should be 2 wings. One is investigation, other one is law and order implementation. In Delhi itself, the strength of Delhi police, who is protecting us, and who were posted in the police station, that is less than the officers and police constables who are deputed for the security. Almost more than that. The officers who are involved for the security of BVIPs, their number are more than the what they have deputed for the law and order and investigation. Now they have 1 police officer for investigation, that they tell SHO2 or some ISI or whatever. Can you imagine that such a big police station, huge population, 2-3 officers, they can investigate a matter? There should be a proper overhaul. This overhauling is required. We are not even covered by the CCTV cameras. Like in UK and all, I have seen that Crown Prosecution Service, they actually investigate in a scientific way. These days we have call details, we can measure the location, we can actually ascertain that when this vehicle came, when this person came out, who did what. We don't have access to all this. Forget about the smaller cities or towns, we don't have in national capital. So all these, there is lot of things which is required to be done, where we lack. We do too many things, but we don't do anything for basic infrastructure. Law and order is must.
You see, no investment will come to you unless you have law and order. No child will be protected unless you have proper law and order. Similarly, that organ dispute is there. This organ racket is there. We have seen the cases of Dr. Jeevan. I remember, Ravi Kanji, you were talking about the missing children in 2006-7 in Noida, Nithari case. I was additional AG of the state. I was handling that matter. I was shocked to know many people used to come, sir, my child is missing, what's happening? Poor people who are working in different households and all. You forget about that, you will find many human rights activists where you will find a child below the age of 16 or 18 working with them. I have seen recently at the age of, at the home of one former CGI, and I told in his ear, sir, if somebody see this, it will be a big headline. He is scared of the headline, not scared of actually the protection of child rights. So the problem is there in our system. And our society is also a kind of peculiar society where we have a mixture of everything, and that makes India, that makes us beautiful. Like 6th schedule is there in many northeastern states where all these tribal rights are protected, where we have all kind of behaviors where I don't want to go into it because there is so many customs which they follow. Sometimes various illegalities are covered in the name of custom. So customary law is there, but it should not be at the cost of fundamental rights and human rights. Our policing, our health services, like even if you want to take a kidney, suppose a family member of yours is suffering with kidney ailment or liver ailment, you want some donation. Somebody, even if he is out of passion, wants to give you, he cannot give you. There is too many formalities. All those formalities are actually required to be rectified. It should be proper. It should be reasonable. It should not be in a way that it make you suffer. Because then people will start doing some illegality because they have to find a way. So this assembly, which is a assembly of learned persons, and I can see that all kind of representative of society are there. Youth is there, teachers are there, social workers are there, even the survivors are there. So in different means, I am the first generation lawyer. I got my study from my village. We did not have any access to good schools. In my school, there was no teacher till class 8, and we had no building in that school. Somewhere, if I mention, they don't believe it, but this is the actually truth, what we have faced. Now we have a building because I have constructed it in the village. Otherwise, there was no building. No question of hospital, no question of electricity. Even first electricity connection, I got it when I was additional AG of UP. Prior to that, even no electricity connection was there. So all these facilities are required. At the same time, I will conclude. Don't stare at me. So basically, in my opinion, that any failure of the system is failure of the society, not of the government. Because government is also part of the society. We all have to create a kind of awareness, a pressure, which reflects in the behavior of our democratically elected leaders, and they think about India and to make the India as a civilized society, which is great. Like sir said, that there are too many perceptions are there. But same time, I request, madam, I tell you that if there will be some baseless allegation, false accusations, then the purpose of enacting a law will be defeated. So there should not be baseless allegations. Similar kind of punitive action should be taken against a person who is actually accusing somebody baselessly, just taking the advantage of law. Because one false accusation takes away all the rights. Like you just think about TADA, POTA. These laws were made to counter terrorism. What happened later? Officials started framing each and every criminal in the TADA and
quota, and then finally Parliament was actually forced to repeal that. That should not happen. The allegations are, if you are making allegation, there should be a proper measure, there should be a proper system by which you can ascertain. There should not be any accusation which actually ruin the respect and reputation of a person who is have deep roots in the society, and ultimately by that you are harming the entire basis, entire foundation of our fundamental rights. So I will not take much time. So I wanted to say something more, but it's better that education is required, madam. Each and every child should be educated. I am thankful to my parents and my teachers that at least they send me to the school. I had access to the school building. Later, till class 8 we did not have, but later we had access. Now I am here to speak. But that was only possible because I went to school. So children has to go to school, only midday meal cannot attract them. Midday meal is one thing where you can provide something, but that is also again, they start learning corruption from the age of 3 to 4. That is not a good age to learn all these nitty-gritty and the cruel realities of society. I am really grateful that you all invited me, and this is a good occasion. This is a very good subject. I have already opened a page on our Supreme Court website where we actually help this kind of any kind of complaint in the similar matter. If any one of you find a case where you have investigated and found that yes, there is something truth and we must do it something, I assure you that we are there to work on it. We are there to help everyone out, and a legal aid center has already started working. Nowadays, our Supreme Court is also having this National Legal Services Authority. They have many centers of free legal aid. The state legal services authorities are there. Even this pro bono services. None of our senior advocates whom you have to pay 5,50,000 per appearance, they charge anything. It's completely free. The moment you give a complaint, and if there is substance, we don't charge it. So thank you so much for inviting me. And madam, I am on time. Thank you. थैंक यू सो मच सर. मैं खेमलाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे. आप सभी को सादर जय भीम. तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा. 2013 में मैं एक चाइल्ड लेबर था और तस्करी का शिकार हुआ था. लेकिन बचपन से ही मैंने पढ़ाई में अपना रुचि रखा था. जैसे कि सरकार कुछ देर पहले एक साथी ने बोला था कि सिर्फ अभी बोले कि मिड डे मील, तो सरकार सिर्फ मिड डे मील के लिए खोला था. तो मैं तस्करी होने के बावजूद भी 8वीं पास हो गया वहाँ से, और मैं तस्करी था. उसके बाद भी मैंने अपना पढ़ाई जारी रखा. 2013 में रेस्क्यू होने के बाद भी, और 12वीं पास किया. उसके बाद प्राइवेट से कॉलेज पास किया. उसके बाद कलिंगा यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया. फीस बहुत ज़्यादा था, लेकिन सर्वाइवर है करके फीस को माफ़ कर दिया, जिसके कारण से आज मैं सोशल वर्क में मास्टर डिग्री हासिल कर लिया है. तो मैं उस कॉलेज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे कॉलेज भी जो सर्वाइवर के सपोर्ट में आ रहे हैं. तो बेसिकली यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव में 3 चीज़ कि पहले बंधुआ मजदूर क्या था, वर्तमान में क्या है, और भविष्य में इसका रूप या फिर स्वरूप कैसे होगा. तो पहले जो बंधुआ मजदूर होता था वो खेतों में पाया जाता था. जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनके यहाँ पाया जाता था. उसके बाद उसका स्वरूप बदल गया. उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी आ गया. अब कंपनी में भी इलीगल तरीके से वहाँ पे मजदूरों को तस्करी के करके ले जाया जाता है, क्योंकि
वहाँ पे कोई भी MOU साइन नहीं होता कि आप इतना घंटे काम करेंगे और इतना वेतन मिलेगा या फिर ये फैसिलिटी दिया जाएगा, कहीं पर भी नहीं। आप कोई भी कंपनी अभी जाके देख लीजिए, आपको कहीं पर भी 8 घंटे वाला नियम तो है ही नहीं। आप केस भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर, वो सीधा प्रधानमंत्री से संपर्क है, सीधा बात बोला जाए तो। आप उनके ऊपर केस करेंगे तो केस FIR नहीं होगा। अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो धरना प्रदर्शन से सांत्वना बस मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ मिलता नहीं है। और अब ये स्वरूप बदला है। आपके ये दिल्ली के आसपास आगरा, पलवल साइड, बलमगढ़ साइड ईट भट्टा का जो कंपनी है बहुत सारा है। तो इन ईट भट्टों में छत्तीसगढ़, बिहार, इन सभी राज्य से बहुत ज्यादा मात्रा में मजदूर आते हैं और ये वास्तविक में तस्करी के शिकार हैं। पता है क्यों? क्योंकि किसी का कोई एग्रीमेंट नहीं है। उनके साथ कम से कम तो 20% ऐसे बच्चे होंगे जो 14 से कम वर्ष के होंगे, जिनको भारतीय संविधान के अंतर्गत फ्री शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो ये कहीं पर दस्तावेज में सिर्फ लिख देने के लिए नहीं होता है। इसमें युवाओं को, जैसे कि सुबह ही फर्स्ट रिस्पोंडर के बारे में बात किया जा रहा था, तो जहाँ पे ईट भट्टा या फिर कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे अगर बच्चे देखते हैं तो वहाँ आसपास के नजदीकी स्कूल में भर्ती करके उनको बचाया जा सकता है। गवर्नमेंट का कानून बना है, बस इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग उसको चाहते नहीं है। हम कभी चाहे ही नहीं है कि, क्योंकि ये तो हमारा समस्या है ही नहीं। जब अपने ऊपर आती है तो फिर बड़े बड़े संगठन भी खोजते हैं कि हमें धरना प्रदर्शन करना है, पुलिस के पास जाना है, मंत्री के पास जाना है, लेकिन जब वो दूसरे का समस्या है तो बस न्यूज देखे, खत्म। भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग है एक, जो मानव तस्करी को रोकने में हम भूमिका निभा सकता है भविष्य में। वो कैसे? आप प्रत्येक मूवी के 2 घंटे का मूवी रहता है, उसको 3 घंटे में खत्म करते हैं। 1 घंटे क्या रहता है? विज्ञापन रहता है। विज्ञापन में क्या रहता है? दाने दाने में केसर का स्वाद। और क्या रहता है? और उसमें सिगरेट का दिया जाएगा, है ना, शराब का दिया जाएगा। कभी संविधान और कानून के बारे में दिया उसमें, जिससे देश चलता है? नहीं दिया। हम क्या जानेंगे? जो दिखाया जाएगा। और कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो नाम के मीडिया चैनल्स है, बाकी विज्ञापन चलते रहता है, ये दुनिया भर का। तो प्रोडक्ट्स का जो सामान 10 रुपए में मिल जाएगा, उसको विज्ञापन करके 100 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये भी एक जिम्मेदार है तस्करी का, क्योंकि हर क्षेत्र को जब तक तस्करी के मामले में अगर आगे नहीं आएगा, कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे सूचना विभाग से शायद कोई नहीं है, तो हम सेवा इंटरनेशनल से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब जब आगामी कभी भी होगा तो सूचना विभाग को भी इनवाइट करें, ताकि उनको भी शामिल करें, क्योंकि हो सकता है वो विज्ञापन देने में अपना रुचि दिखाए। और अगर दिन भर में अगर 2 विज्ञापन दिखाए तो कम से कम लाखों लोग एक साथ देखेंगे। मान के चलिए आज 365 दिन में एक आर्टिकल दिखाया जाए तो साल भर में कम से कम आधा बुक कवर हो जाएगा। कम से कम तो जानेंगे कि भारत में एक संविधान नाम की चीज है जिससे देश चलता है, और उसके अनुसार जो भारत के जितने भी कानून हैं वो चलता है। और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी और हम लोग आ गए। अब थोड़ा NGO भी इसमें भागीदारी है, क्योंकि संस्था का रजिस्ट्रेशन क्यों कराए हैं? तो समाज सेवा करने के लिए लगाए हैं, तस्करी रोकने के लिए लगाए हैं, बाल विवाह रोकने के लिए बनाए हैं। लेकिन होता क्या है, जो प्रशासनिक अधिकारी और NGO, इन दोनों का कभी मेल नहीं होता। वास्तविक में इन दोनों का कभी मेल हुआ ही नहीं है। NGO का रजिस्ट्रेशन करा लिए, लेकिन कभी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, नहीं तो आपका संस्था का रजिस्ट्रेशन
खत्म कर दिया जाएगा, आप रोड पे आ जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में समन्वय बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि ये तस्करी को रोका जा सके। इसके अलावा इस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये भी एक इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैसे कि हमेशा से देखते आए हैं कि जब रिहेबिलिटेशन की बात आती है तो क्या करते हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बढ़ाई, छोटा छोटा काम। आप लोग सोशल वर्कर हैं, आप कोई स्व सहायता समूह नहीं है, तो आप क्यों थोड़ा बड़ा क्यों नहीं सोचते? भाई डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, फ्री होता है ना। इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, शिक्षक बनाइए। आखिर आपके पास इतना बजट होता है कि आप कर सकते हैं ये चीज, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि हमें तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई में ही सीमित रहना पड़ता है। और हमें एक प्रोजेक्ट मिला है कि 100 लोगों को अवेयरनेस करना है, तो आप 100 से 101 नहीं करेंगे। पिछले बार मेरे साथ ये हुआ भी। HDFC एक स्कॉलरशिप है, तो एक संस्था है जहां मेरे क्षेत्र में काम करता है। मैंने उसको बोला कि भैया एक जने का HDFC के स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, तो सामने वाला बंदा क्या बोलता है, भैया मेरा टारगेट पूरा हो गया है। ये है एनजीओ का। तो कहीं ना कहीं आप एनजीओ को भी इसमें बढ़ाना पड़ेगा और कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी इस चीज को लाना पड़ेगा। मैं इसी के साथ अपना थैंक यू। Thank you, Khemlal ji. We are now open to questions. If you have any questions, you may ask the panelists. Please introduce yourself before asking the questions. Thank you. मैं रोशनलाल जी से मेरा क्वेश्चन है। मैं भी सिनेमा में सुना था कि 52 सेकंड में जो राष्ट्रगान होता है उसके लिए खड़ा होने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। फंडामेंटल राइट मान रहे थे कि राष्ट्रगान हो सिनेमा में तो खड़ा हूं कि बैठा रहूं, तो उनको कैसे संविधान पढ़ाएंगे? हेलो, अभी ये चीज किए नहीं है। जो धर्म के बात है, किसको पता नहीं है कि देश में गीता भागवत है? किसको नहीं है पता? यहाँ पे हाथ खड़ा कीजिए। रामायण है इस देश में, हाथ खड़ा कीजिए। कि किनको नहीं पता है वही कीजिए। क्यों है बताइए? क्योंकि ये सिर्फ सूचना ये टीवी के कारण है। पहले आदिवासी लोग जंगल में, उनको पता नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे टीवी नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, मोबाइल आ गया। तो आप भाई, सूचना अर्थात इतना बड़ा भारत सरकार है तो उनके पास ये बना था, तो उसका 10 एपिसोड है, यूट्यूब पर उसको दिया गया है। कभी दूरदर्शन पे दिखाया गया है? नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि संविधान को आप तक, हम तक पहुंचाना नहीं चाहते। क्योंकि हम हक अधिकार मांगेंगे तो भैया वो कुर्सी पे बैठ के क्या करेंगे? फिर वो दाल रोटी जो फ्री का चावल में खुश कर दे रहे हैं, आप जॉब मांगेंगे 20,000 महीने का, तो फिर वो कहाँ से देगा? तो इसलिए वो करना नहीं चाहते। करना हमें है क्योंकि हम और आप सब सोशल वर्कर हैं। आप अभी नेक्स्ट जनरेशन है, अभी हम सब अभी है, एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये हो सकता है, सिर्फ एक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है जो इस चीज को कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता। और इसमें एनजीओ का और प्रशासन का बहुत ज्यादा जरूरी है। जी थैंक यू।
Anybody else has any questions? So I have one more question. So access to justice is key issue for trafficking victims. How can court become victim friendly? How we can make courts more victim friendly? Yes, sir. Victim friendly only. The only issue is that when a complaint is brought before the court, in which forum you are going, in what way you are going, that is important. We all require proper legal education that should be made mandatory from the class 8th or 9th, at least from the high school, intermediate, it should be there. Because unless you do that, many of us, they don't understand, they don't know their rights. In every police station, if you go, you will find that there is a person who is expert of writing FIRs. You narrate your actually ordeal to him and he will type or he will write your complaint and give it to the police officer. I am not talking about Delhi. Delhi also it may be having, but in most of the states, you will find 1 or 2 persons who are experts of the FIR only. Yes, supplementary. Yes, ma'am. Yeah. So you just mentioned that it's already courts are really friendly to us. So is there anything that courts or our judiciary is making efforts that might be some kind of recommendation that we are also pitching from our side to education ministry or to the government that yes, we needed this thing in our education system? Yes, ma'am. Now what we have done, I already told you about the NALSA and SALSA, National Legal Services Authority and the State Legal Services Authority, of which our number 2 judge, whoever is number 2 judge in Supreme Court of India, he is the chairman of NALSA. There is a number 3 judge, he is chairman of Supreme Court Legal Services Authority. There is a number 4 judge, he is in charge of Mediation and Conciliation Committee. Similarly, in the states, you will find number 2 judge, other than the chief, the senior most judge of the High Court, other than Chief Justice of that High Court, he is the chairman of State Legal Services Authority. For that, any complaint, any request, if it is made to them, they make sure that the best of the lawyers, they are given to you. Sometimes courts, in the court proceeding itself, they appoint someone, whoever they find that is the senior person, they appoint them. In my opinion, if its courts are convinced, if there is no discrepancy in the statements and facts also support, they consider it. Only some politically motivated matters are there sometimes just because of maybe lack of education or something, it may be correct also, but sometimes they actually don't consider it. My brother, yes, ma'am. We have seen cases which are going still 6 years down the line for justice. As you know, until unless justice is given, victim compensation is not given to a survivor. I just wanted to ask you, who has the onus to prove that he or she is a victim? Is it the person itself or the state? It's the state's responsibility to give protection to the person. I told you that there should be a proper, and again, I will say it's lack of investigation, because our police department is such that in Delhi itself, I told you that there are more persons, officials involved in the security than to the protection of us, and then lesser are involved in the investigation. So there is lack of investigation. But anyhow, if you have some evidence, if you have some documents by which you can actually establish your claim or your facts, then 100% our team is there. Our Supreme Court website also gives you complete details. Again, I say that there is no proper this campaign for this, because they don't know it that we are doing all this. But if it is made aware, the complaints may be received. And if there is a specific case, I request you to please give it to us.
and it will be done speedily. Only these matters should be given to fast track courts, and fast track means it's actual fast track. You know, when this may be made consumer courts, we were thought that yes, in 90 days we will get justice. It's not happening. So again, pendency is there, a long queue is there because of our population. There are too many factors work for this, and we all are part of the society only. But if there is something sensitive, you please give it to us. It will be done. It will Sure, be. sir. Definitely. I hope the TIP bill does have the fast track courts. It's a very important point, and I will take your number because there are too many cases. Just to take listen. it now. Don't. You should do it immediately because there should not be. Yeah, I'll just give you mine as well. But I just wanted to bring an attention to an important topic जो बहुत miss होता है. मैं हिंदी में बोलूँगी. हाँ, मैं भी हिंदी में बोल सकता हूँ मैडम, भोजपुरी में भी बोल सकता हूँ. Thank you. चलिए बहुत बढ़िया. तो सर एक हमने चीज देखी है, जब जहां तक लीगल केस जस्टिस की बात आती है, विक्टिम को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है विटनेस प्रोटेक्शन में. वेस्ट बंगाल का सुनीता का एग्जांपल लेती हूँ मैं, वो वेस्ट बंगाल से आती है. उन्होंने एक ट्रैफिकर जिनका केस वो बता रही थी लड़की, उनका जस्टिस मिला है, और उसमें ये पता क्या है, जो उनके ट्रैफिकर था उस एरिया का, उन्होंने 20 लड़कियों को ट्रैफिक किया था अलग अलग समय पे, बट वो खुले आजाद घूम रहे थे और लास्ट में जाके उनको मिला. ये क्वेश्चन उठाता है विक्टिम विटनेस प्रोटेक्शन पे. अभी जो टिप बिल का ड्राफ्ट है, क्योंकि सर ड्राफ्टिंग कमेटी में भी रहे हैं, वो बिल हमने तो कहीं शब्द देखा नहीं. तो क्या वजह है कि विटनेस प्रोटेक्शन के ऊपर कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, उसके बारे में बात नहीं होती, एंड आप इसको फ्रॉम योर चेयर एंड योर रिस्पॉन्स, आई मीन दी मैडम, ये बेईमानी, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि आप देखिए, करप्शन जब तक दूर नहीं होगा उसके लिए भी एक सिस्टम चाहिए. आप जहां भी जाएं करप्शन होता है. जो पुलिस ऑफिसर है वो जो वहां के मिले, जैसे कि थाने वाले हैं, उनको शराब की दुकानों से पैसे आते हैं. अगर आप जाके बोलेंगे कि 7 बजे के बाद दुकान खुली है, तो थानेदार आपकी बात नहीं माने, क्योंकि वहां से पैसे आ रहे हैं. ऐसे ही कई और जगहों से पैसे आते हैं. तो जब तक आप वहां पर वो सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक बाकी चीजें भी ठीक नहीं होने वाली. तो करप्शन से बहुत दिक्कत है. आप जो बोल रहे हैं कि 20-20 लोगों को करने वाला भी आजाद घूम रहा है, वो आजाद नहीं घूम रहा है, वो पुलिस की मदद से भी कई बार घूमता है. तो इसलिए जो सिस्टम में कमी है उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते उस तरह से. लेकिन अगर फिर भी मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई ना कोई आवाज तो उठेगी, ऐसा नहीं हो सकता. रविकांत जी भी इस पे प्रकाश डालेंगे, मैं इनको भी दे रहा हूँ माइक, ये जरा विस्तार से प्रकाश डालेंगे इसके ऊपर. थैंक यू सर. बहुत ही सही क्वेश्चन उधर पूछा गया था. और रिगार्डिंग एक्सेस टू जस्टिस में देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि लॉ जितने भी सामाजिक कानून बने हैं, जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, पॉक्सो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, जितने भी समाज से जुड़ी हुई कानून है, उसमें कन्वर्जेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है. सब wings of the government needs to work together. Courts are justice dispensing system. कोर्ट्स में एक्सेस टू जस्टिस की जब बात आती है तो हम कंप्लायंसेस ऑफ लॉ की बात करेंगे, वेदर द इन्वेस्टिगेशंस आर हैपनिंग प्रॉपरली और नॉट. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, विक्टिम को जो राइट्स मिलने हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं, जो चीज फॉरेंसिक्स एविडेंस है वो कलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं. जब सारी चीजें सही होके जाती हैं तो कोर्ट्स विल डिस्पेंस जस्टिस. कोर्ट्स के हाथ बहुत टाइड अप होते हैं इन टर्म्स ऑफ जो चार्जशीट आती है उस पर वो काम करते हैं. तो हम जब एक्सेस टू जस्टिस की बात करते हैं तो हम कंप्लायंसेस की बात करते हैं कि बच्चों को, चाहे महिलाओं को, जब उनके ऊपर केस होता है, जब उनके ऊपर विक्टिम जब वो हो जाते हैं, जब उनकी केस होती है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन सही होना चाहिए. उसमें जो उनकी इंटाइटलमेंट्स हैं, जैसे विक्टिम कंपेंसेशन है, विटनेस प्रोटेक्शन का आपने बात किया, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बहुत सारे राज्यों में बनाया गया. अभी सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट आई है जिसके लेकर के डालसा एंड नालसा दोनों इस पर काम कर रहे हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीजें, अब जैसे वनरेबल विटनेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट किया कि हर कोर्ट्स में वनरेबल विटनेस हम लोग एक वो बनाएंगे जहां पर वनरेबल विटनेस के लिए प्रोटेक्शन रहेगा और उनको देने के लिए वहां पर सारी सुविधाएं रहेंगी. तो इस तरह की जुडिशियरी तो लगातार स्टेप्स ले रही है. The problem is with our law enforcement and implementation of law and how the law is getting implemented. और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, पॉक्सो कानून में इतनी सारी compliances है पुलिस के लिए कि वो हो नहीं रहा है ग्राउंड पे. सिमिलरली और भी जितने कानून देखेंगे तो वहां पर एक्सेस टू जस्टिस के लिए वो सब चीज अगर होगा
तो यहाँ पर कोर्ट्स जो हैं आपको न्याय देंगे। तो सिस्टम में हम लोगों को कन्वर्जेंस लाने की जरूरत है। विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, कमीशंस हैं, इतने सारे, सबको मिलजुल करके काम करेंगे, तब जाकर के एक्सेस टू कन्वर्जेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सेस टू जस्टिस। थैंक यू। I have a question for you, Ravikanji. To you, sir. What measures can be taken to counter human trafficking in rural areas? To Ravikanji. I mean, the level of awareness in urban and rural areas are quite different. So what measures can be taken for the rural areas? देखिए, अवेयरनेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में एक स्कीम चलाया गया, स्वयं सिद्धा इनिशिएटिव। स्वयं सिद्धा इनिशिएटिव जब चलाया गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ और साउथ 24 परगनास ह्यूज हॉटबेड ऑफ ट्रैफिकिंग है। करीब करीब हर गांव में 25 से 50 ऐसी लड़कियां हैं जो गुम हैं, जिनको सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए उनको उठा करके बेच दिया गया है। उन सब जगहों में जब वहां की सरकार ने स्वयं सिद्धा की इनिशिएटिव शुरू किया और गांव-गांव में जाकर के स्कूल लड़कियों से पॉक्सो और ट्रैफिकिंग की बात जब पुलिस, बाल कल्याण समिति के लोग, एक एनजीओ जाकर के बात करने लगे, तो कम्युनिटी से ही काफी कंप्लेंट्स आने लगे कि कम्युनिटी से ही ट्रैफिकर्स के मूवमेंट पता लगने लगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा उस स्कीम के कारण जो एक मास अवेयरनेस स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे, नॉट ओनली स्कूल गोइंग नहीं, एडोलेसेंट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, मतलब कि क्लास 8 के अबव के बच्चों पर वो जब टारगेट किया गया, वो मैसेजिंग किया गया, तो उसका बहुत असर हुआ। सिमिलरली अभी कोविड के बाद ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन लगातार बढ़ रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब चीजों के माध्यम से ट्रैफिकर्स बच्चों को अप्रोच कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि मास अवेयरनेस, बॉलीवुड के अगर स्टार्स इस तरह की बात करते हैं, जो मास मीडिया की जो हमारे ब्रदर बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन सब चीजों में जितनी हम ज्यादा बच्चों को एडुकेट कर पाए इन सब चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा असर होगा। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग संगठित अपराध है। संगठित अपराध को लड़ने के लिए हम लोगों को सूचना जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, जितने बच्चों को अवेयर किया जाए, क्योंकि अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, ल्योरमेंट, फ्रॉड, कोएर्शन, डिसेप्शन, ये सारी चीजें होती हैं जब सूचना नहीं रहती है। कोई ल्योर तब होता है जब उसको जानकारी नहीं होता है। किसी के ऊपर बल तब प्रयोग होता है जब उसको जानकारी नहीं होता है। तो जानकारी बहुत जरूरी है और अवेयरनेस कैन बी अ बिग फैक्टर फॉर प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। Thank you, sir. So I'd like to conclude this session. One question. Sure. Can someone hand over the mic, please? Thank you. Previous session में भी शायद वो ठीक से एड्रेस नहीं हो पाया था। मैंने पूछा था क्या KG to UG और PG in any syllabus क्या इस तरह के अवेयरनेस के चैप्टर्स कहीं लगाए गए हैं या लगाए जाने की योजना में कुछ लिखा है? जो स्टेक होल्डर है, और क्या मतलब कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि सीधे उनको उसी तरह बिल्कुल मेन स्ट्रीम पे ला करके अवेयर किया जाए, स्टूडेंट एडुकेट किया जाए? एडुकेशन में जब तक लाएंगे नहीं तो एडुकेट होंगे कैसे? क्यों नहीं सिलेबस में लाया जाता? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं आप लोग? सर्टेनली बहुत अच्छी प्रश्न है। मेरे ख्याल से कुछ राज्यों में इसका प्रयोग किया गया है। महाराष्ट्र में हमको पता है कि उसको स्कूल सिलेबस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात की गई है। वेस्ट बंगाल में इसको लेकर के इसको क्लासेस में डिस्कस किया जा रहा है। तो सर्टेनली ये आपकी बहुत अच्छी सजेशन है, और जब तक हम अपने बच्चों को ये सब चीज के बारे में नहीं बताएंगे तो जब और इन सब इश्यूज को हम पुशिंग कारपेट के नीचे रखेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। अभी देखिए फरीदाबाद में एक बच्चा के अभी सुसाइड कर लिया था, आप लोग पढ़े होंगे अखबारों में। उस बच्चे के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था स्कूल में, और वो बच्चा कोई प्रिंसिपल ने, उन बच्चों ने जिसने उस बच्चे के साथ अपराध किया था, उन बच्चों को वहां से हटा दिया गया स्कूल से। जबकि पॉक्सो कानून बोलता है कि जैसे ही स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि इस बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ तो इसको तुरंत लॉ एनफोर्समेंट के सामने लाना चाहिए था, मैंडेटरी है, पर वो हुआ नहीं।
और उसके कारण उस बच्चे को लगा कि हमारे साथ तो न्याय हुआ नहीं, और 3-4 महीने के बाद उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको लगा कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब जहां पर बात आती है यहाँ पर कि क्या हम लोग स्कूल में इसके बारे में बात करें, और उसमें भी एक और मुद्दा आया था, जेंडर ओरिएंटेशन। उस बच्चे को ऐसा लग रहा था कि हमको उस इंसिडेंट के बाद कि हमारी जेंडर की कोई इश्यूज आ रही थी, और उसमें तो ये सब चीजों के बारे में जब स्कूल में कोई आउटलेट नहीं मिलेगा बच्चों को बात करने के लिए, तो एंड रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जब इस तरह की इश्यूज में आ जाते हैं तो उनको एंड रिजल्ट ये होता है। तो इसलिए स्कूल में इन सब चीजों को हम लोगों को छुपाने की जरूरत नहीं है, साइलेंस को खत्म करने की जरूरत है, सेक्सुअलिटी की बात करने की जरूरत है, सेक्स एजुकेशन की बात करने की जरूरत है। दीज आर राइट टाइम, बिकॉज पहले हमारे जनरेशन में व्हेन वी वेर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ये बहुत अच्छे से उठता था, पर उस समय उतना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी उतनी बड़ी नहीं। आज के डेट में आप करें चाहे नहीं करें, आपके बच्चे सब चीज सीख रहे हैं, तो बेटर है कि एडुकेट देम विद द राइट पीपल हु कैन गिव देम द राइट नॉलेज, अदरवाइज वो डिजास्टर हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Can I add something here? Sure. Actually, Rajesh ji ने ये question सुबह भी पूछा था, so I was looking at the new education policy 2020 में जो जिसके ऊपर बहुत सारा debate हुआ था, and 2022 से the new education policy will be implemented in the educational institutions. So I was looking at some of the components of the new education policy, and I guess some of the aspects which Rajesh ji is pointing out have been taken care of. So there are 4 chapters on school education, wherein it's mandatory for the syllabi revision committee to include moral education, sex education, issues related gender sensitization, and other aspects that have to be a part of the curriculum, and also experiential learning, taking students out of their schools to know that these things are prevalent, because unless and until you show them the places where these things are happening, they probably might not get enough information. So I guess education policy 2020, which is now being implemented, has some element of it, and probably there needs to be some more deliberation, because some universities have been allowed to add or make few amendments when they start implementing the course structure, and there is a lot of liberty to educational institutions also to run supplementary courses, wherein if an educational institute wants, it can add such courses, and I think higher education institutes have been given enough liberty in that account. So 2022, we might see certain changes. Thank you, ma'am. Now I request Shatakshi Singh, Project Executive Seva International, to present the vote of thanks. Namaste. Namaste. Firstly, I wish to thank Dr. Rama, Principal Hansraj, for her continuous support. I would also like to thank Dr. Prabhanshu Oja, convener, for his guidance. I would like to thank Ravi Kanji, Sunita Karji, Pradeep Raiji, Khemlal Khattarji for being part of our conference today and sharing their experience and thoughts with us. I would like to extend my gratitude to all our panelists for taking time out of their busy schedules to be here with us. I would like to extend my special thanks to Shri Shyam Pandeyji, General Secretary, Seva International, ICCR, and team of Seva International for their assistance in organizing this conference. Last but not the least, I want to thank all our delegates who joined us today. I hope we all untie to work towards ensuring a harmonious and happy society for all. Thank you, everyone. We will be beginning the valedictory session shortly. Please remain seated while we make arrangements for the next session. Thank you. Please do join us after 5 minutes of break. Thank you.
Namaste sabhi ko. I request you all to be seated, please. We are beginning shortly. Good evening to all. On behalf of Seva International, ICSSR and Hansraj College, I welcome you all to the valedictory session for the CHETNA Conference of Human Exploitation and Trafficking for National Awareness. I kindly request all our esteemed dignitaries to grace the dais, please. Dhanyavad. I will take this moment to welcome and introduce our esteemed guest. I would also like our team to felicitate our guests. We have with us first our chief guest, Shri Harsh Chauhan, who is also chairperson of National Commission for Scheduled Tribes. Harsh Chauhan ji is the chairperson of the NCST. Sir is an engineer by profession and also completed bachelor's in journalism and mass communication. Sir has a rich experience in the field of social work. Sir was a member of the National Executive Akhil Bharatiya Vanvasi Kalyan Ashram and convener of the Janjati Suraksha Manch. Sir is also the founder of Shiv Ganga Samagr Gram Vikas Parishad Jhabua, which is an empowerment movement for the tribal people of Jhabua for sustainable village development. We welcome you, sir, to the conference. We also have with us our guest of honor, Shri Arun Sopti ji, who is the Deputy Secretary of Prison Reforms and Anti-Trafficking Unit of the Women Safety Division at the Ministry of Home Affairs. Sir has experience of coordinating the Ministry of Home Affairs interventions in the area of human trafficking. Sir has experience in collaboration with international and regional institutions in protection, rescue, and repatriation of trafficking victims. We welcome you, sir. I would now like to welcome our chair and guest of honor, Honorable Jyotika Kalra ji. Jyotika Kalra ji is the member of National Human Rights Commission. Before joining the commission, ma'am was practicing advocate on record with the Honorable Supreme Court of India. As an advocate, she has actively championed for human rights before the Supreme Court of India. She is also the founder and former president of Chetna Causes of Women, our partner in this conference. Next, I would like to welcome Shri Abhishek Tandon ji, who is the Deputy Director Research at ICSSR. Abhishek Tandon ji is currently working as Deputy Director Research at ICSSR, Ministry of Education. He is also a senior faculty member at Department of Financial Studies, Shahid Sukhdev College of Business Studies, University of Delhi, and visiting faculty at Department of Business Economics, University of Delhi. He has teaching experience of more than 10 years. We welcome you, sir. Next, I would just like to introduce our partner organizations, which we are also one of the participants as part of the organizing committee from Seva International. So I would like to welcome Shri Shyam Parande ji, who is the Global Coordinator and Secretary for Seva International. He is the International Coordinator and Secretary for Seva International for since we began for the last 25 years. He is a civil engineer by profession and has been a community leader and social worker all his life. He has led the work of thousands of volunteers and numerous service activities in more than 20 countries, including Europe, Southeast Asia, and the Americas. He has been actively involved with Indian diaspora through various organizations like Antarashtriya Sahयोग Parishad and Indian Council for Indian International Cooperation. Under his valued guidance, numerous national and international organizations are supporting marginalized communities, both at grassroots level and policy making across the world. We welcome you, Shyamji. Next, I would like to welcome our partner,
Dr. Prabhanshu Ojha, who is the assistant professor, Hansraj College, who completed his PhD on Kashi Ka Rang Manch. He has won more than 700 debates in Delhi University and national level on several issues, written more than 100 articles in leading magazines and newspapers, and published one book from Hans Prakashan named Bhartendu Yugin Kashi. Dear friends, thank you. As you know, we have been engaged on this conversation for the last 2 days on this important topic of human trafficking. And the primary aim for this CHETNA conference on human exploitation and trafficking for national awareness was to create this dialogue on the contemporary challenges of human trafficking. And these 2 days have seen more than 20 speakers speak their respective views and lived experiences. Just for the benefit of the dignitaries who had just arrived at the valedictory session, so we began yesterday when we had the launch of the book or the online report on the online human trafficking, which was written by our fellow Vani Manoraj. So that was a great moment for us, and it was published in partnership with Seva International. And today we saw quite a few sessions which was very engaging, and good to see the audience come in such large numbers and ask their questions. So we had a session on existing in obscurity, which involved organ trafficking and child marriage. Then we had a session on human trafficking after COVID-19 prevention and rehabilitation interventions. Followed by, we had a session, just concluded session on Azaadi Ka Amrit Mahotsav, which deliberated on the past, present, and future of anti-trafficking interventions. And these sessions included participants not only from India, but also abroad. So a lot of people joined us through online using the Zoom, and they presented their views. There were participants from UK, there were participants from Singapore who presented their views. And we get a global perspective on this problem, which is not only local to India, but is getting much more and more pronounced as we see the things are evolving. Seva International on its part, since 25 years, has been working with Indian diaspora's support to support any kind of disasters, whether man-made or natural, to support relief, rescue, and rehab activities. And what we have seen is this rehab activities especially become extremely important to prevent this human trafficking, which becomes a menace, especially when we see the lot of agencies become active when they see the vulnerability, which is quite often seen after devastating floods, earthquakes, etc. So Seva International on its part, with the help of its partners, tries to see how we can mitigate these efforts, and how can mitigate this situation and prevent human trafficking through our efforts in rebuilding schools, hospitals, and supporting grassroots interventions which engage with the local population, make them independent, provide them health facilities so that they don't become victims of the human trafficking. And we wish to partner with all the organizations which have been represented today, and also with Hansraj College to see a lot of young blood come into our organization, especially as interns, and work for a various of our interventions which are going in across India. So we welcome you all. Now I would like to start with Mr. Abhishek Tandonji from ICSSR to please speak a few words. Thank you, sir. Thank you. Distinguished guests on the dais, participants, and students present in the seminar room. First of all, thank you for having me here, and congratulations to all of you for organizing such a wonderful conference for 2 days. You all deserve a round of applause. I am representing ICSSR at this forum, so I need to be very forthcoming, and I want to tell you all that we will be there with you, supporting you throughout, even in your future endeavors. So you can take that from us, whether it is your research projects, whether it is your field visits, and of course the publication which Sir mentioned just now. So even if you are going to have more publications, we would be more than happy to support you at our publication division. Now, Professor Malhotra wanted to come here, but he, because of his health, could not. And I was asked to
fit into his shoes, which is next to impossible. But since Vani asked me to say a few words on human trafficking, I was thinking, what should I say? Because I'm neither a legal expert nor an expert in this particular topic. So while I was coming to this venue, I was thinking of a couple of things. First thing which came to my mind was a movie which I saw when I was in college, a Bollywood movie, Gajni. I don't know if you remember that movie or not. The lady was killed because she was trying to expose the practice of human trafficking. Hollywood movie Taken, I think it's a very, very famous movie. That's also based on this. See, similarly, Slumdog Millionaire. So why I'm mentioning these things is because the problem is there and it is identified. It's not that the problem is not identified and it's not among us. It's there and it's identified. What we are doing is very less. Of course, on a Saturday evening, you are here and it's really appreciable, but still more and more needs to be done. Sometimes I feel, we ask too less questions, especially Seva International. I know the roots of Seva International. So with this kind of the organizations we are working with, we ask too less questions. We should ask more questions. Very recently, we tried to figure out what is happening with the Nirbhaya Fund, which was released by government in 2012. And you'll be surprised to know majority of it is unspent. So youth needs to ask this question to everybody in the society. I can see majority of us are here from academia, and if not, the entire ecosystem is there. Students are there, teachers are there. Somebody was talking about national education policy. So we have always been taught that whatever you see in your society is reflection of your teachers. So this is something which is to ponder upon, especially for the teachers, that what kind of society do we want? We may not have that kind of chapters in our textbooks, but we have those classrooms to discuss. We have those classrooms to discuss the problems. It's very unfortunate. In our previous session, one of our speakers was telling us that a student had to commit suicide because he felt that justice was not done. I personally feel that teachers there should have spoken to that student, and maybe it could have been avoided. So I take this onus on my own self as well, because I am a part of this Delhi University family. I teach here in this university. I have been throughout been very grateful to this university. I've been a student here as well. But the only point I'm trying to make is, out of the entire context, is that we need to start working. I mean, we are still not working. We kind of we do not understand how small efforts can lead to big changes, especially when we are in adverse situations. Our prime minister keeps on saying that aapada mein bhi avsar dhoondho, and some people laugh, but I'm telling you, this is the biggest example. I can see myself on that big screen. We are all using Zoom. How many of us would have done that if we would have not faced COVID? I'm telling you, this is the biggest silver lining in this particular 2-3 years, that we have adopted the technology. Otherwise, this conference would have not happened in this kind of frame. Today, at least our reach has increased. So if we try to find out solution, we're definitely going to find out. And of course, we may not see everything happening in our lifetimes, but we can definitely put that particular contribution to the entire goal which we want to achieve. So friends, majority of you are youth. Try to find out in your daily life what you can do about all these problems. Human trafficking is a big problem, especially the organ. I was also reading about these, why people actually do human trafficking. So get involved in human trafficking. So we need to also, kind of tell people. And the other part, which is the third stage, which, can be expected once we go back to Satyug, but I don't know whether we are going to ever go back to Satyug or not, that why should people who want organs also go and buy?
So we'll go to that stage probably again 20-30 years later, but at least start with addressing the solution, addressing the problem and finding the solution. So if youth in this room start doing that, just don't ignore when you find any beggar on the street. Just don't ignore that. Just don't ignore that phenomenon. Ask questions. Ask him why you are here. Where are your parents? It may take 2 minutes. You may feel scared in the initial days, but you may help someone. So this is all that I can contribute. I once again wish you all a lot of success, and probably my best wishes are with all of you who are participating today, so that you reach where you actually want to reach. Thank you very much. Thank you, Abhishek ji. I mean, it's great to hear from you, even if this is not the subject that you are specialized in. And I would like to say with ICSSR, we already did a conference in 2020, where we had this Him Samvad in Uttarakhand. And we are going to do a couple of more conferences this year itself with ICSSR support. So thanks a lot, Abhishek ji and ICSSR. Next, I would like to invite Dr. Prabhanshu Ojha ji, who is also the convener and the partner for this conference. We have heard quite a bit from him during this conference itself, and we would like to hear his concluding remarks. So welcome, Prabhanshu ji. बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से ये 2 दिन बहुत समृद्ध करने वाले दिन रहे, बहुत ही विचारोत्तेजक चर्चा। एक ऐसा विषय, अभी मोनिका मैम से मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, हम अलग अलग कॉन्फ्रेंस करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर सेमिनार करते हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बात हो ये बहुत रेयर होता है, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो या अन्य स्थान हो। मीडिया में भी बहुत ज्यादा इसको स्थान नहीं मिल पाता है। आज का ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। मनुष्य मनुष्य का व्यापार करे, ये किसी भी सदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि एक मनुष्य मनुष्य के सपनों का व्यापार करे। वो निदा साहब ने एक जगह लिखा कि तेरे चेहरे में हमने क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा। तो वही ईश्वर जब कातिल बन जाता है, उसको सपने दिखाता है और उन सपनों से उसका पूरा जीवन टूट जाता है और वापसी के मौके बहुत रेयर होते हैं। ज्योति मैम चर्चा कर रही थी पिछले सेशन में कि ऐसे लोग जो ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं सर, जब उन्हें मौका मिलता है सोसाइटी, बैक टू सोसाइटी, समाज के पास दोबारा वापस जाने का, समाज ताने मारता है, समाज स्वीकार नहीं करता है और परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि परत दर परत वो व्यक्ति टूटता जाता है और उसी जाल में उलझ के रह जाता है। तो हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। कोई अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को, वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कि किसी मनुष्य को वो बेच सके, खरीद सके, उसको झूठे वादे करे, झूठे सपने दिखाए। आज के इस सदी में जब हम खुद को पोस्ट मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न भी नहीं, उत्तर आधुनिक, क्या उत्तर आधुनिकता ये सिखाती है कि मनुष्य के अंगों को चोरी से उसका व्यापार करें? हम उसको एक ऐसी गुलामी में पहुंचा दें जहां पर आप चले जाइए, दिल्ली में ही वो जगह है जिनको जो महिलाएं बाहर की दुनिया देख ही नहीं सकती। हवा कैसी है, सूरज कैसा है, खुली दुनिया कैसी होती है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद तो सेवा इंटरनेशनल को करता हूं कि आपने कम से कम सोचा। आपके वॉलंटियर्स, वाड़ी जी, शुभम जी, मैं देख रहा था ये सब बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों से, भारत में भी विदेश से पढ़े हुए हैं और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अभिषेक सर का, अभिषेक टंडन सर का। ICSSR ने बहुत सहयोग किया इस पूरे कार्यक्रम में। हंसराज कॉलेज में अभी लगभग 2 महीने पहले भी सर आपके सहयोग से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आजादी के 75 वर्षों पर हुआ। तो विशेष धन्यवाद मैं चाहता हूं सर के लिए, एक बार क्लैपिंग हम सब करें इतने अच्छे एफर्ट्स के लिए, क्योंकि ICSSR पहले भी था, लेकिन सर के आने के बाद अब हम देख रहे हैं इतना सपोर्ट मिल रहा है हर एक अच्छे विचार को। तो बाकी हंसराज कॉलेज की ओर से मोनिका मैम है, एक बार मैम के लिए आप क्लैपिंग करें। 2 दिन के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट मैम का। डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं, डॉक्टर शैलेंद्र जी हैं, डॉक्टर गुंजन जी हैं और लिटरेरी सोसाइटी के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लगभग 15 दिनों से अनवरत इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए थे। युवा पीढ़ी इस मुद्दे को समझे, संवेदनशील बने, इस चीज की बहुत आवश्यकता है कि यूथ के लिए एक ऐसा विषय ना हो ये कि क्या होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 75 वर्षों की हमने यात्रा की, हमें अलग अलग पक्षों पर देखना होगा कि 75 वर्षों का भारत कहां पहुंचा। क्या अब भी इस तरह की गुलामी है जहां महिला, जहां बच्चे, उनका कोई जीवन नहीं है,
कोई और उनको सपने दिखा रहा है और अलग दुनिया में वो चले जा रहे हैं। हम एक ही दुनिया में कितनी दुनिया है, हम सब खुली हवा में जीते हैं, आकर के शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं। उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके उन्हें निर्जन कर दिया गया है, उनके दिमाग को शून्य कर दिया गया है। जब आप में सोचने की शक्ति ही ना बचे, दुनिया क्या है, कैसी है, तो कम से कम कभी इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। उस गीत की पंक्ति है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी आदरणीय अतिथियों का, श्याम सर का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभांशु जी। जब भी आपको सुनते हैं तो कुछ लगता है कुछ नया ही सीखने को मिल रहा है। 2 दिन से आपसे कई बारी मौका लगा आपको सुनने का, और आपने सही कहा। अब मैं चाहूंगा अपने श्री श्याम परांडे जी, who is also our mentor and guiding light for Seva International, and under whose inspiration, whose motivation, Seva International team, volunteers is acting up across the country, and not only in India but across the globe, has been helping not only the local communities but also supporting marginalized communities across the country. So I invite Shyamji to please come and say a few words. आज के सभा की अध्यक्षा ऑनरेबल ज्योतिका कालरा जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमान हर्ष चौहान जी, डिप्टी सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री में से आए हुए हैं और जिनका इसके पहले भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, श्री अरुण जी सोपती। इस कार्यक्रम में, इस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में खूब अच्छा साथ दिया, ऐसे प्रभांशु जी और ICSSR इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के डॉक्टर अभिषेक जी, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन में हम है। The way everybody participated, I was amazed. अच्छे रिसोर्स पर्सन्स, अच्छे विषय, प्रगल्भ, बिल्कुल considered opinions and most seeking questions. कैसे इसमें से बाहर निकले? कल रिपोर्ट हमने रिलीज किया जिसको हमने impending tsunami कहा है। This is a perpetual tsunami. The other tsunami just happened and went away. But this is going to be longer lasting. और ये ऐसी लंबे चलने वाली समस्या है, इसलिए जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी, अवेयरनेस नहीं होगी, समाज का हर घटक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यह बार बार अनुभव होता रहा, एहसास होता रहा। सेवा इंटरनेशनल की ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है इस विषय को लेकर, और हम समझते हैं कि हम एक कदम आगे बढ़े हैं। और अभी जैसे लोग आए हैं, रिसोर्स पर्सन्स आए हैं, लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा भी उत्साह वर्धन हुआ है। वी आर एनकरेज्ड enormously to move on this path. इस सुनामी का भी हम जवाब देंगे। जैसे मैंने कल कहा कि हम डिजास्टर्स में रिलीफ रिहैब करते रहे हैं, मिटिगेशन करते रहे हैं, और ये भी एक बड़ा डिजास्टर है that we are living through.
तो और एक डिजास्टर कल परसों ही चला हुआ है, मैं उतना ही बोलूंगा अभी, कारण कल बोला है मैंने। यूक्रेन में जो यूक्रेन पर रशिया का जो युद्ध है और वहां फंसे भारतीयों की जो पीड़ा थी, उसे किसी एक संस्था ने पूरा बल लगाकर, apart from obviously the government efforts, the embassy staffed worked excellently, not a moment to lose. भारत सरकार की भी बहुत अच्छी पॉलिसी थी, तो पहुंच गए और उन्हीं के साथ सेवा इंटरनेशनल ने खूब काम किया, उनको साथ दिया। यह ऐसे समय था कि गोलियां चल रही है, बमबारी हो रही है और हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। इस सारे कैंपेन को ठीक से चलाने के लिए सेवा यूरोप ने बीड़ा उठाया। सेवा यूरोप यूनिट गत 2 वर्ष पहले ही हमने तैयार किया, मैं जाकर आया था, लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी। 2 वर्ष पहले से शुरू हो गया और इस बार उन्होंने कहा कि हम लीड लेंगे, तो बहुत अच्छा लीड लिया। तो ये उसका फलस्वरूप निकला कि 250 से अधिक ऑनलाइन वॉलंटियर्स जुड़े, हेल्पलाइंस चला दी गई। हेल्पलाइंस के माध्यम से कम 10,000 कॉल्स आए, उसमें के 78% फर्स्ट कॉल सक्सेस था। तो तुरंत पहुंचते थे। 250 जैसे वॉलंटियर्स यूक्रेन में कार्यरत थे, वैसे 35 ऑन ग्राउंड हैंड्स ऑन वॉलंटियर्स थे। कहीं कॉल आया, कहीं इमरजेंसी है, कहीं कुछ फंसा हुआ है, तुरंत निकालने की आवश्यकता है, दौड़ते थे। इस तरह से 4000 से अधिक विद्यार्थियों को और परिवार के लोगों को, कारण वहां बहुत से लोग पहले गए हुए हैं, व्यापार करते हैं, रेस्टोरेंट्स है। भारतीय समाज, वहां जो भारतीय समाज स्थित है, उसने भी खूब अच्छी साथ दी। रेस्टोरेंट्स चलाते हैं 10-12, 15 सिटीज में सेवा इंटरनेशनल काम किया और जहां जहां भारतीय रेस्टोरेंट है उनको विनती की आप खोल दीजिए, जो लोग आएंगे उनको भोजन खिलाओ। वो भोजन खिलाते गए, भारतीय आए, अभारतीय भी आए, सबको भोजन खिलाया। हमने कहा हम बाद में फंडिंग की समस्या को हल करेंगे, अभी आप खाना खिलाओ सबको। कुछ रेस्टोरेंट्स थे जिन्होंने दरवाजे खोल दिए, यहाँ आओ भी, खाओ भी, रहो भी। तो भारतीय समाज, the diaspora stands whenever there is a challenge, and Indian diaspora is a vibrant diaspora, और उन्होंने इस समय पर खड़े होके हमारा साथ दिया। मैं ये बताना नहीं चाहूंगा कि 4 मिनिस्टर्स 4 देशों में गए, वो जो 4 ईस्ट के वेस्ट के स्टेट्स है, देश है, वहां उन देशों ने भी साथ दिया। अपना डिप्लोमेटिक मिशन, वहां मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स चले गए उनका स्वागत करने के लिए। विद्यार्थियों का पूरे 20,000 से अधिक विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। तो मोस्ट सक्सेसफुल मिशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन द हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, कि जहां कम से कम हानि हुई है डिस्पाइट ऑल दैट, और बैलेंस करते हुए एक तरफ यूक्रेन, एक तरफ रशिया से भी बात करते हुए कि हमारा एक भी विद्यार्थी उसको अपघात नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह की जागरूकता इससे पहले भी किया, जैसे यूएन में हुआ था, सुषमा स्वराज जी का आपने सुना भी होगा, वो खूब घूमता है वीडियो, कि हमारे साथ 48 देशों के लोगों को हम बाहर निकाल कर लाए। कोई जाने को तैयार नहीं था यमन, ऐसे समय पे भारतीयों को तो लाया ही लाया। 48 कंट्रीज लेकर आए। सेवा इंटरनेशनल ऐसे सब मैनमेड डिजास्टर्स में भी, अभी ये भी मैनमेड डिजास्टर ही है वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इसमें भी उस तरह से ही हम जरूर खड़े रहेंगे। माय अपील टू द होल असेंबली इज kindly join hands with us in this endeavor, and as I said, this cannot be dealt with government alone, this cannot be dealt with judiciary alone,
This cannot be dealt with NGOs alone. The whole society has to stand up and respond to this challenge. And let us accept this challenge. Dhanyavad, namaskar. Thanks a lot, Shyamji. It's always inspiring to hear you. And as you rightly said, that all the stakeholders need to come together, and we are all stakeholders in upholding humanity values and ensuring that we maintain a humane society. So thanks a lot for that, Shyamji. Now I would like to invite our guest of honor, Shri Arun Soptiji, to kindly grace the dais and speak a few words. नमस्कार जी। 2019 में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर सेवा इंटरनेशनल ने एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। तब भी जिस टाइप के विचार ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे डिफरेंट स्पीकर्स ने शेयर किए थे, उनको सुन के बड़ा मोटिवेशन मिला कि जैसे सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हो, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इशू पे तो काम करती हैं। इनफैक्ट हम में से बहुत का स्पेसिफिक चार्ज ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है। बट जिस तरह से सेवा इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक प्रेरणादायक स्रोत है। और श्याम जी के तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही सेवा इंटरनेशनल है। दो चीजें मुझे बड़ी पसंद आई, एक तो सेवा इंटरनेशनल में सेवा, तो जो एक सेवा करने का भाव है, और दूसरा जो आज की कॉन्फ्रेंस का 2 दिन का थीम था चेतना। तो पिछले 5 सालों से एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते जो मैं इस चीज से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज को फील करता हूं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई मेजर चीज है जो काम आती है तो वो है चेतना। दूसरे लफ्जों में कहें तो जैसा शक्ति वाहिनी जी के रविकांत जी ने भी बोला कि अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इशू को एड्रेस करने के लिए। मेरे से पहले जब स्टार्ट किया, सॉरी मेरा थोड़ा 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो अभिषेक जी ने बोला कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर मैं क्या बोलूं। सच्चाई तो यही है कि हम में से जो शायद इस हॉल में भी बैठे हुए हैं और 2 दिन से इस बारे में सुन रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का थोड़ा सा लफ्ज आम अगर आप किसी से बात करें तो बहुत ज्यादा सुना नहीं हुआ। कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी अगर आप देखें तो आप किसी से बोले मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो मोस्टली एंड जनरली पीपल डू नॉट रिलेट टू इट कि वो क्या ह्यूमन तस्करी है, जब तक उस चीज से या तो डील नहीं कर रहे हैं या कोई उस चीज से गुजरा नहीं है या आपको उस टाइप की कोई स्टोरी नहीं सुनाता, तो हम में से बहुत से लोग इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि मानव तस्करी दरअसल है क्या। बट जो हमारे एनसीआरबी के स्टैटिस्टिक्स जो हर साल ये कलेक्ट करते हैं, उनको अगर आप देखें या वैसे अगर कभी आपकी नजर पड़े न्यूज़पेपर वगैरह में देखें, तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है। चूंकि अपनी पोजीशन के नाते मुझे इसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत जगह पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स का वियना में, ऑस्ट्रिया में एक पूरा इसके ऊपर ऑफिस है जो कि ड्रग रिलेटेड, क्राइम रिलेटेड सारे इश्यूज को एड्रेस करता है। तो वहां पे हर बार साल में 2 बारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पीपल स्मगलिंग के ऊपर एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग्स होती हैं, जहां पे लगभग 180-190 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो वहां समझ आती है कि इंडिया जैसा तो चलिए मान लीजिए गरीब देश है, जहाँ पे झारखंड से, बिहार से, यूपी से, वेस्ट बंगाल से, जहाँ पे जो कि कुछ गरीब एरियाज है, वहां से लोग ट्रैफिक होके बॉम्बे, दिल्ली, जहां जहां भी डिमांड होती है वहां वो पहुंचते हैं। बट वर्ल्ड ओवर भी आप देखें तो सिनेरियो यही है कि चाहे वो अफ्रीका हो, इवन यूरोप से भी, अमेरिका में या ऐसे दूसरे देशों में पीपल स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है। तो डायमेंशन तो इसकी बहुत सीरियस है, बहुत फास्ट है, इसके ऊपर लंबी बात हो सकती है। बट सरकार की ओर से मैं ये रीएश्योर करना चाहूंगा, चूंकि मैं इस चार्ज को पिछले 5 साल से देख रहा हूं, सरकार डेफिनेटली इसके बारे में बहुत सीरियस है। और पिछले 4-5 वर्षों की ही अगर मैं कुछ उपलब्धियों की बात करूं,
तो सरकार ने उसके ऊपर काफी गहराई से ध्यान दिया है। और अभी बीच में निर्भया फंड के कुछ उन्होंने जिक्र किया, तो निर्भया फंड का भी एक बहुत अच्छा फंड क्रिएट करा गया। और आप सही कह रहे हैं कि उसकी यूटिलाइजेशन का और उसके बारे में क्वेश्चन करने चाहिए, जरूर करने चाहिए, पब्लिक को भी करने चाहिए, क्योंकि जब तक आम जनता भी क्वेश्चन नहीं करेगी तब तक भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे वेकअप कॉल की जरूरत होती है। तो अच्छी बात है, क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। निर्भया फंड का जितना मैं अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बता सकता हूं कि एमएचए की हमारी जो विमेन सेफ्टी डिवीजन है, इसको अभी लगभग 2 साल पहले 100 करोड़ रुपया निर्भया फंड से लेके हमने सारे राज्यों और यूटीज को प्रोवाइड किया, जिसमें कि ताकि एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट करके एक स्मॉल नोडल एजेंसी बनाई जाती है हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में, जिसका कि काम ही यही है कि वो सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिलेटेड इश्यूज को कोऑर्डिनेट करे, उनके ऊपर ध्यान दे। इसके अलावा लगभग 125 करोड़ रुपया भी पिछले 2 साल के अंदर ही सारे स्टेट्स और यूटीज को प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंडर हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक विमेन हेल्प डेस्क एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन किया गया है। तो ये छोटे छोटे कुछ ऐसे प्रयास हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनके जरिए हम चाह रहे हैं कि एकदम डाउन द लेवल सारी स्टेट्स यूटीज में इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। बट इवेंचुअली चूंकि पुलिस जो है एक राज्य का विषय है और इवेंचुअली राज्य सरकारों ही चूंकि उस जगह पर मौजूद हैं, उन्हें वहां की लोकल कंडीशंस के बारे में भी ज्यादा मालूम है, प्रॉब्लम्स के बारे में भी मालूम है, तो सारी राज्य सरकारों की भी उतना ही उत्तरदायित्व है। एक चीज यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद हैं। मैं अभी कुछ समय पहले रवि जी से बात कर रहा था, तो इनको मैं ये चीज अंडरलाइन कर रहा था कि चाहे सरकारें कुछ भी बात कर ले, ये जो स्पेसिफिक टॉपिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, इसके ऊपर एनजीओज का एक बहुत बड़ा रोल है। चाहे अभी जब मैं आधा घंटा पहले किन्हीं सज्जन को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि एनजीओज की और सरकार वालों की आपस में बनती नहीं है या उनका आपस में ट्रस्ट नहीं होता। चाहे सरकारें एनजीओज को, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस को कितना भी ट्रस्ट करें या ना करें, बट ये फैक्ट है कि इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे एनजीओज का एक बहुत बड़ा रोल है और वो हर स्टेज पे आगे बढ़ के राज्यों में भी पुलिस को हर चीज में आगे बढ़ के वो मदद देती हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो जो अपना रोल निभा रहे हैं इसको और उतने, चाहे उनको उतनी अप्रिसिएशन एट टाइम्स मिले या ना मिले, बट अपने उस रोल को अच्छे से निभाते रहें, क्योंकि हम सबका कॉमन गोल, कॉमन कॉज तो यही है कि अपने देश की जो भी इस टाइप की दिक्कतें हैं उनको हम एड्रेस करें और उनको जितने हद तक हो सके सुलझा सके। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot, Arun ji. It was great to have you again, and thanks again for accepting our invite. As you rightly said, that all of us need to come together and work with the government, NGO sector, community. All the participants need to give their bit in order to fight this menace of human trafficking. Thanks for that. Now I would like to invite our chief guest, Shri Harsh Chauhan ji, to kindly guide us with his wisdom. Welcome, Harsh. सभी को नमस्कार। मैं सबके नाम लेके समय और अधिक वो नहीं करता, पर जितने लोग भी आए हैं उसको सम्मान पूर्वक मैं नमस्कार करता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने 2 दिन का समय निकाला। मेरा आने का वास्तव में कारण ये बना कि मैं इसको सुनने आना चाहता था, और सेवा इंटरनेशनल इस आयोजन को कर रहा है, मतलब एक गंभीर चिंतन इसमें हो रहा होगा, ये मुझे विश्वास था, और इसलिए मैं एक सत्र पहले भी आया, और समय मिलता तो शायद और सत्रों में भी रहता। तो बोलने लायक तो मुझे केवल सुनने आया था, लेकिन जितना भी मैंने सुना ऐसा लगा कि बहुत से बातें हैं जो मुझे एक्सप्रेस करनी चाहिए। उसके लिए एकदम ठीक समय तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पे और अधिक चर्चा की आवश्यकता रहेगी। और
एक बात मेरे मन में है, मैं उसमें सब आपको भी शेयर कर देता हूं कि हम अपने आयोग में इस विषय पर एक डायलॉग जरूर करेंगे, ऐसा मैं यहाँ से निर्णय लेके जा रहा हूँ। और उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इस पर जरूर आए, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबसे ज्यादा शिकार देश का जो जनजाति समुदाय वो है, और बड़ी समस्या है वो एक, और उस पर काम करने की आवश्यकता है। मैंने जब से यहाँ आया हूँ तब से मैं उसके बारे में विचार भी कर रहा था। तो आज मैं आपसे बिंदुवार कुछ बातें शेयर करूंगा संक्षेप में, जिन पर मुझे लगता है कि सोचना भी चाहिए और काम भी करना चाहिए। जितनी बातें मैंने सुनी उतने में भी मुझे काफी संकेत उसके मिले, और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि जो पार्टिसिपेंट्स थे, खासतौर से यंग पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके क्वेश्चंस और उनके कंसर्न्स वो ठीक थे। सामान्यतः स्टूडेंट्स के प्रश्न आते हैं तो वो जो उन्होंने पढ़ा है उसके आधार पर होते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसे प्रश्न सुनने को मिले जो समाज को समझकर पूछे गए प्रश्न थे, और उसमें वो इमोशन भी था। वास्तव में इसकी आवश्यकता लगती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विषय पे मुझे जो लगता है कि 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं उसके। अभी जितना मैं सुन रहा था ऐसा लगता है कि सब लोग अपने अपने साइलोज में हैं, सब अपनी अपनी मजबूरियां भी बताते हैं। जस्टिस सिस्टम अपनी मजबूरियां बता रहा है, पुलिस सिस्टम अपनी मजबूरियां बता रहा है, एनजीओज अपनी मजबूरियां बता रहे हैं। तो ये कैसे सब चीजें जुड़ेगी, और अगर हम होलिस्टिक तरीके से सोचे कि समाधान सॉल्यूशन कैसे होगा, उस पर हम सबको बैठकर, शिकायतें हम बहुत कर सकते हैं, कुछ हद तक थोड़ा बहुत एक्टिविज्म भी कर सकते हैं। एक्टिविज्म करके हम कुछ पॉलिटिकल कुछ पॉइंट स्कोर भी कर सकते हैं, पर समस्या का समाधान नहीं होता। ये हमारे जो जनजाति समाज है ये उसकी सबसे बड़ी उसका शिकार है कि उसके साथ सिंपैथी करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन एम्पैथी करने वाले लोग नहीं। उनका पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत लोग हैं, पर उनके लिए काम करने वाले, समझने वाले उसके वो लोग नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शुरुआत होती है विजिलेंस से, जैसा कि एक प्रश्न में बहुत अच्छे तरह से आया कि एक्सेस टू जस्टिस, और एक्सेस टू जस्टिस का मतलब सीधा कोर्ट नहीं है, कोर्ट तो बहुत कम लोग पहुंचेंगे। एक्सेस टू जस्टिस होता है शुरू, विजिलेंस एक भूमिका है, और उस विजिलेंस में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे काम करने वाले। वो कैसे ठीक होगा, इस प्रकार के विक्टिम्स। और जब मैं चूंकि स्वयं वनवासी हूँ और मैंने देखा है, और मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं ऐसे सोच कर ही बोल रहा हूँ कि गांव में रहने वाला व्यक्ति जब ये डिस्कशन सुनेगा तो उसके मन में क्या भाव आएंगे। तो उसके मन में जो बात आती है वो ये होती है कि उसकी जो क्राय है वो कोई सुने, और खास तौर से इस प्रकार के विक्टिम्स की तो क्राय भी साइलेंट होती है। तो वो साइलेंट क्राय सुनने के लायक विजिलेंस सिस्टम हमारा हो। उसमें एक ही चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें उसमें हेल्पलाइन है, उसमें प्रोएक्टिव स्टडीज हैं, समाज में जिस प्रकार का व्यवहार है उसका अध्ययन है। और इसकी कमी इस क्षेत्र में खास तौर से लगती है, ज्यादातर जगह है पर इसमें और लगती है। तो एक विजिलेंस का विषय है जिस पर अलग से बात होना चाहिए कि बहुत अच्छा विजिलेंस सिस्टम हमारे समाज में कैसे होगा। और उसके बाद में है फिर एनफोर्समेंट। तो सामने आने के बाद में एनफोर्समेंट, जैसे सामान्यतः बात आई कि वो इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं हुआ तो जस्टिस नहीं मिला। तो ये एनफोर्समेंट एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एनफोर्समेंट में भी केवल मुझे लगता है कि पुलिस का काम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, और उस पर भी पूरा विचार होना चाहिए इस पर्टिकुलर बात को लेके कि एनफोर्समेंट को हम कैसे फुल प्रूफ बनाएंगे, एक्सेसिबल एंड फुल प्रूफ। क्योंकि उसमें फिर प्रश्न आ जाते हैं कई बार कि गलत यूज करते हैं, इसलिए वो प्रश्न भी आए बात। वो बात भी अपनी जगह ठीक है, और जो होना चाहिए वो नहीं होता है वो भी अपनी बात जगह ठीक है। और इसलिए उसको एक फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए जिसके बारे में पूरे समाज में कॉन्फिडेंस है कि हम इस बात के लिए अश्योर्ड हैं कि इस इशू पे अगर कोई सामने बात आई है तो उसका ठीक से मूल्यांकन हुआ है और उसको जस्टिस मिलेगा ही। तो उसमें कोई अनजस्ट बात भी ना हो,
पर जस्टिस भी पूरा हो, अनजस्ट ना हो, इसलिए बहुत लोग बच नहीं जाए और जस्टिस के कारण बहुत गलत लोगों को सजा भी ना मिल जाए। तो एक अच्छा एनफोर्समेंट का क्या सिस्टम हो, उसके बाद हम मान सकते हैं कि जस्टिस सिस्टम है। और जब हम जस्टिस सिस्टम बोलते हैं तो उसका मतलब केवल कोर्ट नहीं है। कोर्ट, मेरा एक अनुभव है, मैं उसको शेयर करना चाहूँगा, कोर्ट का जो महत्व है उस बात को लेके। मेरा स्कूल में पढ़ने, कॉलेज में साथ में पढ़ने वाला एक जूनियर था, प्रोफेसर हो गया, और वो जापान में, आज से 15 साल पुरानी बात है, और वो एक कॉन्फ्रेंस में गया, 4-5 दिन की थी, उसमें पूरे देशों से लोग थे और चाइनीज प्रोफेसर भी थे। तो बोला कि सर, मैं हमारे पूरे सेशन के दौरान वो जो चाइनीज प्रोफेसर थे वो बहुत मजाक बना रहे थे, हमारी चाइना में ये है, आपके यहाँ कुछ नहीं, हमारे चाइना में ये है, हमारे यहाँ, आपके यहाँ कुछ नहीं। तो बोला सर मैं बहुत परेशान हो गया। तो एक दिन हम लंच पे बैठे थे, मैंने कहा कि मिस्टर प्रोफेसर, बट वी हैव गॉट वन थिंग विच यू डोंट हैव। तो वो चुप, उसके बाद चुप हो गया वो। उसने फिर पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास नहीं। तो मैंने बोला, एक ही शब्द बोला, कोर्ट्स, और बोले वो चुप हो गया, बोले वो एकदम गंभीर हो गया, और दूसरे दिन पर्सनली आके मिला और उसने बोला कि मिस्टर ठकार, यू आर राइट। तो ये कोर्ट्स का जो महत्व है जो भारत में है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, और इस बड़े देश में कोर्ट तक पहुंचना बहुत कठिन काम है, जो जैसा विषय है। तो उसमें हमारे यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स हैं, आयोग हैं, बहुत सारे अलग अलग स्कूल कमीशन हैं। वो कैसे ठीक प्रकार से काम करेंगे, उनको हमारे इस सिस्टम में जस्टिस दिलाने की बहुत अच्छा माध्यम वो कैसे हो सकता है, उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। एक्सेस हम तभी इंश्योर कर पाएंगे जब ये होगा, नहीं तो अभी फिर वो सुनने को मिलता है कि कोर्ट तक कौन जाएगा, गरीब लोग तो वहां तक जा ही नहीं सकते। तो ये, इस पर भी क्या हम लोग एक साथ मिलकर विचार करें, क्योंकि इसको महसूस करने वाले हम सब लोग हैं। तो केवल वो कम्युनिटी विचार नहीं कर सकती, सबको मिलकर करना पड़ेगा। और वो जस्टिस के बाद में, जस्टिस के साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि ज्यूरी, क्योंकि अभी जो पिछली बार हमारे वक्ता आए थे उन्होंने बोला भी था जैसा कि वहाँ जो कोर्ट का सिस्टम है, जब से मैं आयोग में आया हूँ और मैंने जो सोचना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ट्राइबल कम्युनिटी को हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो अगर समझेगा नहीं तो न्याय कैसे दिलाएगा। तो एक इमेज वर्सेस रियलिटी की एक बड़ी गैप होती है, उस गैप को कैसे दूर किया जा सके। तो इसलिए एम्पैथी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि उन सबके लिए वो एम्पैथी चाहिए। अच्छा एनफोर्समेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एम्पैथी नहीं है। अच्छा विजिलेंस क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी नहीं है। तो ये एम्पैथी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे समाज में सभी, पूरे समाज में इस विषय को लेके वो कैसे एम्पैथाइज हो। उसके बगैर ये सारा फ्यूटाइल हो जाएगा। उसी एम्पैथी में से निकलेगा कि उसका रिहेबिलिटेशन के लिए क्या काम होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हमने जस्टिस दिला दिया, बस हो तो गया, और वो सॉल्यूशन नहीं है। तो ये एम्पैथी जनरेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उन बातों को समझने की कोशिश कैसे की जा सकती है। बहुत सारी बातें उसके कारण से होती है, कुछ केसेस ऐसे हुए भी हैं। और जब हम ये कहते हैं ना कि एकदम गरीब आदमी, तो ऐसा भी नहीं है। मेरे पास एक केस आया और वो फिजिकल असॉल्ट का और मोलेस्टेशन का केस था, बहुत गंभीर केस था कि वो जो लड़की जिसने अप्रोच किया था वो यहाँ पर CISF में काम करती है। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो परेशान थी, उसको जस्टिस नहीं मिल रहा था, किसी तरह से वो पहुंची, पारधी कम्युनिटी की थी वो, और उसकी जो साथी हैं वो शायद लेकर आई, उसकी हिम्मत भी नहीं थी। उसका प्रॉपर FIR ही दर्ज नहीं हुई थी। दिल्ली में की बात कर रहा हूँ मैं। वो CISF की हैं, पुलिस है, उसकी FIR दर्ज नहीं हुई थी। वो फिर वो कमीशन के इंटरवेंशन से DG को बुला के फाइनली हो जाने के बाद में वो आई और उसने कहा कि मेरा जीवन आज बच गया, नहीं तो शायद मैं ट्रैफिकिंग में चली जाती, क्योंकि मेरा समाज ही मुझे बहिष्कृत करने वाला था, मेरा भाई मुझे स्वीकार नहीं करता। पर जो कमीशन में बातचीत हुई
जो डेलिब्रेशन हुआ उसमें मेरी भाभी साथ में थी। अब मेरी भाभी जब वहाँ रिपोर्ट करेगी कि कैसे कैसे हुआ और मुझे कैसे न्याय मिल रहा है, तब जाकर मैं समाज में फिर से एक्सेप्टेबल होंगी। तो ये पूरा एक चेन है समाज तक उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो ये पूरे सिस्टम पे हम सब लोग मिलके, मुझे ऐसा लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है। इतने समय में जो मैंने सुना भी और जो मेरे मन में भाव आते हैं वो मैंने आपके सामने प्रकट किए। मुझे लगता है हमें सब इस पर विचार करना चाहिए, इस पे और विचार करना चाहिए। ज़्यादातर मैंने देखा कि बहुत सारा समाज हमारा एक्टिविस्ट मोड में है, पर मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कम्युनिटी में उसमें जाना चाहिए। जिस प्रॉब्लम पे आपको काम करना है, उसके जो विक्टिम्स हैं, वो समाज में जहाँ से हो रहा है, उसके बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो मैंने ऐसी रिपोर्ट्स देखी है, हम लोग जहाँ काम करते हैं झाबुआ में 97% पॉपुलेशन, 87% पॉपुलेशन ट्राइब की है। मैं उसी कम्युनिटी से आता हूँ, भील कम्युनिटी से। जब मैं काम कर रहा था वहाँ पर तो किसी एक महिला है, उन्होंने मेरे से बात की, पहले से परिचित है, यूएन में काम किया उन्होंने। तो मैंने कहा हम लोग यहाँ पर होम स्टे शुरू कर रहे हैं। ये मैं इमेज वर्सेस रियलिटी की गैप बताता हूँ। तो उसने कहा कि अरे होम स्टे आप करेंगे तो वहाँ तो दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? तो बोले एड्स की दिक्कत आएगी। मैंने कहा नहीं, आपको क्या मालूम है उसके बारे में? मैंने नहीं, वहाँ तो बहुत ट्रैफिकिंग होता है। अब मैं वहाँ 900 गाँव में घूमता हूँ, समाज में मैं जानता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा तो लगा नहीं। नहीं, वहाँ लड़की बेचते हैं और उसकी तो ऐसा है, तो वहाँ तो लोग आएंगे नहीं क्योंकि एड्स की प्रॉब्लम है वहाँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो कम से कम 900 गाँव में सब फैमिलीज को जानता हूँ। मेरे पास तो ऐसी जानकारी नहीं है कि झाबुआ में ऐसा होता है कई ट्राइबल एरियाज में। यहाँ तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होता है। नहीं, हमारे पास में यूएन में रिपोर्ट है, वो अभी तक दी नहीं उसने मुझे, पर उसने बोला एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो गंभीर समस्या है, बहुत सारे एनजीओ उसमें पैसा ले रहे हैं। उनके 1-2 एनजीओ के नाम भी बताए उन्होंने, वो इस पर काम कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। वो हमको ग्राउंड पे दिख नहीं रहे हो। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो काम करना चाहते हैं वास्तव में, उनको नीचे तक जाना चाहिए, उनको समझना चाहिए। किताबें पढ़कर एक्टिविज्म नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ की अभी जो जनरेशन है, उनको देखकर मुझे ध्यान में आती है। उस पर भी किस प्रकार से हम सोचें कि अगर हम किसी इशू पर काम करते हैं तो थोड़ा सा जाकर हमारे मन में जो उसको लेके इमेज है, हम फिल्में देख के ना करें, हम केवल किताबें और समाचार पत्र में जो आता है उसको देख के ना करें, प्रत्यक्ष जाकर करें और फिर हम अपनी आवाज़ या हमारी एक्शन उसको प्लान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है कि ये जो मैंने विषय इसलिए रखा कि मेरे तुरंत मन में आ रहा है कि इस बात को लेके हम सब बैठे, आयोग अपनी ओर से, और अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी के लिए विचार करेंगे तो सारे विचार होने हैं जो सभी के लिए होंगे। तो उसके लिए मैं अभी से आपको आमंत्रित करता हूँ, हम शीघ्र उसका आपको निमंत्रण देंगे, आप उसके बारे में आए, हम लोग इसका जरूर हल निकालेंगे। सभी को इस आयोजन इनिशिएटिव और खास उसके लिए प्लेटफॉर्म है कि किसी भी काम को करने के लिए जो प्रामाणिकता चाहिए, जो एम्पैथी चाहिए, वो स्वयं सिद्ध है। उसमें कहीं ऐसा ध्यान में नहीं आता है कि वो किसी और कारण से हो रहा हो। सेवा इंटरनेशनल अगर कोई इनिशिएटिव लिया है तो उस समस्या को समाधान तक ले जाने के लिए उसने लिया है, ये सहज लगता है। और उनके आह्वान पे आप लोग सब आए हैं, इसको ध्यान से सुना है। मुझे लगता है निश्चित ही हम सब कुछ दिशा लेके जा रहे होंगे। और मैं फिर से एक बार उसमें भविष्य के हमारे आयोजन के लिए आपको आने का आग्रह करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। Thanks a lot, Harsh Chauhan ji. It was really inspiring to hear you speak. आपको बोलते हुए I recalled a quote from somewhere that the opposite of justice is not injustice, but it's poverty. So आपने काफी अच्छी बातें बताकर उसको चरितार्थ किया कि किस तरीके से पॉवर्टी इज द वन ऑफ द की इश्यूज जो हम देखते हैं खासकर ट्राइबल एरियाज में। तो मैं आपको शो करना चाहता हूं कि सेवा इंटरनेशनल थ्रू इट्स एफर्ट्स एंड थ्रू इट्स प्रोग्राम्स which we are running in Tripura, Arunachal, Assam, and also in Madhya Pradesh area also.
through our partners. We would like to partner with NCST and other partner organizations also to fight this menace of human trafficking and see how we can work at the root problem, which is poverty and lack of awareness, so that we can together put our efforts and fight human trafficking. Now I would like to welcome our chair and guest of honor, Honorable Jyotika Kalraji, to the dais. Jyotika ji, welcome. धन्यवाद। हर्ष जी ने एक अच्छा वो प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि सभी के नाम ना लेने का, और मंचा सिंह सभी महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित सभी लोग, सभी गणमान्य हैं, आप सबको नमस्कार। और मैं पहले ही कहना चाहती हूँ कि भाषण देने से जरूरी है कि भाषण सुनने वाले लोग होने चाहिए। तो कार्यक्रम में जो सबसे बड़ी जिसके लिए तालियां बजनी चाहिए, तो जो सभागार में उपस्थित है, और वो जो सब आपको ये मौका दे पा रहे हैं कि आप अपनी बात रखें। मैं बात को, विषय को इस प्रकार रखूंगी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होने के नाते महिला, बाल और ट्रैफिकिंग मेरा विशेष विषय है, जिसको मैंने लगभग 5 साल मुझे हो रहे हैं, तो इस पर एक विशेष मेरी सारे कार्यक्रम उससे संबंधित रहते हैं। और उसी के चलते हमने एक सीडो का नाम आप सबने सुना होगा, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो उस कन्वेंशन के हर आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल, ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने, मतलब मेरे सुपरविजन में हुआ, एक आर्टिकल को हमने स्टडी किया, और जो ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज आर्टिकल 6 ऑफ सीडो। और ये जैसे मैं मतलब इस बुक में दिखाना चाहती हूँ, तो ये पूरा चैप्टर ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड रहा। उसको हमने, ये पूरा जो स्टडी है ये बुलेट पॉइंट्स में है, इसमें डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं है। सबसे पहले हम संविधान से शुरू करते हैं कि संविधान में कौन सा प्रावधान है जो इस ट्रैफिकिंग के मुद्दे को देखता है। तो आर्टिकल 23 which directly deals with the issue of trafficking, और 23 में प्रोहिबिशन, जो फंडामेंटल राइट्स का हमारा आर्टिकल है, उसी में आर्टिकल 23 आता है, जिसमें कि प्रोहिबिट करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। और सीडो में भी यही बात आती है कि हमें कोई भी कानून बनाकर ट्रैफिकिंग को रोकना है, तो 23 आता है। उसके बाद आर्टिकल 39 है। फिर हमने, मतलब इन सभी को, संविधान को स्टडी करते हुए उसके रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स इसमें डाले, बुलेट्स में है, आर्टिकल भी पूरा आर्टिकल नहीं है, उसका बुलेट जो समरी है वो उस तरह से डाला गया। और फिर सभी लेजिस्लेचर्स, क्योंकि संविधान कानून नहीं है, संविधान एक स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत कानून बनते हैं। तो ट्रैफिकिंग से जुड़ते हुए जो भी कानून है उनको हमने स्टडी किया, और उसका जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको बुलेट्स में हमने इसमें डाला। तो सबसे पहले सबसे ओरिजिनल जो सेक्शन है वो सेक्शन 370 आईपीसी ट्रैफिकिंग में जो डील करता है, और वो इतना सिंपल सा सेक्शन है। वो कहता है कि whoever for the purpose of exploitation, that's all, exploitation recruits, transports, harbors, transfers or receives। अगर पर्पस एक्सप्लॉयटेशन है तो वो ट्रैफिकिंग है। मतलब पर्पस एक सिंपल सी चीज है, एक्सप्लॉयटेशन। मतलब आप किसी को रिक्रूट वैसे भी तो कर सकते हैं ना, पर अगर एक्सप्लॉयटेशन पर्पस है, और एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से आप रिक्रूट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अदरवाइज भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो किसी को, पर एक्सप्लॉयटेशन अगर आपका पर्पस है, आप हार्बर कर रहे हो, मतलब कहीं पे रोक रहे हो उनको, आप उनको ट्रांसफर कर रहे हो और आप उनको रिसीव कर रहे हो, तो वो ट्रैफिकिंग की परिभाषा में आर्टिकल सेक्शन 370 आईपीसी, 370A एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक पर्सन आईपीसी। उसके बाद हमने डील किया इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जिसको इटपा बोलते हैं, पहले वो सीटा के नाम से होता था, specifically dealing with basically with sexual exploitation, because trafficking is a larger canvas which includes recruitment, transportation, etc., etc. But ITPA deals specifically with sexual exploitation, and more or less up till now
this sexual exploitation is of women and girls. So that's the reason when we talk about trafficking, the focus or emphasis shifts on trafficking of women and girls. And then we dealt with the subject of prostitution. What is prostitution? And then, because as has been said that there has to be convergence, so this also need to be dealt with the law of Bonded Labor System Abolition Act 1976. तो बॉन्डेड लेबर भी इसके साथ जुड़ता है. फिर ऑर्गन ट्रेड की बात जब अभी बात बीच में आई थी, तो द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994, ट्रैफिकिंग ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन के लिए होती है, तो हमने उस लॉ को भी स्टडी किया. उसके बाद देवदासी सिस्टम एबोल्यूशन एक्ट, मतलब जो भगवान की पूजा के नाम पर देवदासी और फिर उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उनको स्टडी करते हुए कर्नाटका देवदासी प्रोहिबिशन एक्ट, महाराष्ट्र देवदासी, तमिलनाडु देवदासी प्रोहिबिशन एक्ट, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये सारे एक्ट्स को हम स्टडी करते हैं. फिर फाइनली नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसको आप NIA बोलते हैं. अब मैं अपनी बात को उसी NIA से जोड़ूंगी, क्योंकि गृह मंत्रालय से बैठे हैं डिप्टी सेक्रेटरी, और सवाल ये होता है, NIA is a central investigating agency. It is not a state investigating agency. And 2019 amendment, NIA has been given the pass to investigate trafficking. So now NIA can't take this excuse that it is a state subject, because NIA is equipped specifically to deal with the subject of trafficking. And why I say so, because trafficking is not a state subject. I'm coming to my point. ट्रैफिकिंग जनरली क्या होगा, एक तो आपको होता है रिसिपिएंट होते हैं और जहां पे उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो एक स्टेट का तो सब्जेक्ट वो कभी होना ही नहीं है, वो कहीं से उठाते और कहीं उसको छोड़ते. तो नॉट ओनली दैट कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उसके बाद एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और ऐसे जाता है. तो ट्रैफिकिंग को जब हम एम्पैथी के साथ देखते हैं, तो ट्रैफिकिंग एक बहुत बहुत बड़ा विषय है. हमें जो दिखता होगा वो बहुत ही हमेशा बहुत ही नगण्य सा होता होगा. इसके बाद हमने स्कीम्स, जो ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं, जैसे उज्ज्वला स्कीम है भारत सरकार की, हम उसको स्टडी करते हैं. हम रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर को भी इसके साथ देखते हैं. AHTU जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, ये भी गृह मंत्रालय का है, जिसको अभी निर्भया से फंडिंग होता है. AHTU एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, AHTUS भी गृह मंत्रालय, हम उस स्कीम्स को भी हम स्टडी करते हैं. और उसके बाद एडवाइजरीज ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, MHA की एडवाइजरी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जब मैं MHA बोलती हूँ, 2009 की एडवाइजरी है. MHA की एडवाइजरी है ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2012. MHA की एडवाइजरी है ऑन प्रिवेंशन एंड कंबैटिंग ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया डीलिंग विद फॉरेन नेशनल्स 2012 अगेन, एंड एडवाइजरी ऑन प्रिवेंशन एंड कंबैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग especially during the period of COVID-19 pandemic 2020. And the fifth advisory is the National Human Rights Commission's advisory issued on combating human trafficking in context of the COVID-19 pandemic 2020 to help the central ministries and state governments in ensuring the promotion of protection of the rights of the trafficked persons. And then the commission also studied the memorandum of understandings, and that is inter-country, and it is the India between India and Bangladesh, signed in 2015 on bilateral cooperation for the prevention of human trafficking, and secondly between India and Myanmar, signed in 2019. So this is in any which manner not a state, not even a national subject. It's an international subject. And now, having said that, and we also studied the judgments. So like after studying, say about 7 judgments have been identified, and the commission has issued its recommendation based on convergence had always been an issue, intersectoral
cooperation is an issue everywhere. Joining the dots is an issue. So in this area also, because there are so many laws and it is a very complicated and a very difficult subject. आप बोल सकते हो ट्रैफिकिंग मतलब कि हम बात कर सकते हैं एम्पैथी वगैरह, पर उसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कानूनों का समग्र हो जाता है इन सब चीजों में। और वही है कि वो ट्रैफिक, आप ट्रांसपोर्ट नॉर्मली भी कर सकते हो, आप रिक्रूट नॉर्मली भी कर सकते हो, और वो ट्रैफिकिंग भी हो सकता है। तो आपको अच्छी समझ चाहिए इस विषय पर जब आप बात करते हैं। तो हमने, आयोग ने रिकमेंडेशंस डाली हैं इसमें। अब मैं अपनी बात एक केस, ट्रैफिकिंग के केस से समाप्त करती हूँ, जो कि मेरे संज्ञान में आई और 2019 की बात थी। ये मणिपुर की घटना है और अब मैं बताना चाहती हूँ कि कितना हम, और एक चीज मैं बताऊं, आप जैसे बताया अभिषेक ने कि आप भिखारी से पूछो, बात सही है। मैं भी कहती हूँ कि भैया तुम्हें क्या खाने को चाहिए, तुम किताब कॉपी ले लो, स्कूल क्यों नहीं जाते, वहां तक। पर वो बात का समाधान नहीं होगा। आपको उन लोगों को पकड़ना होगा जो उनको गांव से, घर से, वहां से लेके आए, जो उनको भीख मंगवा रहे हैं और जो उनकी भीख के पैसे से पल रहे हैं। हम अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो करेंगे, पर समस्या का अगर समाधान चाहिए तो आपको जो सिस्टम, जो लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम, जो लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिस, जो एनआईए, जिनको ये अधिकार दिए गए, जिनका ये ऑब्लिगेशन है, मतलब जो पूरा स्टेट एक्सचेकर है, जो जनता का टैक्स का पैसा उन्हीं सिस्टम्स को चलाने के लिए चल रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम अपने स्तर पर सिर्फ इतना कर सकते हैं, पर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो एफआईआर दर्ज करेंगे, वो उन लोगों को पकड़ेंगे, वो सब उनको करना होगा। तो मैं इस लाइव एक एग्जाम्पल से अपनी बात रखती हूँ। एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे फोन आता है। अब मणिपुर का देखिए किस तरह से ये ट्रैफिकिंग चलता है। मणिपुर का बॉर्डर है मोरे, और मोरे से आप म्यांमार में एंटर करते हैं, मतलब बर्मा भी जिसको आप बोलते हैं। और होता क्या है कि वहां पे एंट्री फ्री है, एक डिस्ट्रिक्ट, वो मोरे के डिस्ट्रिक्ट तक, पर वहां जाने के बाद आप भारत से बाहर हो जाते हैं। और क्योंकि ये पूरा सर्कल जो आपका नेपाल, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और म्यांमार, पूरा ट्रैफिकिंग का एक जो है ना अड्डा है। वहां पर वो जो बॉर्डर चेक कर रहा था, उसको कहीं डाउट होता है और वो कुछ लोगों को पकड़ता है, और उसके साथ दो वो जो एजेंट थे उनको भी पकड़ता है। एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद टोटली उसी मणिपुर के जो एरिया से, कई होटलों से और कहीं यहाँ से वहां से 180 के लगभग, जिसमें कि पुरुष है, मतलब 32-34 पुरुष थे और बाकी महिलाएं 145 कितनी महिलाएं वो पकड़ी जाती हैं। और अलग अलग एक एक कमरे में 15-15, 20-20 महिलाएं इस तरह से वो पड़े हुए थे। पर जो मैं बात बताना चाहती हूँ, आयोग एक अपना रेपेटियर, मतलब एक विशेष व्यक्ति वहां मणिपुर भेजता है इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जब मैं बात विशेष रूप से बताना चाहती हूँ कि जब उस पूरे प्रकरण को देखा जाता है तो ये नेपाल से लोग आते हैं, और इसमें से बहुत सारों के पास पासपोर्ट भी नहीं था, और जिनके पास पासपोर्ट था वो करप्शन की जैसे बात हो रही थी। तो पासपोर्ट एक ही दिन पे, एक ही समय पे, एक ही टाइम पे 50 पासपोर्ट इश्यू हुए थे। मतलब वो पासपोर्ट इश्यूइंग अथॉरिटी को भी बीच में लिया गया था, नेपाल की। और ये जो नेपाल से मणिपुर पहुंचते हैं 11 डिफरेंट रूट से पहुंचते हैं। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर नेपाल से मणिपुर पहुंचना है, नेपाल, दिल्ली, इम्फाल, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, नेपाल, गुवाहाटी, इम्फाल, नेपाल, शिंगूरी, गुवाहाटी, इम्फाल, नेपाल, शिंगूरी, इम्फाल, नेपाल, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, इम्फाल, नेपाल, सिलीगुड़ी, इम्फाल, नेपाल, पंजाब, दिल्ली, इम्फाल, नेपाल, राजस्थान, दिल्ली, इम्फाल, नेपाल, गांधीनगर, गुवाहाटी, इम्फाल, नेपाल, दिल्ली, गुवाहाटी, इम्फाल। क्योंकि इतने बड़े जब कोई भी देखेगा तो उसको शक हो जाएगा, तो छोटे छोटे पैकेट्स में, और ऐसे रूट चल रहा है। नेपाल से जा रहे हो बैंगलोर, अब बैंगलोर में किसी को शक नहीं होगा,
नेपाल से जहां पता चलेगा आपका इम्फाल की टिकट है तो शक बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो वो सीधा जा रहा है बैंगलोर, और बैंगलोर से नहीं शक होगा कि इम्फाल जा रहा है। अगर नेपाल से इम्फाल जा रहा है तो शक होगा। और इस तरह से अलग, मतलब मैं कह रही हूँ कितना स्ट्रेटेजिकली चलते हैं। और पूरे रास्ते में ये आप अगर देखो ना, जो एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स होते हैं या ये पॉक्सो के भी, ये सब रेलवे स्टेशनों पे यहाँ पे इनके वॉलंटियर्स रहते हैं। जो पकड़े जाते हैं वो ऐसे नहीं पकड़े जाते, वो देखते हैं कि एक 15 बच्चों का झुंड जा रहा है रेलवे स्टेशन पे, बसों पे, एयरपोर्ट्स पे, तो आसान काम नहीं है मतलब उनके लिए भी, क्योंकि वहां पे सिस्टम है। पर करप्शन हो जाती है जब आप पैसा ले लेके आगे आगे बढ़ जाते हो तो समहाउ आप पहुंच जाते हो। अब उसके आगे मैं बात बढ़ाती हूँ, वो उसको बॉर्डर पे पकड़ता है। पर अब पकड़ने के बाद क्या होना था, पकड़ने के बाद जो उसका मकसद तो तब पूरा होता जब वो लोग जेल जाते, उस नेक्सस को पकड़ा जाता जिन्होंने ये सब कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा इंटरनेशनल रैकेट है, छोटा मोटा काम नहीं है ये। अब वो हुआ क्या कि जैसे ही पकड़े तो क्योंकि ना तो पुरुषों को रखने की जगह है मणिपुर सरकार के पास, ना वो 130 महिलाओं को रखने की जगह है, और उनको रखने पे आपका खर्चा पड़ रहा है। तो सबसे पहले क्या लगा होगा बताओ? नहीं, छोड़ना तो था ही उनको, नेपाल भेज दो। सबसे पहले लगा कि भाई इनको, और उनको लगा कि शायद नेपाल भेज देने में हमारा सबसे बड़ा परोपने फायदा नहीं, मतलब जो पर्पस है वो सबसे बड़ा पर्पस सॉल्व होता है कि जो बच्चे, जो बेचारी लड़कियां, जो पुरुष जो जहां से आए थे वो अपने अपने घरों में पहुंच गए, जबकि ऐसा नहीं था। वो ट्रैफिकिंग थी, उस रैकेट को पकड़ना था। और उससे क्या हुआ कि जब नेपाल आपने भेज दिया, आपने अगले दूसरे दिन नेपाल भेज दिया पकड़ने के लिए। आपको अगर आपने पकड़ा, जैसे मैं केस दर्ज होता है, मतलब 370 आईपीसी में ट्रैफिकिंग का केस दर्ज हुआ, थाने में दर्ज हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन होनी है तो सबसे पहले विक्टिम की गवाही होनी है। समझ रहे हैं ना आप? कि मैं कहूंगी जिसका ट्रैफिकिंग की गई है वो ही जब तक कोर्ट में नहीं बोलेगा कुछ पर्पस सर्व नहीं होगा। तो तरीका ये होता है, आजकल 164 सीआरपीसी है, उसके बयान होते हैं, सीधा मजिस्ट्रेट के सामने जाके बयान कराया जाता है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है। तो हिसाब ये कहता था कि जैसे ही वो जो 180 लोग होते, सबके 1 बाय 1 करके मजिस्ट्रेट के सामने गवाही कराई जाती। और अब तो वो चले गए, अब वो गवाह है ही नहीं, आप किसकी गवाही कराएंगे? तो आयोग ने जब इसका संज्ञान लिया तो आयोग ने वो डायरेक्शन दी मणिपुर की सिस्टम को, हाई कोर्ट को भी, कि आप 164 की जो स्टेटमेंट है, जैसे बात हो रही कि आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी की नेपाल से 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाएं। और आयोग ने उसमें इतनी रिकमेंडेशन दी कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है मणिपुर की बस की नहीं है, ये एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और आज गत कितने महीने हो गए हैं ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि एनआईए को इसको लेना चाहिए, और इतना बड़ा मसला था ये। एनआईए से मेरी, एनआईए को भी हमने एंटी ट्रैफिकिंग में जब हमें अपने रिकमेंडेशन देने थे महिला बाल विकास मंत्रालय को, तो एनआईए ऑफिसर भी थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितने पिछले गत ट्रैफिकिंग के 2-4 मतलब बहुत मिनिस्क्यूल केस एनआईए ने डील की है अभी तक, हाँ, पर पिछले 2 साल में कुछ ऐसी है, 8-9 नहीं है पिछले 2 सालों में, मतलब सो इट्स अ वेरी, सो एजेंसीज नीड टू बी। मैं ये कह रही हूँ कि आप ट्रैफिकिंग को बस उतना भीख तक मत सोचो, बहुत बड़े बड़े रैकेट्स हैं, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, गंभीरता से ले। हम सब संवेदनशील हो, इसके साथ साथ जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं वो भी अपना काम जिम्मेदारी से निभाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं श्याम जी को भी धन्यवाद व्यक्तिगत रूप से देना चाहूंगी कि मेरा मतलब मुझे, क्योंकि विषय में बहुत इस पे काम किया, तो आपने मुझे अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल। Thanks a lot, Jyotika ji. One topic that has come about again and again is that the human trafficking victims don't need sympathy but empathy. Basically, we all need to see ourselves in their shoes and then see what is the best that we can do to alleviate their situation, to bring them to the mainstream,
And that should be the focus of the society, to get them back to the civil society so that they can stand on their feet and act as normal human beings. One more topic that Jyotika tested about was the source, destination, and transit, which is one of the key themes of this, how this human trafficking works. So thanks a lot for bringing that up, Jyotika ji. Law enforcing agency. That's emphasis. Yeah, that is enforcement. And for that, we need the support for all the intervening agencies, all the stakeholders, including community, including NGOs. Law enforcement is a sovereign job. Absolutely. Job. Absolutely. Murder हो जाता तो कोई काम नहीं है, ये सरकार का काम है, ये पुलिस का काम है. Exactly. I would like to thank all our guests and panelists who had come today. And while we are towards the end of our conference, I feel this is the beginning of our collaboration together for all the participants who have been representing different organizations, different government departments, and different communities, including the survivor leads, who have served leaders who had come across from different locations across the country to share their stories and to see how best we all can come together and fight together this menace of human trafficking and this menace altogether, not only from India, but across globally. So thanks a lot again. Now I would want Professor Dr. Monica Kolji from Hansraj College to kindly give the vote of thanks. Welcome, Monica ji. नमस्कार, मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय हमारे speakers and people of the dais. First of all, I'd like to convey my sincere thanks on behalf of my principal, Professor Dr. Rama, who is always there and who always says that we as an educational institute should come forward and support such kind of initiatives, because we have young students in front of us and it's very important for us to educate those students. Thank you, Rama ma'am, for allowing us to host this conference. On behalf of Rama ma'am and on behalf of the administration of this college, I want to thank each one of you who spared the valuable time and who shared valuable insights about various aspects of human trafficking. I would want to add one line on my personal note, because one of the aspects of human trafficking which has not been discussed in this seminar, and maybe Seva International can take it up in association with all the other collaborators, is that hiring of wombs is something which is coming up as a new thing. Surrogacy is becoming so important an issue. Bill has already been passed. Yeah, that has been passed, but still there are people who are kind of recruited for giving birth to the child, and now it is kind of becoming a fashion. Though there are many people who cannot conceive and give birth to the children, people are hiring wombs. And there is a big racket. But the point is, it has already been taken Yeah. care of. There is a law in place. Yeah, thank you. Yeah, thank you. But we were there before the select committee of Rajya Sabha Okay. as a member NHRC, and we presented our views, and now the bill has already been passed. oh, that's a very important development. So as a science student, because regulate this. Yeah. surrogacy. So I mean, there are many other aspects which might have not, which we as as a community of teaching, non-teaching, have not heard in or discussed in this platform. We would like more deliberations on such topics as well. So thank you, everyone. I mean, it's been a very important event in the Hansraj College, and Hansraj College really wants to collaborate because we have young blood with us. We can have students as interns, as was suggested by the people from various domains. Our students can come forward and volunteer in various kinds of initiatives which are being undertaken at the government level, at the state level, and even at the NGO level. Yeah, I also feel that, I strongly feel that many of them can tomorrow be the leaders
as civil servants, as Sopti sir is here, they will be there in NII, various agencies. So getting educated at the right time is really handy for them. And for that, I really want to thank each one of you who came here and shared their opinions and educated us more on various other issues. So I also want to thank the people on dais, Harsh Chauhan ji, Arun Sopti ji, for being a part of our conference and sharing their experience and thoughts with us. I wish to extend my special thanks to Shyam Parande ji, ma'am. Thank you so much for making us think that it is very important for us to cross talk, and also making government agencies responsible and telling them that they have to proactively be there to support any such initiative. So I guess we have had lots of interesting aspects shared by Abhishek Tandon ji from ICSSR, who is also funding agency for this seminar. And I, at the end, would like to thank every person of Seva International who's been running around for so many days, seeing various aspects of the conference. And besides that, I want to thank the sir, you all, very well talked about the connection between tribals, poverty, and the various aspects of trafficking. So we need to discuss it at various ends. And I want each one of you to take this message from here, that Hansraj College will be there to support any kind of initiative, whichever is there for the common good and for the communities and for the country. So I wish to thank each one of you from the core of my heart on behalf of Rama ma'am. It is my responsibility to thank every person in the audience, each and every speaker who is not here right now, our non-technical staff from the college who's been supportive, our college, non-teaching staff who's still waiting outside to take charge of the auditorium once we leave. There are many people who have been there to support us. It was an off day for some of the non-teaching staff, but they're still here. So each one of you, I wish to thank from the core of my heart on behalf of Principal Hansraj College, Professor Amma. Thanks a lot, Monica ji. Now I would like everybody to proceed to the high tea, which is being organized outside. So thanks a lot again for being there. Thank you.